Hello. Welcome back to Almighty Sports Plus. Yes और हाँ मेजर मैचेस है आज संडे को लॉट ऑफ मैचेस है तो मैं सोचा एक मेजर वॉच अलोंग हो जाए और यस वी विल बी जॉइंड बाय लॉट ऑफ पैनलिस्ट होपफुली इन द कमिंग आवर्स क्योंकि हाँ वी आर प्लानिंग कि विल गो फॉर मल्टीपल आवर्स और हम कवर करेंगे सिटी का मैच तो ये जो किक ऑफ हो गया जस्ट राइट अबाउट एज वी स्पीक और उतना ही नहीं देयर विल बी लॉट ऑफ अदर मैचेस एज वेल. There is going to be obviously the Lucknow versus Rajasthan ka cricket match and of course Milan fans it Milan versus Atalanta. लेकिन first and foremost I have to say really sad news और जैसे मैंने पोस्ट किया है कम्युनिटी में भी this is something that I relate to because again Shane Warne, Andrew Simons, those are legends I would say of cricket. जिनको as in खेलते हुए मैंने actually literally I have grown up, so I have played cricket and that is why I can really feel that because those were some of my idols along with the others and Andrew Simons especially जो raw power था मतलब different level. Again rest in peace, condolences to his family, but again life has to move on. That's why हम सोचे यार matches है will still continue, इसलिए मैंने पहले post नहीं किया था and that's why maybe कुछ देर हो जब तक we'll have more people and that's where people who are already joined in you guys can help me. मैंने ज़्यादा post नहीं किया तो if you guys can please share on social media it'll be really helpful. If you can just share the link on any social media or hey bhai already West Ham attacking and yes if you can also like the stream as always please like the stream so that it is basically reminded to other people जो है subscribers हमारे और not just that other YouTube as well. Let me actually big up Sai first to join most of the times and yes Sai thank you for joining and David as well. David bro, just in time. I know that we had to do a video and I know we didn't do it earlier today, but just in time I was able to get the connection and here I am. So yeah, if you want to join in, definitely man, David, let me know. Most welcome David. Do let me know, do message me on my WhatsApp or Insta, whatever you feel like. If you can join, it'll be absolutely fantastic. Rugved, of course, as Chelsea fans we are not happy. Not a great morning to wake up to कि याद आ गया उठते ही यार क्या हुआ था last night, but again every day is a new day as we say, right? And that's why we are here. Do you change your background for cricket and football videos? Yes I do. Right now it's Man City and West Ham that we are covering as things go. You will see basically some kind of cricketing gear और यहाँ पर oh भाई साहब it's an end-to-end game till now. Dawson with just a header there almost scored. Thank you for joining, Steve as well. Thanks a lot. And I'm hoping there are a lot of matches. Any Milan fans out there? Any Serie A fans out there? And of course, I'm pretty sure a lot of Premiership fans here. So today can be the day when Man City and AC Milan दोनों ही seal कर दे their titles. It is possibility. मैं नहीं बोलूँगा होगा, लेकिन quite possible. Again, not a great mood, considering what happened to Chelsea and of course what happened with Andrew Simons. लेकिन talking about Chelsea, there is also the big one. CFC women are playing Man City in the FA Women's Cup, so that is going to happen. I think it's starting in the half an hour as well. So हम try करेंगे follow करना, लेकिन again I'm not sure if it's being telecast in India. If it is, please let me know where it is telecast. I would love to follow that as well as much as I can. You know that I love the Chelsea women as well for sure. Satwik, hello as well. Absolutely, Matata United always here to support. Thank you. अंकित भाई आर्सेनल टॉप 4 आएगी और हाँ हम देखे हैं टॉटनहम हैव बीटन बर्नली 1-0 तो देयर बर्नली एंड लीड्स के बीच है रेलीगेशन का बैटल और टॉटनहम और आर्सेनल के बीच है तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर बट आई स्टिल फील दैट टॉटनहम में है और आर्सेनल में भी है टू ड्रॉप पॉइंट सो लेट्स सी हाउ इट गोस. हेलो भाई कैसे हैं आप? गौरव मस्त भाई आपके मैसेजेस देखा मैंने अगेन मतलब आई ट्राई एंड रिप्लाई टू as many messages as possible. It should have been Matata United. Again, it's more of a shock. The fact that it's even more shocking to me because of the fact that he was probably younger or it's a car crash, right? So it's really shocking to me. I don't know. Maybe because Shane Warne was kind of spending a lot of times in other countries more, so that's why he's more attached. Obviously, bigger legend he is probably. But again, here I'm not to compare. Both of them absolute legends of the Australian team. यहाँ पर we have Prasanna in the house. Prasanna, hey buddy, what's up? How are you? Namaskaram bro, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? Yeah, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Not a great, say last for 24 hours with Chelsea, with Andrew Simons and things like that. But again,
for the Chelsea women, and I believe you are doing the watch along as well. So that will be fun. But what are you predicting there? Then you think we should get one over City because they are playing excellently as well, right? Yeah, I just gave a link in a private chat. So this FA player is free to see for everyone. You just need to just sign in. You don't need to pay a single penny to watch it. It's free for everyone to see. It's one of the great things that FA player has done. So all FA, WSL games, and even these type of games, so they're free to add so that everyone can watch. So that's a great initiative by them. And yeah, Mm-hmm. man, we need one over City as well because City beat us in the Conti Cup final. Despite Chelsea going in front through Sam Kerr, and City scored three. They scored 1 and 2 in the second half. So we need one over them, and it's a chance for us to do first for. I think it's our first ever time FA Cups back to back because we have never done it before. And obviously, Exactly. league we did 3 times in a row. Now it's chance for league and cup double as well. So Yep, yeah, and we just saw Tottenham obviously beating Burnley, so yeah, that is interesting. So king of the team. quickly, as in, I know we'll come to the UCL as well, Aston. That is something that is pending, but before that, even because the Man City game is just kicked off, what do you reckon? Like one is like it's probably Man City's league. Everyone knows that, but in terms of Tottenham top four, them getting that 1-0. First of all, it puts Burnley to the relegation zone. I'm guessing, or is it still Leeds for Not you? really. And what about top four? Burnley are just ahead of Leeds on goal difference. Correct. They are still, but as in, what's the prediction there? Who's going to be relegated? Who's going to be, the fourth team who will be qualified? I think Burnley will just about stay up. I think Leeds are going down. I think Leeds will go down. I mean, if Okay. Brighton, they are playing Brighton Leeds, so I think Brighton I think they're just Mm-hmm. coming off a 4-0 win over United. So Correct. Correct. I think that will So just that's your prediction, right? And yeah, I again, think people in the Leeds will go down. chat, Yep. let's see what you're predicting because yeah, as in it's going to be interesting. I know that it's not like I know for Chelsea fans almost the season is over, but technically it isn't because top four race. Trust me, those two games if we really bottle it that badly, there is still technically a chance that we might not be there, right? As in so again, like on the top four, you are calling it for Arsenal the way it's right now, or you're calling Spurs, Prasanna, I considering the think games. Spurs. I think Spurs. If Yeah, the Arsenal thing are is, playing Arsenal need to win, and Arsenal need to win at St James's Park, even if they St draw, James's Park. because Spurs are now 2 points ahead. And last game they play Norwich away, which we might as well say Spurs win. So Mm-hmm. Arsenal need to win tomorrow. Yeah, If I they, think if yeah, Arsenal, it's basically in Arsenal's court. yeah, Technically, they have one game in hand, but that game in hand, as you said, is against Newcastle, which is certainly not easy. As in, considering Newcastle have got a battering against Man City, they probably will want to turn up and not just want to be in the beat so early. So, pretty they've much been good sure at that. home though. Let me see Yeah, what they won about. like 6 games in a row or something like that before they lost to Mm-hmm. Liverpool. Yeah, so that's true because yes, it is Newcastle at home, correct? It is Newcastle at home, and then they're playing Everton, which again, which might Yeah, be a tasty fixture considering what happens, right now because Everton are also, if I'm not wrong, going to be kicking off in a couple of hours' time against Brentford, and that yeah, won't be easy either. So yeah, again, lot of permutations, combinations, Prasanna and everyone in the chat. Again, everyone in the chat, do let me know. Yes, it's 9 minutes into the game, and West Ham City are still nil, and we'll look at the lineups. I know I was a little bit late because, like I said there were things happening, but I just kind of set up in time, and hopefully I'm here. And I believe David also might be able to join us in some time, so let me share the link with David as well. Again, this is going to be a stream, मतलब बहुत 4-5 घंटों stream होने वाला है. Hopefully you guys will be there supporting us, and again do smash the like button, do check out all the panels links below. I believe I have tagged everyone. Do let me know any of the content creators if I missed out, but I believe might have tagged everyone in the very first line. So yeah, please जाकर just click करिए और subscribe करिए to everyone, helps everyone. But do like the stream first and foremost because it will be reminded. और यहाँ पर the referee is got injured. I don't know. He's got like a ankle injury. He just fell down. Well, what happened? wow, And the Man City game is going on, and the referee just fell down. And I don't know. Really, this is quite funny actually, to be honest. But it's looking very bad. As in, referee might need a super sub. Okay, no, Laporte just gave him a hug, and then I think things will be fine considering that. That was actually a very funny moment. And Anthony Taylor is the main referee who's kind of laughing, but it's the linesman. Okay, so I think it was a header. Uh, oh man, you know what? Laporte.
Laporte basically kicked him, as in probably his butt kicked him, put it that way. But yeah, interesting again. Yeah, again, people, if you can share it on social media, it'll be fantastic. I've just shared it with David so that he can also join us in some time. But just taking a few more comments. Just want Milan to drop points so that Inter can take the advantage. Arey bhai, kyun bhai? And we'll come to that. By the way, I think for the Milan game, we'll probably have Sadiq bhai as well join by the time. Hopefully, we'll have much more conversation about that. Will Liverpool win the UCL? Now let's take this one quickly because Prasanna is here only before the CFC women's game. So Prasanna, what is your prediction there, man? Don't tell me you're going to take a treble. I mean, as hard it is to say, I genuinely think they would, because I think Madrid have kind of been getting away with moments, but I think Liverpool are just better, to be honest. I mean, not taking anything away from Madrid, they have come back from all these difficult situations, but I just think Liverpool are just better than them. But given that Chelsea stretched them to penalties, yeah, because Madrid over the weekend they did a madness. So they hit Levante for 6. I know it's Levante only 6-0, and that too they could have probably scored more as well. So it'll be interesting, like the way you say it. But again, it's a Champions League final, you're right. I mean, it's about that moment which probably Liverpool have. Yeah, and Benzema tax is always there. Right, and that's also there exactly. Bhaiya, आज मैंने आपका previous video देखा. I liked it very much, and I subscribed to you straight away. Thank you, means a lot. And yes, same thing I'm hoping to do to all the other content creators, starting with Prasanna on the screen. Hello panel, Women's FA Cup prediction. Well, again, I am certainly going to be going for a Chelsea win, no two ways about it. But like Prasanna said, it's not been easy. The City side has been there as well. So I don't think we can take it lightly at all. But again, Sam Kerr is probably the one, man. As in, she is like, as in on fire, as in simply put. And she's already committed, I think not technically, but verbally committed to the club. He's like, I cannot see myself, going out of Chelsea. I know a lot of Chelsea women are leaving in the women's game as well. A lot of transfers are happening, Prasanna. So that'll be interesting, what Chelsea end up with. But I believe we still have the funds considering the new owner, and Chelsea women should stay intact, right? I don't see many changes. Yeah. I mean, we still have Emma Hayes, so we still have have Emma Hayes. That's right. All I need. Correct. Could Newcastle United change its jersey to green and white in the future? Well, again, I think it depends on the new owners will come in. I don't think new season. So, man. And that jersey has been part of the tradition, history, and all. I don't think they will change that. They won't, exactly. I believe as well. And they shouldn't, like, really speaking. The lesser the changes, I think the traditional fan base will be happy about it, right? Especially the Geordies, and I know a few of them. Ankit Bhaiya, we just need 1 point to qualify for UCL. Well, Aniket, yes, but again, funny things have happened. That's why we need it. Yes, it is a marathon stream. Again, at least it's planned to be so. Unless as in people don't support me, hopefully there will be, and we'll have a lot of fun. It's a fun to watch because we are having 4 matches that we're covering that you can see in the description below. I think technically 5. Even Everton is a match, right? Technically, had this been a United or Chelsea player, Sadiq bhai says Anthony Taylor would have shown a red card already. I mean, Anthony Taylor for Chelsea this season hasn't been bad though. For some reason, I don't know why. Season, I won't take it, stretch it so far, Prasanna. I still would say that the first game against Liverpool, 1-1. There were a lot of shady moments in that game. But again, I hear you. What you're saying is just better. Ankit bhai, you look like a teacher in thumbnail. Arey bhai, that's probably as in a compliment for me. Like I'm looking so decent. Put it that way. But yeah, absolutely great, man. Real Madrid won't be so stupid to miss those mini matches like Chelsea. Chances, as in chances galore. That's what we're talking again. I don't want to repeat Chelsea too much because last night मैंने कर दिया है, बड़ा निकाल दिया अपना. But Tata United आपने देखा ही था शायद. लेकिन again, it is what it is, right? We got to move on. Ankit bhai, my opinion, Spurs should qualify for UCL. Conte deserves what an impact he shows. Total masters. See, for me, Conte maybe is one reason. लेकिन मेरा main reason मैं बोलूँ is Kane and Son. I want them to stay at Spurs. I don't want them to make our opponent in the rival or maybe UCL chase get stronger. I'm pretty sure they're going to move if they're not going to get champions. At least one of them will definitely move, if not both, right? And that's what I want, that at least they should get Champions League so that both of them stay. And here it's a goal I think is going to be no. Oh my God, who was it Zuma? Anyway, I forgot to share this, right? Let me actually share it and see what tactics they're playing today. And by the way, City fans in the house, nahi hai bula lo. Again, let's like the stream. But here the interesting part is that
luckily, Fernandinho was just about declared fit before the game. So was Laporte. Naito, they would have been like, really in dire straits. They don't have any centre backs available right now. Exactly. Many are injured. Correct? तो वहां पर थोड़ा issue है. हाँ, you can say that what happened in the last game wasn't really ideal for them. लेकिन again, I think it is like the game. Our Pep Guardiola, I think Prasanna has said that if we win this, almost we are there in terms of the title. The goal difference is just much higher as we saw on the table already, right? So as in check out this, as in Jesus, Mahrez, Grealish, De Bruyne, Rodri, Silva, Zinchenko. Liverpool are playing Southampton as well. That's not going to be easy, and given that they got stretched for the whole stretch till penalties. Correct. Yeah. Even coming before that, speaking of Conte, I mean, and I think Spurs need Champions League more than Arsenal because Conte is someone who needs investment. Okay. Fair enough. That's a fair point, certainly. Spurs are going to win the FA or Carabao Cup. You're talking about next year? Yeah. I'm assuming. But again, is that enough? For Spurs, any trophy right now is enough, to be honest. And by the way, special moment here happening, West Ham versus City, because Mark Noble's last home game. Mark Noble, I have to say that as much as I despise West Ham being our London rivals, but the fact that Mark Noble has actually been there, very few people are there who's been that throughout one club, and he's one of them, one of those rare commodities. So he has to be respected for that alone. I know that he was linked a few years ago. He was obviously one of them who also never got a chance playing for England as well. And there were moments, I think, if I'm not wrong, where he was almost there. But again, legend for West Ham. That's all I was saying. Declan Rice interview, I don't know if you saw. He said this guy like John Terry said about Desai all those years ago. Declan Rice said about Mark Noble, and that was interesting. I'm pretty sure that he's been the mentor for Declan Rice, right? Yeah. Haller to Dortmund. What do you know, right? As in Adeyemi is already gone there. I know Haller is a different kettle of fish, but again, I think Ajax they need to keep players as well. I don't think they're going to get rid of everyone, right? I know they are a selling club, so it's a different thing that Ajax just keep producing talent year after year, but saying that they need to keep hold of at least someone. I mean, correct. नहीं और Haller भी ना एक और चीज मैं बोलूँगा chat like Satvik as well, because finally he has got again his form, man. Let him keep that, and I think in the system it suits him. And Ajax you cannot undermine. Eredivisie he has a chance of winning more silverware next season. Plus the fact that they are in the Champions League, so I don't think it's a major kind of a thing moving to Dortmund. Maybe if he moves to an even bigger club, no disrespect to Dortmund, he might get tempted again. But again, he's faced that already moving to England, so I don't think he's going to do that. It's my personal opinion. Prasanna agrees as well. क्या लगता है Gabriel Jesus to Arsenal अच्छा move होगा? Well, वो move तो होगा, but अच्छा move होगा. I have my doubts, Prasanna. What do you think? Better than what they have, but is he your 20 goals a season kind of man for Arsenal? I don't know, because Arsenal they need two strikers in my opinion. I mean, one of them might be Jesus. Given that Laka and Nketiah are out of contract, I don't know. He will give you 10-15. He'll give you 10-15, but 20-25 not exactly sure. Hi guys, वॉल्यूम कम कर दो भाई, वॉल्यूम कम करो भाई, कमेंट्री सुन रहा है आपका. नहीं तो I get cancelled for copyright. You need to mute the volume definitely. So once you are doing mute करना भूल गया था, sorry please एक बार already channel ले गए. Last thing you want is you can being cancelled for copyright. I'm not going to get it back अगर वो ना तो exactly. Yes, the reports if Conte leaves, then Kane might move to United and Ankit bhai Kante to United. अरे नहीं भाई. How can Kante move to United? What is the motivation? Well, no disrespect, Gaurav. I know Gaurav is a really, really emotional, United fan, but that's not going to happen, Gaurav. Let's get it right. Okay, Kante is a team which potentially is going to be playing Champions League football. Technically, for the next 13 days, still champions of Europe. For the next few months, champions of the world. Yes. So we will not let Kante go. I don't think so. और जाएगा भी तो इंग्लैंड के बाहर जाएगा in the worst case. If it really happens. लेकिन welcome भाई sports कपा हेमंत. Hopefully आपका वॉल्यूम सेट हो गया अभी ठीक से. हाँ तो सही है. अरे भाई अच्छा क्लियरेंस यहाँ पर. मैं तो हॉटस्टार पे देख रहा हूँ. कोई नहीं मतलब it's all about just being along and how much is the difference though between 20 and Hotstar? 1930 इस समय.
हाँ तो मेरा 2010 है, तो मतलब 47 हो गया ऑलमोस्ट। कोई नहीं। तो अभी मतलब ये अच्छा, ये तो हो गया था कमेंट जो इनवैलिड था। आई वुड से इंटर मिलान इज आल्सो अ स्ट्रांग टीम, दो दे माइट नॉट विन सीरी A. They also defeated Liverpool at UCL this time. Hope they proceed in. Okay, they actually have won the Coppa Italia. So I think Yeah. Coppa Italia was a huge kind of a moment because they won it after 11 years. और Yeah. वो एक चीज है, मतलब मैंने कवर भी किया था अपने कंटेंट में, लेकिन फॉर मी definitely Inter Milan are there. Inzaghi is doing something. I know Conte played a different way. Inzaghi is playing a different way. लेकिन they are having a squad structure. मैं इतना ही बोलूंगा, there are certain players who are overworked in Inter Milan, so they don't have a squad as much as what they would have liked. Obvious reasons being there, 2 or 3 of the strongest players have moved on. So Dumfries, they are depending a lot, और वो दिख रहा है, मतलब his performances in the last 2-3 weeks hasn't been up to the mark. So let's see again. AC Milan, the ball is in their court tonight. Okay, yes. How is the thoughts day after game? For me, I'm more frustrated. Exactly, bro. अरे भाई यार, deflection almost goal हो गया था. Rodrigo, by the way, one of the most underrated players. And throughout the stream, let's actually come up with maybe I did one on I think Usman Bhai's channel yesterday, but it'll be interesting with our chat as well. We'll try and do teams of the season and stuff like that if everyone has the time. But Matt was there in last night's stream, equally as frustrated, if not more. I asked that to Hemant because Hemant was very, very frustrated in the chat. I know that, and I don't want Hemant to go into details right now because हमने already वो कर दिया है chapter. लेकिन because आप पहली बार मिल रहे हो उसके बाद. Sorry, I have to hop on the FA Cup final stream. It's about to start. Okay, perfect. Prasanna, we'll see you later. Try and join later, bro. Yeah, of course. After that finishes, I'll try to hop on here. Sure. Yeah. Take care. Everyone, PB Talks, remember PB Talks, great channel, and of course Hemant भाई बोलिए यार, आपका the ball is in your court. Go ahead. भाई कल तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, अभी थोड़ा कम हो गया गुस्सा, लेकिन उस समय जो हालत थी ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। अरे भाई ओ क्या हुआ? What a shot by Fernandinho to गोल हुआ? proper pile driver of shot. नहीं भाई, just बार के ऊपर. या प्लीज कंटिन्यू, आपको मिलेगा। मैं बोल रहा था तो वो माउंट का जब मिस हुआ था ना, इतना मुझे गुस्सा आया था। मेरे को माउंट बहुत पसंद है, बहुत, मतलब हर एक प्लेयर पसंद है मुझे चेल्सी का, लेकिन मुझे यार मैं हम बात कर रहे थे, मेरा तो यार ही इज मिस्टर चेल्सी न्यू वन फॉर मी। भाई आपका कैमरा का रुक गया है, कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम है क्या? नहीं, everyone in the chat please let me know. मुझे तो मेरा ठीक लग रहा है, but if you can just confirm me, you're able to hear me right now? हाँ, कैमरा आपका बीच में रुक रहा है, शायद मेरे से प्रॉब्लम होगा। अच्छा, as in if people watching can confirm that, it'll be great. हाँ यार, थोड़ा इंटरनेट इश्यूज थे आज, लेकिन hopefully we will not have that. Let me know अगर वो कंटिन्यू होता है ज्यादा, ठीक है? And everyone in the chat, please let me know about that अगर कुछ इश्यू है in my video. गोल! हाँ, गोल हुआ? West Ham, don't tell me Liverpool are doing a madness this season. West Ham score. भाई आप ऐसे स्पॉइलर मत दिया करो यार। यार तुम्हारे लिए स्पॉइलर है यार, it's a huge moment in football for Liverpool. कौन मारा? यार मैं तो टीवी में देखता हूँ भाई, मतलब that's a clear thing. I don't have, मतलब मेरे पास नहीं है हॉटस्टार, ठीक है? तो anyway, यहाँ पर जैरेड बोवन मारा, but they're showing the replay offside है कि नहीं? One touch football they're playing, man. West Ham. वाह भाई साहब, वाह। I think it was Lanzini. No, Lanzini नहीं था यार भाई, कौन था वो? जैरेड बोवन। नहीं, who was the person who actually assisted? That's what I want to see. बहुत बेहतरीन visible भाई, I think it's your internet. कोई नहीं, तो let me actually see. Anyone in the chat, do let me know भाई, कौन था वो first time pass जो किया था? What a first time pass and what a run by Jared Bowen. Or look at Pep's face right now, people. Just look at it. भाई साहब, that's not something that he expected. Absolutely he didn't expect. Oh, Fornals, what a ball, man, what a ball. Brilliant ball by Fornals. Hemant शायद, अच्छा Hemant हो, पता नहीं, he's just fixing his internet, I guess. But anyway, Ankit bhai, I want Chelsea to sign Perisic. What a guy. Yes, absolutely, Gaurav. That'll be fun because he can play 2-3 positions और वो ही हमें चाहिए क्योंकि हम अभी गरीब इंसान हैं. We are having new owners. भैया आ गया क्या?
अभी सही है? हाँ तुम्हारा तो सही था बट यू वर नॉट एबल टू सी मी आई बिलीव। हाँ, तुम्हारा तो थोड़ा सही था इशू पहले हुआ था। इनफैक्ट पहले बेटर था इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ गोल स्टैंड हुआ ना? गोल। हाँ गोल है डी मरिया टू यूवेंटस ऑलमोस्ट डन थॉट्स डी मरिया टू यूवेंटस ऑलमोस्ट डन है क्या देखते हैं डी ये मरिया तो का मैंने सुना ही नहीं। यार भाई आप लोग जो बोलते हो ना सोर्स भी डाल दिया करो साथ साथ में क्योंकि इतने सारे हवा यू नो में उड़ रहा है और मैं कमेंट कर देता हूँ फिर लोग बोलते हैं मुझे भाई कोई भी न्यूज में कमेंट मत किया करो बिकॉज वो सच सच एकदम ही नहीं तो थोड़ा सा सोर्स भी डाल दिया करो तो इट विल हेल्प सर्टेनली but decisive weeks yes Di Maria to Juventus latest already facing decisive weeks so it is seeming like yes there is certainly a strong story there तो वहां पर again the guy has been immense for PSG but he doesn't start many games so that might be the only reason why he is moving और obviously towards the end of his career है तो it will certainly be good the fact कि आपके Dybala might be moving probably Inter so I think he is a better fit than Dybala because Dybala as much as you know ज़्यादा pleasing to the eye है ज़्यादा effective Di Maria. Let's be honest about it. Ankit Bhaiya, Chelsea shouldn't have sold their so many defenders like Zuma, Tomori. They should have. मतलब वही hindsight is a beautiful thing, Aniket. It's a beautiful thing. Trust me. No one expected us to have ownership problems. अगर ownership problems नहीं आते ना, we would have already signed 2-3 backups by now. लेकिन वही है because we weren't able to commit. हो सकता है हम ना रूडिगर को convince कर देते in time. एक होता है ना मतलब just back of your mind. But Haller may be sold because for the second half Ajax is blooding one of their young highly rated strikers into the starting 11 yeah exactly 20-year-old Dutchman they always do Sadiq bhai they always you know have that succession plan going on that is Ajax for you लेकिन again यार मैं वही बोलूंगा coming back to the same thing Haller यार Hemant do you think he should stay at Ajax because I think he finally found back his form so क्यों तो छोड़ेगा when he has Champions League football I'm still in like disagreement over that what do you think उसको रहना चाहिए भाई अभी थोड़ा और डेवलप हो जाए थोड़ा जितना 1-2 साल रहेगा वहां पे और फिर बाद में ट्रांसफर हो तो बेटर है यार if you can just give me a second I'll just be back can you take some comments देख सकते हो ना comments हाँ, को if you can just address some comments and take the stream forward for the next minute people yes Himmat is going to take the stream forward मैं एक poll डाल देता हूँ यहाँ पर quickly Perisic scored banger in final. Suddenly Chelsea came in market, got proper hype. He is good, but this sequence gave more hype. ऐसा नहीं है भाई निखिल. Perisic has been good for quite some time और एक अच्छा बैकअप प्रोवाइड करता है वो चेल्सी के लिए क्योंकि लेफ्ट विंग बैक अलोंसो मेरे हिसाब से नेक्स्ट सीजन वो चेल्सी में नहीं रहेगा and Chilwell is also coming back from an injury. So Perisic provides that option on the left hand side, on the right hand side. और उसके पास एक्सपीरियंस भी है वो लीडरशिप क्वालिटी भी है और विनर है वो सबसे बड़ी बात ये है कि विनर है वो जो इस चेल्सी टीम को बहुत ज़्यादा चाहिए एक विनर मेंटालिटी चाहिए तो वो पेरिसिच प्रोवाइड करता है तो पेरिसिच इज़ अ वेरी गुड ट्रांसफ़र फ्री ट्रांसफ़र है तो इयन मैथसन भी जो हम लोग का लोन में इस समय या अकेडमी में मुझे याद नहीं उसको भी डेवलप करने का मौका मिल जाएगा एंड और पेरिसिच ओल्ड है तो वो ज़्यादा मांगेगा भी नहीं कि मुझे ये इतने सारे गेम्स चाहिए वो सब टाइम सो ही इज अ परफेक्ट बाय फॉर चेल्सी पोग्बा टू यूवेंटस ऑलमोस्ट डन अच्छा ट्रांसफर होगा यूवे है या फिर रियल मैड्रिड है वो अभी मैं श्योर नहीं हूँ बट अगर कहीं भी जाए पोग्बा तो पोग्बा ही है अच्छा परफॉर्म कर टैलेंट तो है उसमें और सबको पता है कितना बढ़िया प्लेयर है यूनाइटेड में नहीं खेल पाता फ्रांस में बेहतरीन खेलता है सो यूवे जाए रियल जाए दोनों ही बढ़िया है उसके लिए ही इज नॉट बैकअप प्लेयर आई गेस ही शुड बी अ स्टार्टर को वो स्टार्ट भी कर सकता है तो चेल्सी के लिए अच्छा है प्रीमियर लीग wants a last day drama where Man City will want an Aguero type goal to win and Liverpool to want यही है भाई अगर ऐसा कुछ हुआ ना 2000 जो अपना सिटी के साथ हुआ था एग्वेरो टाइप गोल तो मजा आ जाएगा पोग्बा फ्रॉम वन रिबिल्ड टू अनदर ये तो है रियल मैड्रिड इस समय में रिबिल्ड फेज में नहीं कहूंगा अगर वो गया यूवे अगर जाएगा वो तो यस डेफिनेटली एक रिबिल्ड फेज होगा वहां पे एनी ट्रांसफर न्यूज रिलेटेड टू चेल्सी अनिकेत भाई पेरिसिच का है और कुंडे का है चुआमनी का है सीडीएम पोजीशन पे डेक्लन राइस का है डिफेंसिव ज़्यादा होंगे इस समय चेल्सी के लिए और कुछ ट्रांसफर न्यूज़ तो मेरे हिसाब से होगी नहीं अटैकिंग ऑप्शंस में
मेजरली इस सीजन जो चेल्सी का आने वाला है, मेजरली देयर विल बी अ वेरी बिग क्लियर आउट. और यप आई एम बैक पीपल. थैंक यू हेमंत. और या मैंने पोल डाल दिया है, इंटरेस्टिंग पोल. सो लेट्स सी, मतलब बेस्ड ऑन दैट आई विल ट्राई. मैं एवर्टन ब्रेंटफोर्ड डाल नहीं सका. आई एम गेसिंग दैट विल बी वन ऑफ द लीस्ट फेवर्ड मैचेस बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली लीस्ट सपोर्ट. हाँ, लैम्पार्ड स्टैंड्स अलग चीज बोले एब्सोल्युटली, लेकिन हाँ आई थिंक आपने मोस्टली सभी ले लिया राइट. पॉगबा टू यूवेंटस, ये वाला क्या लगता है आपको? आप म्यूट पर चले गए आप. मैं तो हेमंत इज बैक ऑन म्यूट. हाँ बैक. सॉरी यार, वो इशू हो रहा था. सो मैंने एड्रेस किया था ये यूवे और रियल का. मेरे को लगता है वो इन दोनों ऑप्शंस में से ही जाएगा. इफ ही गोस टू रियल, वहां पे कंपटीशन ज्यादा है और उनके ट्रांसफर्स में मुझे नहीं लगता दे विल गो फॉर हिम. बट आ रहे हैं रूमर्स तो ठीक है. नहीं यार, मुझे रियल नहीं लग रहा. मुझे वही लग रहा है, मतलब आई थिंक पॉसिबली पीएसजी या पीएसजी तो फिर भी लग रहा है क्योंकि हाँ वेराटी कैन प्ले डुअल रोल ना. रियल में प्रॉब्लम इज दैट दे नीड समवन हु विद द लेग्स. I don't think वो है with the legs, so I think that's a problem. So that's why I'm rather saying Chouamani to Real looks more likely, with Pogba going to Juventus और PSG. देखते हैं, मतलब that be interesting. लेकिन हाँ, ये चीज मैंने देखा था, हेमंत ने बताया था, मैंने सुना. लेकिन अगेन ये निखिल क्विकली मैं बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने अपने वीडियो में भी बोला था ना, यार भाई ये क्या है स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट में, क्या 31 मिनट में बीच में कुछ इंटरव्यू आ गया, चलो वो वापस से मैच आ गया. कुछ तो यार ये स्टार स्पोर्ट वाले क्या टेलीकास्ट कर रहे हैं आज, पता नहीं. But talking about this, यार again I will repeat that Perisic has played a lot of games at wing back. ठीक है, so you cannot really judge on his goals. The fact that he can score goals is a bonus. और चेल्सी को चाहिए वैसा प्लेयर, और he can play in two different positions. So I won't judge on the number of goals he's got in this season. I will judge on what he's improved on in this season, and which is his defensive ability, जो नहीं था पहले as much. तो yes, that is certainly one of the points that मैं बोलूँगा. एडिसन भैया आप बताओ, ये आपको पेरिसिच का ट्रांसफर अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो बहुत पसंद है इस समय. हाँ मैं तो रेट काफी, मैं तो बहुत ओवर एक्साइटेड से रेट किया था यार वो वाला वीडियो में. यू वॉच इट. बट एनीवे, हियर वी हैव डेविड इन द हाउस. डेविड ब्रो, व्हाट्स अप? हाउ आर यू मैन? Yeah, better than yesterday, but not as ideal as what I should have been. And of course, not great news generally in the sporting world. But I would like you to react on what happened to Tottenham. They beat Burnley. And I see. I didn't watch the match, but I was keeping an eye through the notifications. Right now, I think they're gone fourth, right? Without Arsenal. Yeah. Tottenham are fourth, but Arsenal have a game in hand. They are 68, right? Yeah. Yeah. So Tottenham are basically as 68. 68 and 66 for Arsenal. Arsenal, exactly, but Arsenal again, like I said, they have a game in hand, so they will be. Who are Arsenal playing though? Who are Arsenal Newcastle. Oh, tomorrow. That will be tricky. That will be a tricky fixture. And away, it's away. St James Park. After Newcastle got a battering against Man City. So yeah, the ball is in Tottenham's court in a sense, but again, Arsenal will say that we probably it's in our hands as well. So what's the prediction quickly? दोनों के लिए I have a hot take. For the sure. I have a hot take next season. अगर Levy backs Antonio Conte next season with 2 to 3 signings, I think Tottenham title challenges होंगे next season. I think. Title challenges with 2 to 3 signings. Honestly, मैं बोलूँ, मतलब not that मैं थोड़ा ambitious कम or whatever. I still see City and Liverpool are far better. Yeah, exactly. I was going to say that. Better. वो नहीं आएगी यार, mentality नहीं आएगी. Challenges overnight नहीं आती. Maybe. They might top push 4 them. Definitely top 4 definitely, yeah. But I think City and Liverpool are just too good. I think for only 2-3 signings to make a difference for Spurs, So I doubt they'll challenge, but definitely they'll be up there higher than what they are currently are. यार रियल मैड्रिड को नहीं चाहिए पोग्बा. रियल मैड्रिड फैंस अभी बोल रहे हैं we don't want Pogba. We have Valverde and Camavinga is the modern Pogba boss. Yeah. Why do you need Camavinga? Chouamani So would be good. the perfect match. I agree 100%. क्या CSK trying for Hyderabad? We'll have to keep a look on that. Who won the toss भाई? मतलब हेमंत भाई थोड़ा बताइए यार, वहाँ पर हेल्प करिए मुझे. Rajasthan Royals I think won the toss. Okay, so interesting. Rajasthan बैटिंग कर रही है. Yeah. राजस्थान बैटिंग कर रही है क्या? Yeah. रवि बिश्नोई वापस आ गया टीम में लखनऊ के लिए. And Rajasthan have got Isham and McCoy for Rassi and Sen.
And by the way, यार, again, cricket fans out here, I have to say, यार, ये काफी important match है for two RCB supporters and myself and Hemant. And I'm assuming David, you kind of support Mumbai, which is not in the reckoning. I don't watch cricket, so I mean, it's like भाई ये हर एक वीडियो में लोग मुझे पूछते क्यों है भाई कहाँ से हो, मेरी भाषा कुछ अलग से नजर आ रही है आपको श्रेयांश, मतलब आप बोलिए, मतलब अगेन आप सोच रहे हो कि मैं ऑफेंड हो रहा हूँ भाई, क्योंकि हर एक जन मुझसे पूछता है ऐसा क्यों है भाई, मैं हिंदुस्तानी हूँ भाई, मैं मतलब लिटरली हिंदुस्तानी, और क्या बोलूँ मैं. Will the Chelsea player transfers happen according to the owner, scouting people or the manager? Well, आते हमें अभी लिटरली मैं दिखाने वाला हूँ क्या लाइनअप्स आ गए ना हेमंत भाई, लखनऊ और आरआर के. हाँ भैया लाइनअप आ गया. तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेसिकली कि लखनऊ जीते, चलो दैट इज व्हाट वी वांट. राजस्थान का जीतने का फायदा सिर्फ राजस्थान को और किसी को नहीं. फेयर इनफ. यहाँ देखिए पिच रिपोर्ट है. बाय द वे बैटिंग फर्स्ट थोड़ा सरप्राइजिंग है सच बोलूं तो. आई नो दैट प्रेशर मैच है, यू रादर पुट द रन्स ऑन द बोर्ड, लेकिन it has got plenty of grass. It's really hard. Matthew Hayden says the outfield is lightning quick, and both of these teams have to take advantage of this wicket. 190 is probably not going to be enough. On this wicket, the Pacers will have a bit of carry, but it's an excellent wicket for batting. So put runs on the board. वो है राजस्थान रॉयल्स का टेक्निक, but kind of strange. फिर भी मैं बोलूंगा यार, going by night games, generally teams prefer to chase, नहीं हेमंत? हाँ भाई वो तो है, लेकिन मेरे हिसाब से सैमसन might have thought कि एक बार runs on the board चले गए, suppose they score 200, so they will try to restrict Lucknow, क्योंकि उनका last match I think they got all out 82-87, and तो वो pressure है उनकी बैटिंग में भी, so वहाँ पे वो run rate अपना अच्छा करने की कोशिश करेंगे to secure the top 2 position. So I think I understand his decision to bat first. Okay, fair enough. Again, I'm just waiting for the teams to be updated on the official website. I usually try and prefer the official website ही दिखाऊं. Matata United, will the Chelsea transfers happen according to the owner, scouting people, or the manager? This is a $1 million question. Probably David, what is your gut, man? In the way Burley has gone about in LA Dodgers, I believe he goes with his team and he relies on his team to give him data, and then they kind of discuss and do it. But again, is he the kind of manager? I know it's easy for us to just speculate, but we'll just give Thomas Tuchel the reins. What do you think? I think it'll be a mix of everything, and because at the end of the day, the manager has to be willing to work with that player also, right? Because you can't just be spending the money and keeping him on the bench, because the manager is going to be putting out a team sheet every week, and it's not going to be the owner. So I mean, you might see a few signings here and there, but I think it's mostly going to be the manager choice. Achha. Or maybe they'll come to to a middle point where both can agree on, and one such player maybe. Fair enough. यहाँ पर अरे यार, मतलब people are asking can I join? भाई all content creators if you're watching, मतलब मैंने लिंक भेज दिया भाई आप लोग को. आप लोग जब भी आना चाहो आ जाओ, बस मुझे बता दो बस. And yes, definitely you can definitely come. And you already told, मतलब please join. यहाँ पर hopefully we'll have Shrey as well. Perfect. So yes, Ankit OP हो जाए, Hemant OP. You're watching the City West Ham. Yeah. So we're going to be watching both the games side by side. So West Ham City and Lucknow Rajasthan is what the plan is for the timing. And Chelsea women, I think that is also kicked off, right? FA Cup, right? But I don't think can we watch that? Let me see. Private chat में भेजा तो था प्रसन्ना ने लिंक, मुझे खोलने दो, मैं म्यूट करता हूँ. Again, if you can just take a few comments, Hemant bhai, till the time I'm just trying a link. हाँ भाई, Conte रिजल्ट निकाल सकता है. Let it be 1-0 victory also. थोड़ी अच्छी टीम होगी तो competition will increase. वही तो चाहिए हमें, है ना डेविड? Definitely. We want competition in the Premier League. That's typical Conte also, like to just get his 1-0 result. No, sit back whole game and then just hit on the counter, and then just take those 1-0, 2-1, those small narrow wins. But at the end of the day, you want the 3 points. That's the most important, right? So any way you're getting it, I mean, Spurs will definitely take it at this point in time. So, and I hope they get top 4. मेरे को Arsenal से सख्त नफरत है, Tottenham से ज़्यादा. I want Tottenham in the Champions League. So next, how compact are West Ham defending? वही है यार, 1-0 result है इस समय.
जितना Yeah. निकाल सकते हो निकाल लो. Yeah, I And think, David- but I think it's a matter of time before City will come back. Matlab, come and score, because they have already got so close from, like, I've seen now in the last 10 minutes I've been watching. They have come so close. And yeah, West Ham are just throwing bodies in front of the goal at this point. So they are just trying to, you know, hold the lead. It's going to be a head-eye treatment kind of a half-time talk, man. But I'm pretty sure. But Sadiq bhai are giving some important data because I believe he's following LA Dodgers as well for a while. Burry tends to negotiate the money with his own financial guy, but he relies on the coach or manager. Okay, fair enough, and that's something that probably is good sign for Chelsea. Having said that, absolutely. भाई यही Yes. है जो अपना लिवरपूल का है ना मॉडल, स्काउटिंग, देयर ओनर एंड प्लस यर्गन क्लॉप, तीनों मिक्स करके वो ट्रांसफर्स आते हैं. वही चेल्सी में अब होगा. And I'll it's ask good you a question. The other day I was doing a video with Nitika, and she asked me this, that we seen in the Wolves game, the reaction that Todd Bowley was giving, for all the goals and just everything. He was like very animated, like how I mean, so she was asking me whether do you think he is like a football fan and like a crazy one, like, and especially like a Chelsea fan. What do you all think on that? I personally thought, so what I had said was, it could be, it could not be also, like, there are certain things done for media, certain things, I'm not saying he did not do it because he's a football fan, but I personally don't know, right? So I wouldn't want to like jump to No, the fact conclusion. the fact is out, obviously, like, that's the thing. One of the things initially jo hua tha na, jab we were linked with all these owners, the fact that I think it was the guy was, I think uska naam funny tha yaar, as in Nick Candy. He was the guy he is a season ticket holder, and a lot of support tha uske liye. And and the another guy was that Turkish guy who was probably Roman's friend. So वहां पर he could have been a follower because they kind of follow together, something like that. ऐसे कुछ stories आते हैं. Same thing goes for the Saudis. In fact, they were actually following Chelsea. But again, with this guy as in Burley, that wasn't the case. The only thing was that Wolstein was a Tottenham fan, but he's not one among the main guys in the board now. Okay, so it's a good thing for Chelsea, and Burley himself is. I would not claim that he's a Chelsea fan. He's not. I don't think that is known that he's a Chelsea fan. So that would have been the bigger story, out of anything, and that's why the preference would have been. I think he is a businessman. उसने एक business खरीदा है इसने. And he's a football fan. He is a football fan. That he's gone on record saying that he is. और इसको प्रॉफिट कमाना है जितना भी हो सके, नई हाइट्स पे लेके जाना है चेल्सी को, तो वो दिख रहा है. नहीं, he loves sports यार, and he loves football. That is something that he's already voiced. लेकिन it's not definitely यार, ये हमेशा पोटैटो भाई पूछते remember me, of course भाई, Spurs fan. Congratulations that you got the win, important win. और हाँ, you have made Arsenal nervous कल के लिए, जो already थी Arsenal in my opinion. But काफी. Do you think Arsenal will crumble under the pressure? I still feel that it'll go down the wire. I think कल नहीं होगा. Maybe the last game of the season is when they might. Tottenham fourth finish करेगी. मैं आज स्ट्रीम में बोल रहा हूँ. मैं क्या बोला हूँ ना, I want Tottenham to finish fourth because of Kane and Son wanting to be there. I feel that. लेकिन होगा क्या खेत है. I don't know, but at this point, watching Arsenal in the Champions League will just feel a bit, it will feel a bit different. Like, for so long, at least for Spurs, you've seen them play in the Champions League and get knocked out. Like, but for Arsenal to be playing on, Tuesday, Wednesday night, it's going to feel different. Like, Yeah. So, playing 11, by the way, official website में finally load हो गया है भाई. Official website इतना slow क्यों है भाई IPL का? But anyway, let's share the playing 11 as I think City take a free kick. अरे nice catch. But anyway, this is what you are looking. I hope आप देख सकते हो भाई. बहुत ही important game I think for RR. But again, even for Lucknow, technically Lucknow are not yet qualified. ठीक है, तो if they are losing by big margins on both matches, हो सकता है they'll be out, and that is why they have played a strong team. आप देख सकते हो KL Rahul, Quinton de Kock, Deepak Hooda, Krunal Pandya, Marcus Stoinis, Ayush Badoni, who was really impressed me. Jason Holder हमने actually team of the season में डाला था, हम वापस करने वाले क्योंकि एक हफ्ता हो गया उस बात को. और जारेड बोवन एक और गोल भाई साहब. Jared Bowen's goal. Second goal. Oh my God, Liverpool, man. Liverpool fans. भैया स्टैचू बनवाओ, स्टैचू बोवन का स्टैचू बनवाओ. And he's the guy who's linked to Liverpool. इतने महीनों से. Remember in the entire January transfer window, we were like, all the City players are shocked. They don't know what's happening. Oh my God.
Oh my God! And can West Ham also come sixth now? I know Man United need to win their matches now. That is Oh also a my possibility now. Arey bhai sahab, What a match! What a match! a great ball, I think, through ball by Antonio, and a great run again. Ooh, Bowen, lovely. he is the kind of striker we Lovely. need. Again, Yeah. so the grass is always green on the other side. मैं बोलना चाहूँगा, लेकिन भाई वो एक रन को anticipate करता है ना, वो है. Jared But yeah, Bowen is one of them. Bowen is This so guy, good. yeah, I think he deserves a call up for England in the next international break. He definitely deserves a call up. Oh my God! He's been one of the standout players this season in the Premier League. या लखनऊ का Wow. देखेंगे 2 मिनट बाद में मेरे को तो ये एंटिसिपेट नहीं किया था मैंने खुद बावन ने लेकिन डेफिनेटली एंटिसिपेट किया था स्टर्लिंग टू स्पर्स भाई मतलब नहीं मुझे नहीं लगता वो तो नो है गोल वेस्ट हैम एग्जैक्टली एडिसन यार इसमें एडिसन की क्या गलती थी भाई कुछ थी No, this was defending, yeah, poor defending. positioning maybe he should have made himself a little bit more larger but again it's easier said than done. I don't think this is purely the defense. They wanted to keep a high line or Exactly, they were yeah. fooled. It was City defense more than anything. What would be Juan Mata's next club? Interesting. I think he goes back to Spain. Probably should go back to Valencia, in my opinion. Valencia, where he came from, I remember AVB. Yes, people, you heard it right. AVB, Andre Villas Boas signed him. और यहाँ पर nice cross. City का भी ये second half मस्त होने वाला है. Ooh. David, you joined in for the right match, bro. Trust me. Yeah. This second half, I still think it will at least be a draw, if not a Man City win. Oh. I still think that. लेकिन 2-0 West It's Ham. close, भाई, yeah. First half हो गया है. First half is Exactly, done. first half done. Oh man, this is something else. Liverpool quadruple. It's for real. Liverpool fans, what are you I feeling know. like now? Yeah, gajab. Oh my God. You must be, over the moon, man. I think Man City will come back strong. Yeah, I agree with सब that. लोग ये They'll come back स्ट्रीम strong. शेयर करो बहुत लेजेंडरी स्ट्रीम होने वाली है ये अगर West Ham ने मतलब, come हरा on, दिया है। we have 30 people. Hopefully everyone has liked the stream और सब लोग यार do check the channels यार मैं डेविड का भी चैनल डाल दूंगा लेकिन हाँ मतलब आप देखते होंगे यार I think David we have featured him already on the channel many times. Bowen statue would be made in Anfield if Liverpool wins the title. I don't think that much लेकिन हाँ you know what you mean right? Yeah. फर्नांडिनो भाई उज्जवल उनके पास है ना थे नहीं ऑप्शंस तो आज फर्नांडिनो थे वही बड़ी बात है और बाय द वे फर्नांडिनो I don't think it is singling out a defender. I think both the goals it has been City's line नहीं? What do you guys think? I've not seen the first goal. I started watching I think for half it's an been hour. City's high line that they're trying to maintain. I don't know why. मेरे ख्याल से दोनों ही goals वैसे हुए और they Who got the shouldn't first have goal let for that West come. Ham? The first goal. Jared Bowen. Oh, he only got both? Oh It my was God. that was a great first time shot by Fornal. Ah. Fornal from midline just kicked the ball above everyone and Jared Bowen made that run Yeah, if which I'm no one not wrong, anticipated. Damn. मेरे हिसाब से सिटी हाईलाइन खेल रही है ना सो दे आर गोइंग फॉर लॉन्ग बॉल्स तो वो एक्सपोज हो रहे हैं वहां पे और उनके पास स्पेस भी है एंटोनियो की And they got space also with Bowen running in behind. Yeah, Aki, interesting. Yeah, that's a good call, man. As in, let me see the bench. Nathan Aki is there on the bench. Yeah. हमने मिस कर दिया नितेश. बहुत अच्छा पॉइंट है ये. बहुत अच्छा पॉइंट है. Nathan Aki, boss. As in, if you didn't want to play him, buddy, why did you take him? He was a Chelsea boy through and through, boss. Anyway, as in, kind of very funny that, but let's take a look at the bench. I know that the cricket match is going to start any moment, लेकिन आप देखते हैं यार quickly. यहाँ पर देखो आप ये है सिटी का बेंच बाय द वे फिल फोर्डन तो डेफिनेटली आएगा यार किस माउंट पे आएगा देखना पड़ेगा रहीम स्टर्लिंग कोल पामर इल्काई गुंडोगन भाई क्या बेंच है ये क्या बेंच है नेथन आकी इज देयर ऑन द बेंच सो आई थिंक ओनली इंजर्ड प्लेयर्स आर ऑफ कोर्स बेंडी की तो बात नहीं करते जॉन स्टोन्स काइल वॉकर रूबन डियास तो ये मेजर चलो वी विल टेक दैट दे आर मेजर प्लेयर्स इन द डिफेंस लेकिन द फैक्ट दैट नेथन आकी इज अ सेंटर हाफ और आपके कौन से मैचेस है भाई आप चैंपियंस लीग फाइनल के बाहर हो तो आप व्हाई आर यू आई नो दैट ही इज लेफ्ट साइडेड हां वन आर्गुमेंट कैन बी कि दोनों ही लेफ्ट फुटेड है दोनों ही लेफ्ट साइड पे लपोर्ट एंड आकी बट पीपल हु हैव वॉच्ड आकी फ्रॉम चाइल्डहुड आई हैव लिटरली मैं देखता था हर एक मैच व्हेन आई वाज लिविंग अब्रॉड आई यूज्ड टू वॉच एवरी even youth games of Chelsea. The guy actually plays right back. The guy plays right center back. I know it's been a long time, like he is capable. I would still have him over Fernandinho, just so that that is kind of the natural position for him. I don't know, bhai. मतलब again, people in the chat, especially City fans, आप बोलिए. नितेश ने बहुत ही अच्छा point बोला. नितेश मीना, big up भाई. लेकिन over to the panel, and I will add of course Shrey FC here at the right time. Shrey has joined.
श्रेय भाई, मतलब ये तो मतलब hello. आई नो क्रिकेट की बातें हमें शुरू करना था अभी, हम करेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट गेम है आरसीबी और डीसी और बाकी टीम्स के लिए आज। लेकिन श्रेय, आई वुड लाइक टू टेक योर ओपिनियन क्विकली भाई। मतलब वेस्ट हैम स्कोरिंग दोस 2 गोल्स, रन ऑफ जैरेड बावन, मतलब सिटी डिफेंस एट फॉल्ट और वेस्ट हैम जस्ट टू गुड इन दोस 2 मोमेंट्स, यू थिंक? I think अंकित भाई मेरे को ये लगता है कि I think City were a bit complacent because they are still 3 points ahead and their goal difference is still I believe 5 above Liverpool is 70 and 65. So it's still going to take a big miracle for Liverpool to win the title. Liverpool have to batter Southampton 5-0 and then in the last game they also have to win by the bigger margin because I think if the goal difference gets tied then these two teams will have to play a game together, again another game after the season. So I think City were complacent because they still have title in their own hands. But I think this has made very interesting. Especially, I think the biggest thing that I think we have forgotten is West Ham's Europa League exit. Because of this, they are playing more seriously. Because now they have no chance to qualify via Europa League. So they have to beat City. They have to beat in the last game of the season. And they have to wish that Palace beat United. And they finish in the Europa League spots. So I think that's been the reason. That's City have, I think West Ham have taken it seriously. While City are still, I think, So what Shay is trying to say is West Ham can still end up in the Champions League. In Europe. In Europe. Exactly. Okay, यहाँ पर सादिक भाई भी जुड़ गए हैं। सादिक भाई, मस्त टाइमिंग है भाई। मतलब डोंट टेल मी द अनथिंकेबल इज गोइंग टू हैपन। आई नो गोल डिफरेंस काफी अच्छा सादिक भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। लेकिन क्विक रिएक्शन मतलब आपका भी प्लीज, क्या गलत किया पेप ने? इज इट लाइक गोल डिफरेंस इज टू मच ऑफ अ लग्जरी? I think it's the Yaya Toure curse, भाई। अरे नो यार, वो चैंपियंस लीग में भाई, लीग में तो ऑलरेडी जीत गए, राइट? बट या गुड पॉइंट। He's bringing the curse with him. Oh, I don't know what it is with the new Wembley curse with Chelsea. I just cannot understand it. David should, you know what I think? अरे मेरा वो आ रहा है यहाँ पे। आप लोग ये वुमेन एफए कप फाइनल देख सक रहे हो, नहीं देख सक रहे हो? नहीं यार, मैं देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर। मेरा तो आ रहा है, कोई प्राइवेट चैट में भेज दो कोई लिंक हो सके तो। क्या वहाँ पर मैं स्कोर फॉलो कर रहा हूँ। 22 मिनट्स इज 0-0 स्टिल, चेल्सी वुमेन एंड मैन सिटी वुमेन बाय द वे। Man City, right? हाँ। या और यहाँ पर यार मैं क्विकली बोलूंगा, सादिक भाई हैज अ पॉइंट। देखो, लिवरपूल हैड नो लक एट ऑल लास्ट सीजन, अग्रीड। लास्ट सीजन दे हैड इतने सारे इंजरीज जस्ट लाइक चेल्सी एट दिस सीजन। अभी they are getting, there is a amount of luck, they are getting a lot of luck। तो मैं तो बोलूंगा, maybe that last game, maybe if City somehow drop points, get a draw, who knows, it might just go to that। But again, 2 draws, 2 wins for Liverpool and 2 draws for City and that's it। But सादिक भाई, मतलब अभी भी सेकंड हाफ है अभी तो। फर्स्ट पॉइंट इज, आई थिंक नितेश मीना बोले थे, they are not starting with Nathan Aki। The fact that Laporte is also left-sided, he's also left-sided। When we are able to play with 2 right-sided centre halves, why aren't we able to play with 2 left-sided centre halves? Please explain to the chat। वो पता है राइट साइडेड तो ये होता है ना कि जो आप जब राइट साइडेड खेलता है प्लेयर, वो यूजुअली ही इज यूज्ड टू प्लेइंग इन बोथ द डायरेक्शंस। लेफ्ट साइडेड होता है ये कि इवन व्हेन यू ट्रेन ना, तो व्हेन यू आर लेफ्ट फुटेड इट इज सच अ नोवेल्टी के देन दे आर मेड टू, क्या बोलते हैं उसको ट्रेन इस तरीके से कराते हैं प्लेयर को कि वो बहुत एक्सक्लूसिवली उसका बॉडी पोस्चर, बॉडी मूवमेंट सब लेफ्ट साइडेड डोमिनेंट हो जाता है। राइट। हाँ, लेफ्ट राइट इसलिए यू कैन I mean you will find a right footed left back but you won't find a left footed right back। fair enough। और मतलब होता था back in the day, I know like Dennis Irwin could play both the sides for example, so but he was right footed na, right footed exactly। हाँ, वो भी है, correct। he was a left back who was right, I mean he was a right footed left back। correct। हाँ, same thing, Paulo Ferreira भी right footed left back था। same thing with Aspili, we were right, absolutely। you don't find the other thing कि जो left footed होता है वो right पे खेल ले जाता। तो सादिक भाई क्विकली यहाँ पर ले लेते हैं। मतलब आई नो वेस्ट हैम की भी थोड़ी बात करनी चाहिए भाई, मतलब दे डिजर्व इट, दोनों पॉइंट्स। एक सेकंड बस आता हूँ हेमंत भाई, क्विकली, बिकॉज ये कमेंट आया था अबाउट यूनाइटेड। राइट नाउ, आर यू मोर हैप्पी विद यूनाइटेड गेटिंग यूरोपा और नो? Honestly, if you ask me, I would want United to get no Europe for next season. Just concentrate on the league, concentrate on rebuilding your squad, and then taking it from there. मतलब because जितना कम फुटबॉल होगा और जितना टाइम मिलेगा बीच में, उतना ज़्यादा एरिक टेन हैग can like sort of mold the squad into his own into what he wants it.
and then the season after that, yes, then obviously there will be some expectations building up depending what happens next season. राइट लिवरपूल फैंस को ना मैंने एक्चुअली दे दिया कुछ कॉन्फिडेंस और अभी आ रहा है और लेकिन अगेन इट्स नेवर ओवर जस्ट ओवर लाइक फुटबॉल दैट्स व्हाई वी लव इट मतलब टेक्निकली बट हां हेमंत भाई प्लीज यार यू हैड अ पॉइंट प्लीज गो अहेड भैया आपके स्ट्रीम में इस समय एक लिवरपूल फैन साक्षात बैठे हुए हैं उनसे हाँ, पूछिए of course, उनका of course. हाल क्या है इस समय मैच देखते अभी देखते उन पर ही आ रहा हूं नेक्स्ट तो आई वाज think गोइंग टू हिम ओनली एक्साइटमेंट High कंट्रोल नहीं हो रही है likelihood उनके I think high likelihood is Uday will prefer not to say anything right now. I think you've taken word out of my mouth, Sadiq. Opportunistic हुए थे उदय but fair enough यार I respect to उदय for that लेकिन उदय firstly यार मतलब is all the luck coming in the right time for you मतलब you really feel that मतलब let's be honest you didn't feel that EPL will be given a chance last weekend right मैं अभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ लीग जीते हैं एस्टन विला के साथ खेलेंगे वो लास्ट मैच तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बट अभी अगर देखें तो वहाँ वेस्ट हैम से एक्सपेक्टेशन थी कि चलो काउंटर में मार देंगे गोल एंड उनके पास जितनी अपॉर्चुनिटी आ रही है दे हैव लेवरेज्ड द मोस्ट आउट ऑफ दैट क्योंकि सिटी रिलेंटलेसली दे आर पुशिंग अहेड एंड दे आर इवन डिसिपेटिंग प्लेयर्स लाइक Zuma is not commanding that position at all मतलब मुझे लग नहीं रहा कि बड़े फ्लूकिशली वो बॉल्स निकाल रहे हैं एक तो बढ़िया क्लियरेंस किया था भाई मतलब यार तो आई नो मे बी आई एम बायस सबकॉन्शियसली लेकिन भाई मतलब जुमा एक किया था प्रॉपर क्लियरेंस अगर नहीं करता तो सिटी का टैपिंग था तो बट वो नर्वसनेस दिख रही है उनकी डिफेंसिव लाइन में वो नर्वसनेस बहुत दिख रही है एंड प्लेयर्स लाइक Cancelo and Zinchenko are getting central and they're giving those vertical passes which are penetrating their lines of defense तो अभी ठोकेगी सिटी तो ठोकेगी एक दो गोल तो ठोकेगी अरे भाई यहाँ तो क्रिकेट मैच शुरू होने वाला है और इसलिए मैं क्विकली दिखाई देता हूँ क्योंकि यार राजस्थान की बात करनी है क्विकली एंड आई विल कम टू हेमंत एंड श्रेय फॉर दैट क्विकली अभी ठीक है तो यहाँ पर लेट मी शेयर द स्क्रीन बिफोर आई कम बैक टू द सिटी अभी हाफ टाइम आई नो बट अगेन चेल्सी वुमेन यार पीपल चेल्सी फैंस स्पेशली डू अपडेट अस क्या होता है वहां पर काफी इंपॉर्टेंट मैच है एफए कप फाइनल फॉर द वुमेन्स I know Prasanna is doing a watch along as well लेकिन देखते हैं मतलब hopefully we get that trophy यार we really need it अभी यार in the club we need something positive simply put yeah so this is the lineup people तो श्रेय पहले आपके यहाँ आते तो the fact that राजस्थान के लिए almost do or die बोलोगे श्रेय मतलब you are surprised James Neesham is back did you expect any change there or is it fair enough I think Ankit bhai, I was not surprised because Kuldeep Sen, I think in the previous matches did not do well. Kuldeep Sen was doing well when the pitches were a bit slow, but I think today's pitch has a lot of grass on it, so it's gonna come quicker to the bat. So I think they've gone with Neesham because of his batting prowess, so that the batting gets longer. And they've gone with Obaid McCoy, a left-arm pacer who slows the delivery down in the end, so he can be very useful for them in the death overs. I think they have, if you see properly, they've strengthened their batting. Butler, Jaiswal, I think Ashwin is gonna come at number 3rd. Which is a very surprising thing that Rajasthan have found out. Pardikal will come 4. I don't agree with it either. But he hit 50 last match. So अरे लेकिन वो ज्यादा 5 बॉल एक्स्ट्रा खेलता है ना वही पॉइंट है yeah and overall I think the bowling is Ashwin, it's Bolt, they have Chahal, they have McCoy, they have Neesham. Parag can gives them some overs, so I think they have strengthened the batting lineup now. They can bat till number 7, number 8, so I can understand their logic for going this lineup. Yes and again any content creators जिनको मैंने लिंक भेजा है again you are more than welcome क्योंकि यार literally हमें मतलब 3 मैचेस साथ में हमें कवर करना है अभी as things stand so right now City are trailing 2-0 to West Ham United away that is obviously more of a shock लेकिन Jared Bowen you can expect that absolutely or Fornals bhai that was a different ball altogether but not just that Chelsea women are playing Man City women that's 0-0 at the half hour mark really it's a cup that we need and like Shri ne bola about Lucknow and Rajasthan wahan par we need as RCB fan मैं बोल रहा हूँ when I say we not everyone there but absolutely we need RR to lose क्योंकि अभी इक्वल ऑन पॉइंट्स है क्विकली यहाँ पॉइंट्स टेबल भी देख लेते हैं बिकॉज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट सो लेट मी एक्चुअली शो द पॉइंट्स टेबल एंड एवरीवन यार गेट इन योर प्रेडिक्शंस स्पेशली द क्रिकेट फैंस क्योंकि मैच अभी शुरू होने वाला है what do you think about Lucknow versus RR what is going to be the difference maker what is going to be the score पहला बैटिंग obviously Rajasthan is doing so let's guess the score as well as we always do तो यहाँ आप देख रहे हो राजस्थान और आरसीबी इक्वल ऑन पॉइंट्स 14 पॉइंट्स आरसीबी के पास खाली एक ही मैच है वो गुजरात के अगेंस्ट एंड गुजरात ऑब्वियसली फर्स्ट मैच आई थिंक दे वन राइट फाइनली मैंने एंड नहीं देखा था हेमंत दे वन राइट गुजरात अगेंस्ट चेन्नई हाँ जीत गए वो लोग हाँ चलो नाइस है एंड
DC, KKR still with little bit hope, and Punjab for me is मतलब बहुत तगड़ी रही है. तो अगेन क्या स्कोर लाइन होगा, मतलब व्हाट आर यू प्रेडिक्टिंग हेमंत राजस्थान का? आई थिंक 185 to 190 के बीच में होगा स्कोर, राजस्थान पुट करेंगे. Okay. 185 to 190, that is what Matthew didn't बोलेंगे, will be competitive score. Who are your cricket watchers? Shrey, let's go with your prediction. देखते किसका सही रहता है. I think it will be around 170 to 175. चलो तो 5 ही है मार्जिन, तो 170 to 175. श्रेय बोल रहे हैं, रिमेंबर दिस पीपल, वी आर हैविंग पॉइंट्स इन द प्रेडिक्शंस. एंड ऑफ कोर्स हेमंत बोल रहे हैं 185 बोला है ना हेमंत ने, 185 to 90. या ठीक है, तो मैं जाता हूँ 180 to 185. मैं जा रहा हूँ फ्रीडम के साथ. ठीक है, that's what you're going. RR should win. Predicting RR win by 30 to 35 runs. Oh my god, come on, RR should not win. That's what I'm hoping. Lucknow also need a win technically. But yes, Nisham, Van Dusen वगैरह कुछ काम नहीं किया अभी तक. Yeah, fair enough. Van Dusen को इतना मौका भी नहीं मिला, to be very honest about it. आई थिंक भाई वेंकटेशन को अच्छे से यूज भी नहीं किया आरआर ने, वो भी एक पॉइंट है. Right. And I know यहाँ पर उदय is पंजाब फैन, तो उदय will definitely hope that पंजाब will come. मतलब टेबल आप देख रहे थे उदय, पंजाब ने पे लिया बैंगलोर को 2 दिन पहले. I think that's enough for the season. तो आई एम होपिंग कि यार it stays, the table stays as it is. यार सादिक भाई, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो भाई आईपीएल में? IPL में भाई I don't watch the IPL much, but I have a soft spot for RCB just because of Virat Kohli. Yeah, and Ankit as well, and Hemant as well. Let's put it that way. You can add that now. Van Dusen should have played at. Well, again, I agree with that. लेकिन वही है, मतलब it's a do or die match, so they have gone with what they've gone. Simply put, एक all-rounder की कमी है. Yeah, interesting. Yes, let's get up the likes. But यहाँ पर सिटी का मैच वापस शुरू हो गया नहीं? अभी हो गया ना? But honestly, पता है अंकित हो भाई, गया, if हो गया भाई. I mean, Uday is watching this City match with the most amount of interest. The least amount of noise and the most amount of interest. यार राजू सिटी was में saying Pep Voodoo. सादिक जी काफी अच्छा खेल रही है सिटी, मतलब ऐसे बुरा नहीं खेल रही है Who has बिल्कुल. literally witnessed his team win a treble. Look, I don't want to take I don't want to give the flag to Real Madrid fans, but हमारे लिए Real Madrid ज़्यादा easier opponent है सिटी के उनकी जगह. तो I think we should win the UCL. मुझे तो लग रहा है हम जीत जाएंगे. यार पता है, Finally. the issue is what I'm seeing Real Madrid do in all these games now. I've always said it. It's very reminiscent because I saw that team as a young 13-year-old. I saw that team win that treble, that United team. We were doing that sort of crazy shit in that season. I mean, हमारा तो मैच ही 80th minute के बाद शुरू होता था when we were trailing. We were like, we are trailing, yeah, or we are tied in a match where we have to win points somehow because Arsenal has just won points and Newcastle has won points. 80th minute में तो ट्रेल कर रहे होते या टाई होता था and we are like, okay, now अगर हम लीड कर रहे होते ना 80th minute में, हमें टेंशन होती थी कि यार लीड कैसे कर रहे हैं. 80th minute में we are trailing, we are like, okay, bring it on, no issues. अभी मैड्रिड फैंस आर लिटिल इन दैट डिलेमा, क्योंकि रोनाल्डो था जब उन्होंने लिवरपूल को फेस किया जब भी और हराया हमें. अब रोनाल्डो है नहीं है, तो आई डोंट थिंक, चलो बेंजेमा एंड विनिसियस आर एनीवेज वेरी लीथल एंड दे हैव स्कोर्ड सो मेनी गोल्स दिस सीजन, बट इररिस्पेक्टिव आई थिंक if Liverpool are able to maintain that good defensive approach on that high line also, ना तब तो हम ठीक रहेंगे मेरे हिसाब से. पता है सीन ये नहीं है. When we were going for the treble ना, the team we were facing was also going for a treble. That was Bayern Munich. Yeah. And Bayern Munich was steamrolling opponents like how Liverpool is right now. And the issue was, even when Bayern were leading 1-0 and they missed that shot, and I think Schmeichel had a very amazing save after the 80th minute. पता है, when they missed that shot, उनका एक shot crossbar लगा था, it was a point blank shot. And then it was like, okay, the issue right now with the way Real Madrid is coming back, even if you're leading by 2 goals after the 80th minute, the Liverpool fans would be on pins and needles if they see Benzema having a free run. For sure. And the worst part is, if he scores one, say you are still leading by 2 goals and you're up 2-1, and he scores one in the 85th. Yeah. I think Liverpool fans will be more freaked out than Madrid fans. For sure, 200%. अरे भाई, मतलब आई नो काफी लोग के एग्जाम चल रहे, तो आई टोटली अंडरस्टैंड मैन. राजू मास्टर, आप ओजी हो, मैंने डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी बहुत चीज में. कोई नहीं, मतलब जब भी टाइम मिले, definitely your priority is the first भाई. मतलब I won't want that, but again lot of people watching. I hope everyone has liked the stream. हाँ, काफी सारे चैनल्स का लिंक्स है नीचे.
भैया गोल हो गया, चेल्सी वुमेन का गोल हो गया। अरे 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 यस यस सैम केयर गोल सैम केयर गेट्स इट मैन। हाँ अच्छा मैं म्यूट था, सही है, ओके सॉरी, मैं बताऊं सिटी Yes, yes. ब्यूटीफुल गोल बाय Brilliant. ग्रिलिश। यार किसी ने गोल देखा प्लीज? क्या हुआ, सिटी का भी गोल गया? हाँ ब्यूटीफुल गोल। वो भाई साहब डिफ्लेक्टेड गोल है शायद। सिटी का भी गोल हो गया। मैं डेविड बोला तो मैं सोचा नहीं मैं यस यस आई एम वाचिंग इट नाउ। ज़ूमा अभी तो क्लियर किया था। डिफ्लेक्शन भाई जैक ग्रिलिश। अरे डॉसन हाँ का हुआ है ये डॉसन ये हमेशा क्रेग डॉसन ही डालता है टांग ना अपने बीच में, कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट हो गया। फर्स्ट गोल ही पहला गोल ही पड़ने वाला था उनको फर्स्ट हाफ में। चलो कोई नहीं, इंटरेस्टिंग होगा, वॉक ओवर, लेट्स सी what is Marcus Stoinis' best batting position. I believe Marcus Stoinis' batting position best is in top 3. He's lethal when it comes to the, and आप देखते हो Big Bash में, you know, whenever he kind of is promoted, he does excellently well, and even for Australia, like he's worked very well for me. अरे भाई एक और होने वाला है यहाँ पर, सिटी का एक गोल। अरे City are demeaning business. We probably reacted too early. भाई प्रॉपर स्ट्राइकर गोल था, क्रॉस आया ऑनटू द फार पोस्ट और सीधा अंदर। इट वाज अ क्रॉस मोर देन द गोल, मतलब द क्रॉस वाज परफेक्ट राइट एट द एज ऑफ द फार पोस्ट। यस राहुल यहाँ पर यार स्कोर अपडेट देते हुए थैंक यू वेल। मैं एक्चुअली क्या सोचा था ना कि चलो वेस्ट हैम मैन सिटी जीतेगी, चलो, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच आज, होपफुली दे विल विन फॉर सिटी सेक और रादर यू नो शो बी मोर श्योर ऑफ द टाइटल। और सेकंड हाफ होते ही वील स्विच ऑन टू द लखनऊ आरआर गेम। लेकिन अभी ऐसा चल रहा है ना, दोनों ही इंटरेस्टिंग है, एंड चेल्सी वुमेन भी चल रहा है वहां पर, दे आर लीडिंग। सो ब्रिलियंट क्रॉस था यार, बहुत ही बेहतरीन क्रॉस था। ये कौन है, ये ब्राइट कौन है आप लोगों की प्लेयर? यार अगर ये ड्रॉ भी कर लेना सिटी वैसा, मैं देख नहीं पा रहा भाई सादिक भाई, तब भी लिवरपूल के पास चांस होगा अगर आर्सेनल भी ड्रॉ कर ले, बट दैट इज बीइंग टू एम्बिशियस। Two draws and two draws by City and 2 wins by लिवरपूल। यार ये किसी को मालूम है पैनल में कि इंडिया में कहाँ आ रहा है मैच चेल्सी वुमेन का? प्लीज प्राइवेट चैट में मुझे लिंक भेज दीजिए, आई कैन एटलीस्ट वॉच इट साइड बाय साइड इफ यू नो, नहीं तो ठीक है, मतलब आई विल मैनेज इट। सिटी गोल, नाइस गोल, यस एब्सोल्युटली, 2-4 इन द फर्स्ट ओवर। यार कोई लिवरपूल को प्रीमियर लीग जितवा दो भाई, आप कल ही एक कप जीते हो, तो लालच बुरी बात होती है, लेकिन दैट इज द मेंटालिटी इज यू नो फैंस यू वुड वांट ऑब्वियसली। Okay, came after playing cricket with my friends and am I watching the quadruple happening? Well, quadruple का तो पता नहीं, यहाँ पर 4 मैच का watchalong जरूर मिल जाएगा आपको साथ में। उतना तो गारंटी है आपको। अंकित भाई, if Liverpool is able to pull out the league from this situation, I mean फिर वो शायद UCL भी निकाल ही लेंगे। वो होता है ना, वो एक टीम ऑफ डेस्टिनी होती है जो, बिल्कुल, it will be two teams of destiny going up against each other अगर लिवरपूल यहाँ से लीग टाइटल निकालती है। और अगर हम क्वाड्रुपल जीत गए ना, आई डोंट थिंक जीतेंगे, बट जीत गए तो फिर दिस विल गो एज द ग्रेटेस्ट लिवरपूल टीम इन द हिस्ट्री। अरे it will go down as one of the 3 greatest teams in my book. The Barca teams, the Barca early 2010s, all over आप बोल रहे हो, Milan 90s and this one. पता नहीं यार, मे बी मैं अभी वही है ना, अभी जख्म थोड़े रीसेंट है तो मैं अभी नहीं बोलूंगा, मे बी आई रिएक्ट ऑन दिस लेटर ऑन। लेकिन सादिक भाई हैज अ पॉइंट ऑन लिया। एफए प्लेयर मैंने ट्राई किया था सूरज भाई, लेकिन अंकित भाई, there are certain things, ये होता है, it depends on what all you have। FC the family to win the league with a 100% win record here. Yeah, has City won a trophy this season? अभी तक नहीं ना? City has not won anything. No, City hasn't won. There's a high likelihood they might, मतलब ये जो आज हो रहा है इसके बाद they might go trophy. Failure होगा बहुत। At least we United fans will have to say we have the same number of trophies this season. बट ये गाब्रिएल हीजूस भी 40 मिलियन पे बहुत बड़ा बार्गेन है यार, जैसे अब खेल रहा है एकदम से इसका फॉर्म आया है पिछले 2 महीने में, मतलब अलग ही खेल रहा है। ही इज ऑक्यूपाइंग दोस वाइड स्पेसेस एंड गेटिंग इनवर्ड ना, ही इज गेटिंग वेरी डेंजरस। ही इज प्लेइंग बेटर देन साला टू बी ऑनेस्ट इन द पास्ट 2 months। अच्छा, Real Madrid to 2017 सादिक भाई, I wanted to ask a Liverpool fan only. कल जब मैंने लुइस डियाज का गेम देखा, क्योंकि अभी तक तो लुइस डियाज यू आर गेटिंग हिम फॉर द लास्ट 35-40 मिनट्स, लेकिन लुइस डियाज मोर देन 40 मिनट्स अभी तक नहीं आ रहा था गेम में। एक आधा गेम आया था बीच में, दैट वाज अगेंस्ट एन इंफीरियर ऑपोजिशन। What I saw was first half
maybe 30-35 minutes, so he had Liverpool on the ropes basically. Liverpool, I mean, Luis Diaz was playing with the defense. But uske baad I saw him getting tired, getting fatigued, and especially once Reece James started putting attacking pressure on him. So then he started getting found out a little bit. I felt that after 35-40 minutes, you sort of figured out once Luis Diaz's stamina sort of started going down a little bit. True, but you know what happened was when he was not able to create that overlap, he was getting into central positions. For ball literally horizontally pass भी कर रहा था नीचे. तो मतलब contribution wise देखें तो काफी best player तो मेरे लिए लुइस डियाज ही रहेगा क्योंकि attacking output उसकी तरफ से ही आ रही थी. साला injure हो गया था. अब साला की तरफ से मतलब obviously his dribbling succession is something it pushes the defense behind. मेरे हिसाब से तो लोग कह रहे हैं जोटा का गेम अच्छा गया. मुझे तो जोटा का गेम पसंद आया ही नहीं है बिल्कुल भी. उसके बाद जब बॉल आ भी रही थी, the ball wasn't looking very comfortable with the ball. जोटा का गेम अच्छा था, उसका फाइनल उसका ना बॉक्स में काम नहीं हो रहा था जो करता है यूजुअली, वो उसका मिसिंग था कंप्लीटली. हां, फिनिशिंग तो दोनों टीम क्विक अपडेट यहां पर क्रिकेट फैंस एंड ऑफ कोर्स पैनल एज वेल वाचिंग. बटलर इज आउट, आवेश खान गेटिंग द विकेट. मतलब पैनल जो प्रेडिक्शंस किए थे हेमंत एंड श्रेय, डू यू थिंक दैट प्रेडिक्शंस आर गोइंग टू बी रॉन्ग नाउ कंसीडरिंग बटलर जल्दी आउट हो गया? मैं तो स्टे करूंगा. नहीं, I'm not giving it the opportunity to change anyway. मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ कि do you think it's going to be very far off or not? नहीं पहुंच जाएंगे. They will easily reach 170. पहुंच जाएंगे. चलो देखते हैं. मतलब अश्विन बटलर का फॉर्म भी तो देखो ना भाई, क्या एकदम से डिप हुआ उसका फॉर्म. हाँ, you can say that. मतलब वही है. मतलब I don't know again. मतलब other people also watching the panel, pretty sure आप बटलर को इंटरनेशनली भी देखते ही हो. मतलब where would you rate Butler यार? मतलब मैं काफी लोगों से पूछा हूँ in terms of T20 cricket. मतलब he is someone who can really bat anywhere in the order ना. Firstly, what is his best position and where would you rate him just as a white ball player? Anyone? Top 5 तो मेरे लिए है वो. पहले से ही मैं बोलता था top 5. White ball. Top 5 तो easy है बोलना, लेकिन वही है मतलब easy has he reached that ABD level? जो नहीं, ABD तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा कभी. Fair enough. यार बाय द वे मैंने देखा था मटाटा यूनाइटेड आपका कमेंट, सादिक भाई ने भी देखा होगा, लेकिन यार इट्स अबाउट ओपिनियंस. Sadiq bhai has his opinion, we respect his totally and we respect your opinion. Probably I have a different opinion altogether. And वही है मतलब at the end of the day if the team is good, the team is good. So I don't think it's unfair to say, मतलब that's again my opinion, Matata United, and I respect you because you have been following the channel very much and supporting it. लेकिन वही है कि यार अगर आपको टीम दिखती है अच्छी है तो आप उसको प्रेस करो ही यार, as much as it pains. I'm pretty sure Sadiq bhai it's paining you to say it, लेकिन it is one of the better teams in reality. नहीं मेरा तो बस चले तो I don't want Liverpool and City to win anything. Exactly. But then one of the best. भाई देखो I had Liverpool friends in school who were Gerrard supporters and I had friends who loved Michael Owen. Because when I saw football, Michael Owen was a 16-17-year-old guy who had just started coming up, and I saw him in that 98 World Cup when he became a sensation against Argentina with that goal. So I had friends of mine who are Michael Owen stands to this day. But they feel that had Owen not been injured, आप और किसी striker की बात ही नहीं कर रहे होते इसको. He was that good at Liverpool. And when he was the youngest, that is the time they won the treble also. Yeah, that cup treble. Or how we call the United, and we call that the suspended. Rahul, thank you for updating this. ये क्या हो गया? अरे 1-1 गड़बड़ हो गई ना. और लीग भी हमने स्लिप कर दी थी अपनी पोजीशन उस टाइम. We should have won the league also. People, Chelsea women won, Man City women won. अरे यार league, you guys could not have pulled it out. That United squad of the three-peat, the first three-peat was a different mentality. Second half, 42nd minute goal by City. 44th minute चल रहा है यहाँ पर Chelsea women Man City. Don't tell me again good extra. अरे गोल मार दिया, हाँ गोल मार दिया City ने. Now City is again on the front foot. क्या हुआ? गोल हुआ? बताओ. Yeah. I know that there are multiple things happening, so we'll try and follow one particular person on the panel. But yeah, brilliant conversation because यहाँ पर इतने सारे मैचेस होते हैं ना, मतलब कहीं से कब हो जाता है पता नहीं लगता है. But what we are also going to do साथ में मैंने actually उस्मान भाई के स्ट्रीम में किया था. I think Sadiq भाई was there. But मुझे मौका नहीं मिला to be part of that Premiership 11 in that particular thing. तो मैं यहाँ Premiership क्योंकि मैच चल रहा है. I would like to ask the panel. चलो आपका अलग पैनल है, so let's have a Premiership 11 side by side और साथ में रिएक्ट भी करेंगे. तो what formation यार
4-3-3 because City और Liverpool खेलती है. I think 4-3-3 is the predominant formation also these days in the Premier League. I mean, most teams 4-3-3 most common come one out with also. some hybrid version of a 4-3-3. ठीक है तो वही करते हैं. तो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट. कहाँ से डेविड? विल प्रॉब्ली गो पैनल बाय पैनल. ठीक है, अब देखते हैं मतलब ईच और देन विल सी द वोट्स एंड चैट. आप भी बोलिएगा यार. यहाँ पर वी आर डूइंग EPL 11 अभी ऑफ दिस सीजन बेस्ड ऑन फॉर्म ऑफ द सीजन. ओके ठीक है, तो विल प्रॉब्ली टेक वोट्स. या तो इन गोल डेविड गो अहेड. I think it has to be Sa for me. Wolves. I think what he has done this season, and he's been an absolute bargain also for them, because to come in and fill in Patricio's boots, who has been doing such a good job for them for so many years. I think and possibly in the national team also he will. Exactly, yeah. So I think over performance, I would go with, of course, you have Alisson and all who have more clean sheets and all, but that's also because of the players that they have ahead of them also, right? But I think for Wolves, I think Sa has been unbelievable. Yeah. So and by the way, yes, breaking news quickly. Yes, it's Sanju Samson as number 3, not Ashwin. Or a lot of people said that that'll be the case, और वही हुआ है. Yes, 171 vote, but only 110 likes. Let the likes get up to 200. Let's get there. Pradeep is saying Alisson. So yes, obviously, there are a lot of nominations there. आप जानते ही, the people who have done well. I'm pretty sure most of the panel follow EPL very closely. Shrey, आपके लिए you're going with Sa, Alisson, or maybe Mendy? No, not really. Or Edison. Edison technically is as good as Alisson on stats. I think for clean sheets, I think Alisson and Edison are tied, I believe, at 20 clean sheets, both of them. And I think now City have conceded 2 goals. I can see Alisson winning it. And for me, Alisson is the best keeper for me right now in the world, the most all-round keeper. अरे अभी City concede किए उससे थोड़ी दोगे भाई सीजन के लिए. But Alisson, for me, it should be Alisson. He's one of the best shot stopper, one of the best sweeper keeper. He can save penalties. He can commanding the box, has the leadership qualities. I don't think there's a better keeper. Again, recent bias कल रात के penalty को मत याद दिलाओ, please. लेकिन great point absolutely. Shrey as always. So Shrey has gone for Alisson. David has gone for obviously Jose Sa. Sadiq bhai. I've been saying it since the beginning of the season. It's Alisson. It's Alisson because people don't give a credit to one thing. They say ball playing, okay. They say his clean sheet numbers, ठीक है, वो Liverpool की वजह से आता है. People are praising Virgil van Dijk so much. I feel Virgil van Dijk has been that level of centre back because Alisson prevents so many. We talk about De Gea shot stopping. We talk about Jose Sa shot stopping. उनको वो शॉट पड़ते हैं. अगर आप एलिसन को गोल कीप करते हुए देखो ना, वो शॉट बनने ही नहीं देता. Sometimes the key is you have to, आप अपने बॉक्स से बाहर आके कितना there's a stat which no one will has a look at it. That is number of defensive actions outside the box by a goalkeeper. Alisson leads that category by a country mile for the last 2 seasons, not just this season. मतलब उसके करीब ही एडरसन नहीं आता. एडरसन इज अ सेकंड इन दैट. गोल स्कोरर है भाई. एडरसन असिस्ट करता है, एलिसन गोल स्कोर करता है. भाई एक और पॉइंट है यार, देखो जिस गेम में लिवरपूल 1 गोल मार्जिन से जीती है ना, उसमें एलिसन ने सेव की है. Yeah, that's so he has attempted so many saves. उधर द वे ही प्लेज ना, वो शॉट बनने नहीं, कितने दफा ऐसे पासेस होते हैं मैंने लिवरपूल के मैच में देखे, बिकॉज़ आई वॉच यूनाइटेड ना, तो मुझे पता है कि इसके बाद शॉट आएगा, ये पास ऐसा निकला है, शॉट आएगा. लिवरपूल के मैच में तो शॉट बन ही नहीं रहा होता, बिकॉज़ एलिसन उसको आके इरेज कर देता है दैट अपॉर्चुनिटी को. दैट इज वन थिंग व्हिच ओनली मैनुअल नॉयर and Peter Schmeichel as goalkeepers I've seen have. And for a small stretch, Gigi Buffon used to do that in his early Juventus days. Okay. Buffon, man, yeah. I can relate to that very well in fact. But undisputedly, as a Liverpool fan, I have seen this कि हाईलाइन हमारी इतनी बारी एक्सपोज हुई है सीजन, और तब एलिसन ने ही हमारी जान बचाई है, चाहे शॉट बन रहा हो ना बन रहा हो, but his shot stopping is also underrated. People don't rate his shot stopping, but he's always saved goals for Liverpool every game and game. In terms of शॉट स्टॉपिंग का एक स्टैट होता है XG minus the actual goals that you concede. De Gea is leading that like at godly numbers right now. He is at +8 or +9 goals per 90 minutes that he saves for United, that United should have conceded. The next best, surprisingly, is Alisson, who is at +4. Right. For the amount of goals that XG that he conceded, obviously, I think.
लिवरपूल के नंबर्स कम रहते हैं। हाँ, तो अब ये नंबर गेम पे आ जाती है सादिक जी। एंड में ना ये प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड फेस अराउंड आई थिंक 4 goals in terms of the chances that have been created, 4.0 or something, if I'm not wrong, 4.5 or 4.0 on an average. So I think that is where De Gea's number go up. But again, it's all because of De Gea कि United के इतने गोल बचे हैं इस सीजन, और जो गोल डिफरेंस एक का बनाया है वो नहीं तो माइनस में ही चले जाता। तो obviously I think De Gea is he deserves a shout out. अच्छा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है बाय द वे गौरव, पहले आपको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। एनीवन इन द चैट, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिंग अप योर क्वेश्चंस। मैं स्टार कर रहा हूँ, इफ इट इज रिलेटेड टू द टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं हम लेना चाहेंगे सर्टेनली। एंड या इस चैनल पे सुपर चैट का ऑप्शन नहीं है तो मैं वो बोल भी नहीं सकता, तो सर्टेनली मैं देना चाहूंगा एज मच एज पॉसिबल। हैविंग सेड दैट, मतलब अगेन व्हेन टू पीपल आर कन्वर्सिंग, प्लीज वेट टिल द कन्वर्सेशन इज ओवर, और बेसिकली इफ दे देमसेल्व्स वांट टू स्टेप इन, यू नो, दैट इज व्हाट वी फॉलो इन द चैनल. So that is why I am going to be addressing this to Sadiq bhai because we are talking about David De Gea. Sadiq bhai क्या रहता है पेनल्टीज में जुड़ी? ओह भाई हो गया। नहीं, इस सीजन तो उसने रोकी है, आई थिंक 2 या 3 आई थिंक उसने शायद रोकी है जनरली, लेकिन एक जनरल परसेप्शन है ना कि यार he is not as good as all that stems mostly na from the last year's Europa League final. But then last year's De Gea was completely out of form. मतलब last year's De Gea was not the best De Gea that you have seen. क्या ये मिस कर दिया भाई, देखा एंटोनियो ने ओपन, मतलब should he have done the eyes to Edison? He could have taken it wider. Waited for someone in the other channel, उसको horizontal pass देता है फिर वो मार सकता है, पता नहीं क्या कर रहा है। चलो जो भी है। अगेन यार भाई अनिकेत, आपका क्वेश्चन मैं स्टार कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज नॉट रिलेटेड टॉपिक। अभी हम कर रहे हैं प्रीमियर लीग 11, और हाँ हेया मैंने आपका कमेंट देखा है, हम वी विल कम टू UCL 11 आल्सो। मतलब इट्स अ मैराथन स्ट्रीम भाई, मतलब वी विल हैव लॉट ऑफ टॉपिक्स, और आपके पास है इंटरेस्टिंग टॉपिक, वील पिक अप दैट इन बिटवीन। लेकिन हाँ हेमंत भाई सॉरी, लेकिन मेरे ख्याल से ऑलरेडी, अरे भाई ऑलमोस्ट गोल हो गया हमारे इसका, लेकिन ऑलरेडी मेजॉरिटी पैनल का तो एलिसन के साथ है। 3 लोग एलिसन के लिए मेरे ख्याल से गए, राइट श्रेय? आप भी एलिसन के लिए गए थे, राइट? हाँ तो ठीक है। तो Jose Sa, Ankit bhai, just to add about Jose Sa has been pretty decent this year, but due to that little error he's also been replaced in the Portuguese squad now. It's Diego Costa who's taken up the squad. Costa. And probably by next season you will find this keeper Maximiano. Maximiano of Granada will probably also leapfrog Jose Sa. I didn't know he's Portuguese. Fair enough. But his overall distribution, I don't like his distribution either. मैंने Bulls की इतनी games देखी हैं, पर 90 उसका distribution में इतना खास, second half season में खास नहीं लगा, first half मैंने देखी नहीं Bulls की। उनका गेम ही नहीं ना उदय भाई, वो उनका गेम ही नहीं है, तो for their game Jose Sa is a proper David De Gea kind of a goalkeeper है। Traditional. Correct. मैं तो यार again मैं तो like I think Sadiq bhai did see that stream, तो in the beginning I had kind of picked David De Gea just for the sole reason that he has kept United in games literally, मतलब इतने सारे games जो हुआ था in previous years, and that is why I actually went for David De Gea. But it looks like myself and David are going to be outvoted. Again, people in the chat, आप बोलिए the keeper of the season for you who has been in the Premier League. Costa's ability in the ball is what Portugal needed, I feel. Fair enough. I'm a City fan and I agree that Alisson is the best goalkeeper right now. Interesting. तो काफी लोग Alisson ही चाह रहे। Till the time I think Hemant ka internet is up and down, so let's see. We'll get him back as soon as the internet is up. What a player Mahrez, absolutely. Yeah, Rajesh, मैं स्टार किया हूँ आपका क्वेश्चन। I have started your question. Okay, चलो ले लेते यार, मतलब बाकी लोग सोचेंगे हमारा क्वेश्चन भी ले लेते बीच में, बस वही है। I have started, but because we are in between 2 positions now, Sadiq bhai, can you explain the ranks at Barcelona from top to bottom, like first team Barca B? Sadiq bhai, would you be able to do that, please? It's just that the cadets are basically, they are the academy graduates who are currently playing in La Masia. But then Spanish football has a tier के भाई वो आपको allow करता है कि आप certain number of अगर आपको कोई need हो तो आप उनको भी लेके आ जाओ जो आपका academy graduates हैं, या फिर आपकी B teams होती हैं। The B teams play in the lower tiers of क्या बोलते हैं Spanish football, and at times they also get promoted and they come up to the second level, but uske aage they cannot get promoted. There is a certain regulations like that. Otherwise you can have Real Madrid B or the Real Madrid Castilla team playing in the La Liga along with Real Madrid itself. So then there will be a conflict. In fact, it has happened once. There was I think Copa del Rey final back in the history that happened between Castilla and Real Madrid.
Wow. Something of that sort. Interesting. That sort had Interesting happened previously. I mean, a few decades or so back. Interesting भाई, मतलब that is, there is an argument ना सादिक भाई, मतलब even in the Premier League, a lot of teams के PL2 teams will be far better than maybe a Norwich जो आती है. There is an argument of Chelsea की basically Cobham team is far better, so why not, you know, as in you have them also in the zone and can, you know, get them promoted. Goal, City scored. Oh shit. अरे भाई मैं जैसे चेंज करता हूँ चैनल गोल हो जाता है. Mahrez is it? City scored. David? I don't know. I just seen the ball go. Yeah, it's Mahrez. Yeah. I think. Ankit bhai, if that's the case now, Free kick. Ankit bhai, if that's the case, उदय ने आपका टीवी रिमोट खुद ही रख लेना अपने पास. अब अगर एक और गोल कंसीड कर दिया उन्होंने, गेम ओवर है. अरे कोई नहीं राजेश, मतलब अरे again, उन गोल हो गया. other people will come to your questions, don't worry, गोल मैं हो कोई गया. partiality नहीं कर रहा. यार ये सिटी कितने Oh, चांसेस अरे goal, yeah. उन्होंने लेकिन बढ़िया Own बढ़िया goal, own free goal kick है. था यार, काफी बढ़िया. He had to play ना, he had to play that ball. He couldn't have, because behind him भाई he didn't know him. पेप तो पागल हो गया पूरा. पेप को क्या हो गया हाँ, भाई? एकदम. पेप को क्या हो गया भाई? अरे anyway, पकड़ा thanks गया David for पूरा. letting us know. लेकिन मैं वहाँ बोलने वाला 5 ओवर में 34 मारिया राजस्थान ने और डेविड इज लाइक गोल. भाई ओन गोल गया. Now I But think it's जैसे City's game to win. तूफान लास्ट सीजन खेल रहा था ना, अब इस सीजन ऐसा खेल नहीं रहा बिल्कुल भी. तूफान बहुत सॉलिड था, जब से इंजरी से वापस आया ना, थोड़ा ही इज बीन हॉट एंड कोल्ड. अरे कूफाल क्या मतलब स्ट्राइकर खेल रहा था क्या? परफेक्ट हेडर मारा है उसने अंदर. भाई मैगवायर से कंपटीशन है पूरा. यार जुफाल नहीं, मैगवायर से मुझे तो कोई अच्छा लगता है, competition नहीं है भाई. आई रियली लाइक द गाय, बट एनीवे इट इज व्हाट इट इज. अभी क्या कर सकते हैं. निकाल ले जाएगी सिटी लग रहा है. बाप रे, या. सिटी निकाल जाएगी. जिस तरीके से खेल रहे हैं ना, ये निकाल जाएंगे इसको. चलो कोई नहीं यार, आपका भी एक था गौरव, मैंने स्टार्ट कर दिया, मैं हम लेंगे यार. वी ट्राई टू मूव ऑन विद द सब्जेक्ट. तो आप भी बोलिए गौरव, आपके लिए कौन है, मतलब हु इज योर गोलकीपर ऑफ द ईयर इन प्रीमियरशिप. वी ट्राई टू हियर फ्रॉम यू, एंड ऑफ कोर्स मैंने स्टार्ट किया है थॉट्स ऑन रियल मैड्रिड. वी विल अगेन कम बैक टू दैट. यस, जयसवाल मार रहा है, इज इन गुड फॉर्म, बट मूविंग ऑन, आई थिंक मैंने ऑलरेडी कर दिया है. गोलकीपर इज एलिसन, बिकॉज़ चैट और पैनल एलिसन से जा रही है, तो नो पार्शियलिटी देयर. हेमंत, एनी क्विक वर्ड्स. मैंने आपके पास आया नहीं, आई नो बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस. भाई मैं भी ऐसा नहीं लेने वाला था. आई वांट शाउट आउट टू डेविड या. उसका मुझे एक ही प्रॉब्लम लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन. शॉट स्टॉपिंग कर देता ना, वोट 2 वोट हो जाते एटलीस्ट, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता. नहीं भाई, उसका शॉट स्टॉपिंग मेरे हिसाब से बेस्ट इन द प्रीमियर लीग. लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अगर ओवरऑल देखें, देन एलिसन इज वे क्लियर ऑफ एवरीवन इन द प्रीमियर लीग ओनली. कोई नहीं, सादिक भाई इज ऑफ फॉर नाउ, होपफुली जॉइन बैक. I think it's probably the internet issue again. But again, yes, West Ham, Man City 2-2, like I said, they came back. Yes, राहुल ने बोला था, absolutely. और हम आएंगे यार, JSK आपके भी आएंगे. We are discussing team of the season in Premier League right now. And we'll do UCL as well. और बीच में आप अपने वोट्स भी दीजिए. भाई no doubt Alisson, but Ramsdale अच्छा किया है. Okay, Ramsdale good shout यार. गौरव अच्छा shout है. David Dea, definitely. Krishna, यार you're late. When I was saying David Dea, प्रॉब्लम क्या होता है ना, चैट में 2-3 लोग David Dea बोल देते हैं ना, तो बाकी लोग भी चल जाते हैं. I know it होता है. But again, Alisson यार, I have to give it to the guy यार. मतलब वही है, अभी खाओ बहुत ही फ्रेश है, तो उदय इज लाइक नहीं यार, ये लिवरपूल है इसलिए नहीं बोल रहा है बंदा. लेकिन अरे यार, why would you select a traditional keeper over a modern day goalkeeper who also can be a part of the, you know, मैं बूढ़ा हूँ, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ. ये यहाँ पे लिवरपूल बायस कोई नहीं है. I'm not here with an agenda, but आप अकेले बूढ़े नहीं हो. नहीं मैं हूँ नहीं भाई, मैं I didn't mean it. मैं not बूढ़ा, but anyway. लेकिन उदय, I have to give it to Alisson, bro. I was just joking. Come on. मैंने कल भी बोला था यार, anyone for. नहीं, आपने कल बोला था Mendy better है Alisson से. Mendy last year better था. Last year लेते तो मैं लड़ लेता. Last year. This is a shout, huh? This is a shout. 100%. Short side. This is a shout. हम उस पर भी आएंगे. हम we come to UCL. मतलब if any goalkeeper who's close to what Alisson is doing right now is Mike Maignan. I honestly Keeper feel of the Hugo season. Lloris should not be the number 1 in France right now. Fair enough. Good point. Current good form, point. Mike Maignan has to be the number 1 in the French team. Fair enough. And yes, again, fire.com, I have started your question. The topic now is team of the season in Premier League. So let's move on. You know, I have to put that banner actually. Let's put it actually. Then तो मैं बार-बार एक सेकंड में रिपीट करते रहूंगा. Meanwhile, let's move on to left back. 4-3-3 खिला रहे हैं. डेविड, इस बार उल्टा जाएगा थोड़ा फेयर करने के लिए, तो सादिक भाई आप शुरू करिए. ओके, क्या दोनों फुल बैक्स बताने हैं या राइट एंड लेफ्ट बैक चलते पहले. लेफ्ट बैक एंड्रू रॉबर्टसन.
I kind of knew it. So मतलब again, Yeah. I agree. the five first. But Andy Robertson is, in my opinion, right now. I mean, people will think I'm not a United fan. I've suddenly turned into a Liverpool fan. Exactly. But Andy Robertson, in my opinion, is the most complete full. और ये नहीं है कि मैं right पे Trent बोलूँगा. I don't. Trent and Cancelo have got those numbers because they play in a certain system, in a certain style, which you cannot play in any team. Andy Robertson is a left back. आप उसको किसी भी टीम में डाल सकते हो. He is the most complete fullback alongside Reece James at the moment. Reece James, he missed games. Otherwise, alongside Reece James right now, he's the most complete fullback in world football. Thank you for saying it. नहीं अच्छा लगता है यार सुनकर. मतलब अगेन हम अभी काफी लो पॉइंट पर है. सादिक भाई knows it यार. तो एनी काइंड ऑफ things which come to a Chelsea, और मैंने स्कोर भी डाल दिया. बाय द वे स्कोर चेंज करना तो बोल देना भाई. यहाँ पे एक चीज सादिक भाई आप बोल दीजिए, फिर मैं बोलता हूँ. कोई नहीं, बस हो गया, आप बोलो. हाँ, मैं ये देख रहा था चैट्स में बहुत ज्यादा कैंसेलो आ रहा है. मेरे को एक उसका 1-on-1 डिफेंडिंग उसका बहुत वीक लगता है मुझे, और वो रेयरली बहुत कोई भी बात करता है उसके बारे में. तो क्या लगता है आपको? आई थिंक उसका यही वीक पॉइंट है, इसलिए मैं भी रॉबर्टसन के पास जाऊंगा, वरना मैं भी कैंसेलो बोलता. उसका 1-on-1 इज नॉट गुड इनफ. करेक्ट. सो आई थिंक सादिक भाई आप बोलिए पहले. Cancelo is not a natural left back. He's a right back converted into a left back. Yeah. तो उसका जो डिफेंसिव एक्शंस जब वो करता है ना, उसका जो बॉडी वो अगेन क्या मार दिया सिटी ने. गोल होना चाहिए था. भवन का हैट्रिक होना चाहिए था वहां. अरे यार, भवन का हैट्रिक होना चाहिए यार. अरे उसका जो बॉडी मूवमेंट है ना कैंसेलो का, वो नेचुरल बॉडी मूवमेंट है ऑफ अ राइट बैक व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग. आप ट्रैक बैक तो उसी तरीके से करते हो जिस तरीके से आप फुटबॉल खेलना सीखते हो. तो वो राइट साइड पे डिफेंड कर लेता है, लेकिन लेफ्ट साइड पे ना ही समटाइम्स अपीयर्स अ लिटिल shaky, जहां पे having a guy like Rodri helps him out a lot. Because probably his whole career he's played as right back, no? And now in the last couple of seasons only he's been... Yeah. Cancelo का थोड़ा कम है. Cancelo का थोड़ा कम है as compared to what Trent is. क्योंकि Trent का अगर आप देखो, जिस मैच में आपको लगा ना Trent defensively shaky, उसके second half में Liverpool has made an adjustment. They have gotten Fabinho to track back for this one for Trent, Henderson to take their central midfield role, and Trent to just tuck in a little bit with Matip or Konate also giving them secondary cover. So this has been the Liverpool game plan whenever they have found कि भाई, you will see that in the Champions League final. Even yesterday Trent was going so much in the midfield, and you could see who was playing in the midfield. There was so Keita and all, they were coming behind, they were taking his place. Actually, that's why Thiago yesterday was not as visible, because Thiago, without Fabinho, Thiago was tasked with that holding responsibility while Henderson covered for Trent. Okay, everyone here, I think this man deserves a round of applause, even if this guy is one of my rivals teams ka captain. Mark Noble playing his last West Ham game, yaar. Guy, very few in the EPL have been there through the club, man. This guy respect, man. Definitely this guy deserves the respect. Yes, Rahul, thanks for the update on the cricket, but yes, big up to talk MU. और मैंने डाल दिया, लेट्स पिक EPL टीम ऑफ द सीजन. अभी हम लेफ्ट बैक पर है, तो अगेन 2 वर्ड्स आ गए. जहां तक मुझे लगा फ्रॉम द वर्ड, आई थिंक हेमंत आप कैंसेलो के साथ जा रहे हो. रॉबर्टसन. अरे यार भाई, चलो मैं बीच में डाल देता हूँ अपना, क्योंकि इससे पहले और एक बार आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट उदय है यार. डेफिनेटली कैंसेलो होने चाहिए, ये कोई डाउट है ही नहीं. सॉरी सादिक भाई, सॉरी हेमंत, मेरा ओपिनियन है. आई फील दैट कैंसेलो, हाँ आप डेफिनेटली बोलोगे रॉबर्टसन इज द ट्रेडिशनल वन. आप दिखता नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ व्हाट ट्रेंट डज ऑन द अदर साइड, यू डोंट सी एज मच वर्क दैट रॉबर्टसन डज. और जो कंसिस्टेंसी इस साल किया है, दैट इज अ डिफरेंट लेवल. आई एग्री, नथिंग अगेंस्ट रॉबर्टसन, नथिंग अगेंस्ट लिवरपूल अगेन, लेकिन मैं वही बोलूंगा, कैंसेलो व्हाट ही हैज डन being a left back, I think whenever he has not played for City at left back, City has missed so much, whereas Robertson nahi raha hai. I know Simicas has been a great backup, credit to him, lekin wohi they have not missed him as much. So I think Cancelo, again, if I am putting the team of the season, for me Cancelo brings much more to a team than what Robertson brings, based on this season's form. Or even for City, I think he is one of the first names in the team sheet, someone who can really fit in well the way they play. So I am strongly saying Cancelo has to be there. मतलब he is arguably, again, आप लोग बोले ये क्या फूक कराया, ये मैं बोलूँगा arguably player of the season ही बोलूँगा मैं. चलो यार, लेकिन अगर हम लोग टीम ऑफ द सीजन बना रहे हैं
और अगर कैंसलो लेफ्ट बैक पे खेल रहा है तो वो डिफेंसिव ड्यूटी भी तो होनी चाहिए ना हाई पे. अब राइट बैक पे उसको बोल दो. अरे नहीं करता वो, कौन बोला नहीं करता भाई, कम ऑन. नहीं, रॉबर्टसन इतने नहीं करता ब्रो. You should check the defensive per action. Sorry, defensive action out. Far better. Robertson is far better in defensive attributes, लेकिन it's the combination I'm seeing. Case in point, the क्या बोलते हैं, the second game between City and Liverpool, the second half adjustment that Liverpool made, they found that Kyle Walker उधर बहुत ज़्यादा overpower हो रहा था. Robertson then started engaging him in the second half, which then opened up Trent. मतलब what Robertson brings to the team is not visible on the score sheet and on the stat sheet. मैं वही पॉइंट बोल रहा था. I agree with that point. लेकिन वही है, मतलब एक recency bias भी होती है सादिक भाई. Cancelo the first 6 months that he had, he was the player of the season. Period. Technically भी अच्छा नहीं है वो. Only his work ethic is what makes him brilliant. That's all. Technically नहीं. Technically, I would disagree there. Cancelo is a very technical player. No, I'm talking about Robertson. Robertson is not a technical player. But work ethic is amazing. उनको मैं मैसेज करना भूल गया. प्रणय आ जाइए क्योंकि we have a Liverpool fan in the panel, तो एक फेयर नहीं रहेगा. I need to have. भैया रियलिस्ट का रन देखा क्या आप लोग ने? अरे भाई मैं लिवरपूल बायस दिखा नहीं रहा हूँ, यहाँ कोई एजेंडा नहीं है. मैं कैंसेलो चाहते हो कैंसेलो डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं मैं डालना चाहता, मेरे से नहीं होता भाई. United fan for over 2.5 decades is saying exactly. Nikhil has a point. Nikhil has a point. Great point that. लेकिन again, बाकी लोग बोलिए. 56 people watching. 56 people watching. Hopefully everyone has liked the stream. More people come on. आपके भी वोट्स डालो. या अभी एक दूसरा पोल है वो तो लीजिए ही. लेकिन अभी बोलिए लेफ्ट बैक ऑफ द प्रीमियर लीग सीजन. अभी 2 वोट्स गए हैं रॉबर्टसन के लिए फ्रॉम द पैनल. 1 वोट मेरा गया है फॉर कैंसेलो और तीसरा वोट जाते हुए टू रॉबर्टसन. और उदय, एनी फाइनल वर्ड फॉर रॉबर्टसन? No. Before we go. I think चलो his actions are enough for my votes. चलो fair enough. Shrey, come on. For me, I will go with Cancelo. I think Cancelo का मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी इस साल, because City are a team that have a lot of problems with left back. They spend 50, 60 million after million, but left back has not worked for them. See, to be honest, it's not even his natural position. He's a right back. But to make Kyle Walker play at his natural position, he has to play at the left side. So I think before start of the season, if we were analyzing City, I think we all in the panel would have said that City's biggest weakness is left back. Because at the start of the season, nobody would have thought that Cancelo will play left back. के बाद तो especially ना, मतलब I know not fair on Zinchenko, but हाँ, that is what the narrative went exactly. Exactly, and Cancelo, the way he has started the season, assist after assist, goal after goal, assisting them in the play, I think he gave City a head start in comparison to Liverpool, which you can see there is a point gap. I think if there's no Cancelo, City don't win the league. मैं वही मतलब एक होता है यार, मतलब मैं खुद ही बोल रहा था रिसेंट जो हो रहा है, मतलब रॉबर्टसन इज फार बेटर दिस कैलेंडर ईयर. लेकिन वही आई एम टेकिंग एंटायर सीजन, आई रियली स्टिल फील दैट यू नो शिमिकास देयर वाज अ पॉइंट. आई नो लिवरपूल फैंस आप बोलिए यार, देयर वाज अ पॉइंट आई हर्ड लॉट ऑफ लिवरपूल फैंस सेइंग दैट वी वुड रादर सी शिमिकास ओवर रॉबर्टसन. आई हैव हर्ड ऑन द पैनल Only for his precision, not for defensive work. Only precision. His crosses are much more technical than Robertson's. लेकिन एग्जैक्टली मतलब देयर इज एन आर्गुमेंट एट लीस्ट, मतलब दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. डेविड, ओवर टू यू. अभी यार इट्स काइंड ऑफ व्हाट 1 2 3 3-2. David, come on, you can do it, man. I personally, with the first half of the season performance, if you're like, you know, this calendar year, like you said, I think I agree with that Robertson has been the better left back. But I think the start of the season, Cancelo was extremely no, because I think Cancelo was extremely key in the first half of the season. So I personally would go with Cancelo for this year. अरे ये तो सरप्राइज हो गया थोड़ा. तो मतलब टाई है, तो आई हैव टू टेक द पोल ऑफ द ऑडियंस यहाँ पर. भाई इनको लीक करवाने हैं गोल, सदिक जी लीक करवाने हैं इनको गोल स्टार्टिंग लेवल के. नहीं बट एक्चुअली आप कोई देखो, मेरे लिए तो खुशी है इन ईदर वे. सिटी हारेगी तो भी मैं सही हूं. अरे पेनल्टी क्या, लिवरपूल का ट्रैप का क्वाड्रुपल खत्म हो गया. चैलेंज पीपल. Gabriel Jesus रो रहा है बहुत. Gabriel Jesus is like, no way, this is not a penalty. This is what it is. यार again a chat. I don't know if you are multitasking. The fact being that हाँ नो मैचेस चल रहे हैं, मैच भी देख रहे होंगे. लेकिन आप भी बोलिए यार again any City fans in the house, any Liverpool fans in the house, आप especially because the fight is between Robertson and Cancelo यहाँ पर, और न्यूट्रल्स especially आप अपना वोट दीजिए in the chat section
कि आपको क्या लगता है रॉबर्टसन की इट इज गोइंग टू बी कैंसेलो? यहाँ पर आदित्य अनिल कुमार बोल ग्रेनाइट जाका खिला दो वहां पे जाका खिला दो। अरे सिटी को कोई तो रोको, मतलब यहाँ सिटी फैंस यार बिजी है मैच देखने में। वो पेनल्टी था क्या होल्ड जो योर अभी बेयर, हुआ? होल्ड योर बेयर। नहीं उसकी आई थिंक ही हिट द फुट, ही हिट द बॉल। रॉबर्टसन यार, मैं रॉबर्टसन का ही देख रहा हूँ ज्यादा। लेट्स प्ले भी रॉबर्टसन बोल रहे। यहाँ पर एक आया है अपने अलोंसो। थैंक यू फॉर द वोट। मार्कस अलोंसो बोल दो। अरे भाई 2 वोट आ गए। पर वो विंग बैक है ना, वो फुल बैक पे सूट नहीं करेगा। हमारा ग्रेटेस्ट कहाँ जाएगा भाई? हमारे पास तो ग्रेटेस्ट लेफ्ट बैक है ना, रॉबर्टो कार्लोस। रॉबर्टसन ग्रेटेस्ट लेफ्ट बैक। अरे VAR पीपल, VAR भाई पेनल्टी है, पेनल्टी। वो बॉल पे पहुंचा ही नहीं। नहीं बट ही कुड हैव आल्सो डाइव, दैट इज द प्रॉब्लम। वो कैमरा एंगल मिल नहीं रहा हमें। यार देखते क्या हुआ राजस्थान का। मीनवाइल बढ़िया शॉट संजू सैमसन का। आगे यार कैंसिलो के वोट्स आ गए। क्या कर दिया डॉसन ने? Ooh, is it a penalty? जाग गए सिटी फैंस। 100% पेनल्टी है भाई अभी, लेकिन वो बिल्कुल ओवरटर्न, दैट्स द पॉइंट। नहीं, when the ref is hitting the screen ना mostly it is given। अरे अब देखो मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूं भाई, सब लोग। उसने पहले दिया नहीं था ना। 1 2 3 4 5 6 भाई कैंसिलो का पेनल्टी है। वो पहुंचा ही नहीं बॉल पे। फेयर इनफ। हाँ, he displaced his right foot। पेनल्टी है। बहुत खराब था। इजी बट देन इट वाज नॉट अ गुड इट वाज नॉट अ गुड टैकल। बहुत खराब पेनल्टी। सिटी आर इनएविटेबल। सीधा पैर पे ही है। पेनल्टी होना चाहिए। Maras. दे दिया पेनल्टी है। पेनल्टी। मैच ओवर, वेस्ट हैम 2 सिटी। और इस तरह लिवरपूल के क्वाड्रुपल होप्स पानी में जाते हुए। Ankit bhai, I will say just one point. I think we have to praise City a lot. I think you have to have sympathy on Liverpool for not winning the league. What can they do? This team is inevitable. Like City 2-0 down, everything seemed down, and they still found a way to win. Just very jealous. No, we are winning the treble. Don't worry. I mean, I'm glad you are sympathizing with us, but don't worry. We are winning. We are winning the treble. That's a That's fine. We have won 3 trophies. I'm very content with that. क्या हुआ? Oh shit, he saved it. Oh भाई, Oh, mine is back. Liverpool are still hanging by the thread. Oh my! If City get a draw in the last game as well. Liverpool need to Fabianski offer rating something to is Fabianski, man. No one rates Fabianski. Goalkeeper of the season. Liverpool. Change it. I think every Liverpool fan would Change the- happily give the goalkeeper of the season to Fabianski right now. Yeah, change it. भाई ब्रूनो फर्नांडिस मोमेंट था। सादिक जी क्या बोलते हो आप? ये That's पेनल्टी में Mahrez's second penalty miss, I believe, in a crucial juncture. होता है यार, चलो वो तो क्या बोल रहे हो उधर? मैं कह रहा हूँ ये ब्रूनो फर्नांडिस has been repeating the same this season, so I think this reminds me of what he's been doing, especially what he did against Emi Martinez। क्या यार, मतलब अभी तो वो हाल हो गया कि हमें ना अब तो ना बैंटर का भी फर्क नहीं पड़ता, इतना सुन लिया। मतलब एक टाइम था कि जब बैंटर का दिमाग खराब होता था, I used to come back with something, लेकिन अब तो मतलब क्या कम बैक करूं मैं? भाई आई थिंक ये मारेस ने बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पे हमेशा पेनल्टी मिस किया है शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पहले भी एक इंपॉर्टेंट मोमेंट पे मिस किया था। नहीं, सिटी आज टीम भी ना, सिटी आज ऑनररी स्काउजर लुइस फाबियांस्की was with Arsenal before this, right? Yeah, Arsenal goalkeeper. ये अब से ऑनररी स्काउजर हो गया। अरे अभी तो एक और स्काउजर आएगा, जेरार्ड, प्लेइंग अगेंस्ट सिटी। Yes, एजेंडा पूरा है हमारा, उसको हमारे साथ ही है, वो लगाएगा वो आगे। Danny Ings, ex Liverpool player. Pep is almost crying. I feel for the guy, man. I mean, imagine if Aston Villa scores first against City and Gerrard is like celebrating like crazy on the sideline. Rugwe doesn't care. He doesn't care. Bro, don't you think this is possible? If he wins the game against City, he is going to be the next Liverpool manager. What do you think? नहीं, if he wins the game against City, फिर तो क्लॉप कहाँ जा रहा है भाई? आप लोग नहीं, क्लॉप के बाद जब भी क्लॉप time to है ना, extension also ना। He's got an extension, but nonetheless, at some point of time, Klopp will retire, right? 5-10 साल के बाद he will retire. So I think after that he can at least take those reins. Let's see यार, अभी भी एक गेम बाकी है। मतलब वो सिटी वाले गेम में ना, जेरार्ड को अपने कोर्ट के नीचे ना अपनी लिवरपूल जर्सी पहन के आनी चाहिए।
Do you think Klopp will leave the same time Salah, Mane and all are leaving? Because I mean, No. I don't if know. No. I don't know. Wait, Klopp is a team builder. Klopp built Mainz twice. now he's Because they building, had I to think sell- he's got a brilliant they buy got with promoted. Diaz. Because Mainz actually got promoted. Then they had to sell their players because obviously it was not a big team. Yeah. Then he built another team and then they got relegated again. Then he got them promoted again. Because obviously Mainz and this season, bhai, some of the most underrated players in German league this season are in Mainz. Their striker, Jonathan Burkhardt, their centre back, Julian Burkhardt. They have a very good defensive midfielder, Anton Stach. I mean, some really, really good players are there in this Mainz team. They have finished, I think, top 10. पोर्तो में midfielder है भाई 21 साल का attacking mid है. He's super technical. His technical ability is even better than Bernardo and KDB's. मतलब that is what they are saying. I've seen him play also in a couple of matches. उसका नाम है कोई Fabio कुछ है, पता नहीं क्या नाम है उसका. I forgot his name. 21 साल का है वो. He's played with Luis Diaz and all these players. Not heard about him. कोई नहीं मतलब एनीवे मतलब अगेन देयर आर टेक्निकली जस्ट व्हाट इंजरी टाइम है और एक और मैच है तो देखते क्या होगा. बट अगेन कमिंग बैक टू आवर कन्वर्सेशन यहाँ पर बाय द वे राजस्थान को के लिए अपडेट देते हैं फॉर क्रिकेट फैंस एंड ऑलमोस्ट 75 पीपल वाचिंग. पीपल डू लाइक द स्ट्रीम. लाइक्स थोड़े कम है तो होपफुली वी कैन गेट टू 200 लाइक्स इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स. इट विल बी ब्रिलियंट. और आप भूलना बात यार काफी सारे लोग हैं पैनल में अपना टाइम निकाल कर आए हैं. होपफुली यू गाइस कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब विद देम. उनका है लिंक सब डिस्क्रिप्शन में. डेविड का नहीं है बस, लेकिन डेविड का आप देखते ही बहुत बार आता है चैनल में. डेविड Antau Sports is the name that I think he's already having. So yeah, please go and subscribe. Yes, and we'll come to Ankit's question as well. That's not me, but yeah, Ankit, thanks for the questions for sure, as well as Hasib's question. लेकिन हाँ, left back by popular demand it has become Cancelo because इतने सारे आ गए थे votes. ठीक है चैट में. Just about रॉबर्टसन मिस कर दिए. सेंटर बैक पे आते हैं बिफोर राइट बैक. तो सेंटर बैक पेयरिंग पे चल जाते हैं. पहले डेविड, आई विल स्टार्ट विद यू दिस टाइम. Oh, pairing. Okay. I have to go with Thiago Silva and I will go with Virgil van Dijk. Thiago Silva and Van Dijk. मेरे आउट हो गया बाय द वे. सैमसन इज आउट. Samson is out. Interesting. So Virgil van Dijk and Thiago Silva are basically David's choices. यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स 9 over 75 for 2. Interesting मैच होने वाला है. Good for RCB fans. लेकिन हाँ, उदय, over to you and chat as well. Center halves? Yeah, center halves for Premier League. यार center halves ना मैं अलग जाऊंगा. मतलब I'd like to go with Rudiger एक तो. तो रूडिगर वैन डाइक समझूं मैं आपका. वैन डाइक नहीं यार, वैन डाइक बोर हो जाएंगे सारे. मतलब लिवरपूल एजेंडा बन रहेगा. अरे भाई ये कहां से आया? That was a twist in the tail. तो यार श्रेय. Yeah, I think I would rate other, even this, like people will laugh at me, but Dan Burns' defensive ability is amazing. I love the way he is, his aerial ability and command करता है अपनी position. Left back भी खिला लो उसको. He's very versatile. He's not pacey again, but at least he's a good defensive addition. But again, Dan Burns doesn't look good with the squad, to be honest. I think बहुत players हैं defensive तो हमारे Premier League में. और कौन है? Connor Cody है. Ruben Diaz. Connor Cody, but he's leaked many goals this season, you know. Compared to what Bulls usually do. A fair point. Van Dijk is fixed. सब लोग Maguire है. Maguire को खिला दें. Maguire. नहीं वैसे पता है मैगवायर को खिला सकते हैं इस टीम में because the issue everyone says is कि he doesn't have a good defensive midfielder and he doesn't have good defensive fullbacks. अब उसके पास fullbacks भी हैं जो कि मतलब एटलीस्ट अपनी पोजीशन लूज नहीं करते. कैंसेलो भी अपनी पोजीशन लूज नहीं करता. मिडफील्ड भी हमारे पास अच्छी आएगी आगे तो मैगवायर खेल सकता है इस टीम में. यार भाई मतलब सब लोग चैट में यार स्पैम मत करिए. तो एक रिक्वेस्ट है क्योंकि आज इतने कमेंट्स लोग बोलते हैं मैं स्लो लेता हूं. स्पैम करोगे तो यार बाकी मेरी बात जरा सीरियसली ले ले. मैं ना यहाँ पे मजाक कर रहा था. यार we have overlooked this guy, the guy who plays on the right. क्या नाम है उसका? टॉटनहम में खेलता है जो. रोमेरो. हाँ रोमेरो बहुत सही गया. क्रिस्टियन रोमेरो का सीजन बहुत सही. मैं रुडिगर एंड क्रिस्टियन रोमेरो बोलने वाला था. अच्छा एक चीज मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा. वी आर नॉट पिकिंग प्लेयर्स whom you feel are better players.
or who have looked more impressive. We are picking players based on the performance of the season. Fair? ठीक है. वैसे तो Romero. वैन डाइक को लेना चाहिए, but चलो क्रिस्टियन रोमेरो एंड रूडिगर both. चलो कोई नहीं. That is the vote. मतलब you have utilized your vote. Fair enough. मेरा वही है, रोमेरो के अगेंस्ट पॉइंट है कि यार he has been injured for a long while. As much as he looked really good, so stats are not backing him, simply put. That's the bottom line, ना. बिल्कुल. लेकिन yes, certainly मतलब तो अभी तक यार, again remind me chat अगर मैं गलत हूँ, लेकिन I think डेविड ने किया है थियागो सिल्वा और वैन डाइक ना. डेविड वैन डाइक, या. और यहाँ पर क्रिस्टियन रोमेरो और रूडिगर. तो अभी 4 नेम्स आ गए. पीपल, राहुल यहाँ पर क्रिकेट स्कोर अपडेट करते हुए. हेमंत, सेंटर हाफ्स प्रीमियर लीग का. Rudiger and Matip. Rudiger and Matip. Matip is a good shout. No problem. तो Matip is another name. हमने एक्चुअली बात नहीं किया था इसके बारे में, लेकिन हाँ, fair enough. But again मेरा वही डिबेट, Matip हाँ प्रीमियर लीग में वो ज्यादा खेला है, लेकिन कंपेयर टू कोनाटे मतलब थोड़ा रोटेशन भी हुआ है वहाँ पर. तो that is only my point. सादिक भाई आपका नहीं हुआ ना वोट, आप बोले प्लीज. देखो, Virgil van Dijk for sure, not just because of the game that he has, but the impact that he has on the team. Because he has that presence. Agree. उसका एक डिफेंस, उसका एक प्रेजेंस है वो, मतलब आप देख लो ना डिफरेंस पिछले साल और इस साल में. आप लिवरपूल की टीम में उनकी बॉडी लैंग्वेज में आप फर्क देख लो. There is one thing that Liverpool does in every game. I don't think many people realize it. It happens in the pre-match. I think Uday must have seen that, and in the post-match. When the game ends and when the game begins, Salah, Mane, the midfielders, they all come up first. The last 3 people to enter the pitch in the pre-match, and they enter it in a particular formation always. There's Klopp at the top, Van Dijk at the back, Alisson beside him, and Henderson right on the shoulder of Klopp, and they enter in like as if, they own that place. Yeah. It gives me the vibes of, the Australian cricket team of yesteryear. In their practice sessions, when other teams used to practice, Hayden, Gilchrist, they used to walk on, go across, देखते थे उनको और अंदर चले जाते थे. This is अरे भाई यहाँ breaking news यहाँ देखिए, लीड स्कोरिंग 90 plus 3 minute. अरे भाई Against जैसी Brighton, मैच की जान बता दी. 1 point. They get one. They basically gain 1 point over Burnley tonight, right? That's the biggest news. यार वर्जिल वैन डाइक को डालना पड़ेगा. मेरा आपने लिवरपूल बायस जाग दिया. रोमेरो का जगह ना. Being someone who's seen the game for so long, पता क्या होता है इस टाइम के बाद ना आके आपका ये हो जाता है कि आपके अपनी फेवरेट टीम्स तो होती हैं, but then you start appreciating the historical significance of the game. True. तो उसमें ये mentality, आपका body language, those things come into it. So when Van Dijk walks onto the pitch ना, मतलब वो ऐसे आता है कि भाई I am here and this pitch belongs to me, this blade of grass belongs to me. तो वो चीज़ मैच इज ओवर. सादिक भाई, Man City are giving a favor to Liverpool 2-2. The floor is yours. You also have to thank Bowen, right? Actually, no. You don't have to thank. Yeah, he's kind of missed that opportunity. I would thank Bowen and I would give the flag to Craig Dawson because first half में भी deflected shot गया था उसकी तरफ से, second half में गया. उसकी defending माशाल्लाह बहुत अच्छी रहती है, but Craig Dawson is actually very unlucky as a player. Red card भी concede कर लेता है काफी, foul भी काफी दे देता है यहाँ, तो I think yeah. But nonetheless, it all depends on Steven Gerrard now. अब Gerrard पे छोड़ दिया हमने भाई. तेरे पे ही है, थोड़ा स्लिप वगैरह मत कर जाइयो. नहीं, पर तुम लोग स्लिप मत कर जाना. 2 गेम है अभी तुम लोग के पास. Maybe a new. लगता नहीं मुझे. Maybe you go from a क्या लगता है? But then you are missing also Fabinho and Salah also, no? But still, I think we do pretty well with our subs as well. Maybe our Yeah, I makeshift. think you'll still have a strong enough team. Yeah. Not strong enough, but yeah, I think the roles that Klopp Get has the job assigned, done. it is more about the system, not about the players. It is more about the system, Again, the players are definitely reflective of the system, but we are doing well as a team. मुझे लग रहा है निकाल लेगी लिवरपूल, इतना मुश्किल नहीं होगा. अरे यार गोल देख रहा हूँ मैं इसका. कि Liverpool goes from a slippy G to a slippy H. Henderson slipping. अभी मैंने रूडिगर पे मीम निकाला था. स्लिपी यार क्या कुछ आया था मीम रूडिगर पे भी. When he slipped against Real Madrid. हाँ, वो तो उसने रिकवर कर लिया था ना. नहीं, लेकिन कल देखा था. गोल हो गया था वो. कल देखा था the way he kind of jumped. He was like नहीं, in the air he was jumping it was a small. Keita, that was a great pick, man. That tells what Rudiger is all about. Even now he was the most committed player even at this moment.
I But, think, I will agree with David here. My second centre back has to be. yeah, Yeah. Tia, Yeah. Goshen, Yeah, also I the- think Rudiger has been great for us. Like he's been absolutely incredible for. But I think the calmness that Thiago Silva brings in that defense, when he's not there, you know what Chelsea are missing. He's that type of player. When he's not there, you are missing. It's like a visible. You can see it so clearly what Chelsea are missing. So yeah, See, yeah. just why. imagining a defensive back two of a Virgil van Dijk and a Thiago Silva is like yeah, immense. मतलब वही Thiago Silva when he's not played it's a shown, right? That commanding person. मतलब हाँ mistakes भी है, ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर right center half में I rather pick Silva over Rudiger. That's also a point, fair enough. लेकिन again 284 votes but only 157 likes. 77 people watching. Let's get the likes up क्योंकि yes, the Premier League is not done yet. It is 2-2. आप देख रहे हो screen पर नीचे score West Ham 2, Man City 2. That is a great kind of an experience that a Liverpool fan is having this season and just a Premier League fan in general. इतना ज़्यादा topsy turvy. Not just that, relegation zone में Leeds has scored almost a last minute goal. I think it was Stroik, how do you pronounce that? And it was Gerrard, the youngster, giving him the ball. That is brilliant, man. Even Stroik is very young. I think he's 21, 22. He's a centre back. Exactly. Stroik. So, And good news for you, Ankit bhai, he's a Dutch centre back. Yeah, he is. But again, is he that good? I'm not sure. Bro, last season, Ankit, when he did not come, what is his name? Lorente, when he just joined the squad, usse pehle he played regularly for Leeds. He played regularly, exactly. Under Bielsa. कोई नहीं, मतलब Stroik was one of the Stroik का जो वो था ना in the Dutch team. I think you have seen that centre back ना Per Shores. Yep. Shores को देखा है ना? Stroik and Shores are considered equal. अब फिर last season. काफी सारे promising players आ रहे हैं डच में, तो I'm just hoping that they kind of live up to the expectation. लेकिन I'm actually coming back to the Premier League table यहाँ पर, क्योंकि this needs to be shown before we get back to the team of the season. This is something else, people. Goal difference सब चीज देख लेते हैं. Combination. I know Rajasthan का भी batting चल रही है, and we'll come to that. And I'm hoping everyone has again subscribed to the panel's channels. यहाँ पर शायद हमें हेमंत भाई कहाँ गायब हो गए? चलो कोई नहीं, he'll come back. Let's see. Man City 90 points, Liverpool 86 points. Liverpool अगर जीतती है next game, Southampton के साथ है, right? Liverpool का, तो that let's assume that they get 3 points. Goal difference अभी भी है 7 का, तो I don't think we're going to see a 7-0 or something. I really don't. लेकिन who knows? किसके साथ है? Liverpool का next? Southampton. 9-0 चाहिए भाई. Southampton has to Southampton pay can tribute. lead goals. Ankit bhai, you must be knowing Southampton can lead goals. Of course they can. Yeah, against Chelsea also they leaked so हमारे many. लेकिन Bro. context, सादिक भाई सर, context, इस context में मुझे नहीं लगता. Again, I might be wrong. Funny things have happened. मैं disclaimer हमेशा देता हूँ सब. लेकिन यार देखो, मतलब top 4 की देख लो, मतलब Tottenham again today taking points. That crucial goal, बहुत ही crucial था for them. Let's see what happens for Arsenal कल. But Leeds का अभी देखो यार 34. Burnley are now all of a sudden. Yeah, एक extra game खेल रही है Leeds. You can say that Burnley have a game in hand, but we know with relegation teams that never is even getting a point. So technically Leeds have gained 1 point over Burnley. So it'll be really interesting. Again, chat आप बोलिए भाई Leeds Burnley में कौन लगता है, और maybe even Everton getting sucked in. That is quite possible क्योंकि उनकी गेम से maybe अगर सब हार जाए तो who knows. Everton का आज किससे मैच है? Brentford. रात में है ना? Brentford अभी शुरू होगा 9 बजे. Everton की गेम्स आप दिखा सकते हैं अंकित भाई? हाँ, Brentford है अभी next. And then Ankit, they have. If they win this game, they are through relegation. They are not Yeah. in that zone. Yeah, Correct. yeah. I honestly don't. अगर मुझे बस देखना है fixtures क्या, I don't see them winning against Brentford for sure. मुझे भी नहीं Brentford is लगता. currently playing brilliant. They play some good football, Crystal yeah. Palace and Arsenal. तो again Arsenal यार बहुत interesting match होने अरे वाला है. Brentford, they are centering their Arsenal plays है ना, only around Everton का. Christian Eriksen, and Christian Eriksen has been so amazing for them. Game on game, deliveries जो डालता है वो center से, मतलब अलग ही level पे है Eriksen. I mean the combination of his and Norgard in that वो defensive midfield and in the central midfield is very very good. Yeah. Yeah, I don't see Everton honestly winning any of these three. Yeah, I was just going to say the same thing. I personally want Everton to stay up only because of Frank Lampard. I don't want Everton to stay up at all. I just want to see them go down. I want to see them relegated, to be honest. And all of their you players do, will. but even I
but all of their players will leave then, I think, for the likes of Richarlison, because their prices will drop like completely, and all the top clubs will come sniffing around for those type of players. Okay, quick update here for cricket fans. 11 overs and there's a boundary there by Padikkal, one of my favorite. People watching the stream know it. 111, 101 for 2. So Rajasthan going great guns. Not great news for Delhi, Bangalore of the likes, Punjab as well. So Leeds must go down. But again, हमने देखा है Everton का जो fixtures है काफी difficult है. Leeds भी है ना relegation battle में. Of course. Leeds तो हमने टीम देखा है. Leeds 100%. उनको नीचे. सादिक भाई, जो आप चाहते हो जो होगा वो बोलिए. मैं भी सेम बोट पे हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. लीड्स के मैच दिखाओ मुझे आप. Leeds basically, I showed ना Burnley basically 1 point less than Burnley Leeds. के क्या बचे उस पे डिपेंड. मैं जरा एक दफा देख लूं मुझे. Burnley के फिक्सचर देख लेते. चलो Burnley के फिक्सचर देख लेते क्या है. और वो बड़ा है ना लिस्ट में. They are playing. अरे Gerrard will call a lot of things भाई इस सीजन में. Gerrard है important factor. Anyone people, what do you think यार, कौन सा relegate होने वाला है फाइनली? आप बोलिए चैट में. Burnley के एस्टन विला और न्यूकासल. तो Gerrard और न्यूकासल दोनों टीम्स काफी डिटरमाइन करने वाले हैं इस सीजन में. नेक्स्ट मैचेस है काफी, न्यूकासल भी और एस्टन विला भी. तो आई थिंक, आई डोंट नो सादिक भाई, लुकिंग एट दैट, व्हाट डू यू थिंक? एवर्टन नहीं जीत रही. Burnley नहीं जीत रही. Newcastle not against Villa also. Not against Villa. Not against Villa also. Bro, you never know, yaar. Burnley have started Yeah, that's scoring also good that. goals, and they've started playing with lot more freedom. यार Burnley किसी तरीके से विला को हरा देना तो लीड्स चली जाएगी नीचे. हरा सकती है. Hope is that. Hope is Leeds. लेकिन honestly on paper looks like लीड्स का तो ब्रेंटफोर्ड है ना, इसीलिए that is good. Basically Brentford, Newcastle और Aston Villa are determining what is going to happen. ठीक है, वो होने वाला है इस सीजन में. On both ends of the table. हाँ, exactly. अरे आउट हो गया भाई, जयसवाल आउट. जयसवाल finally gets out. राजस्थान फैन, सॉरी यार, आई एम आरसीबी फैन, तो समझिए इसलिए मैं कुछ 111 for 300 कंप्यूटिंग एंड परम्यूटिंग के उदय कंप्यूटिंग के एवर्टन कैसे नीचे जाए. मैं सोच रहा हूं लीड्स कैसे नीचे जाए. हम दोनों सोच रहे हैं. मैं भी लीड्स के साथ. I think for the next two Burnley games we are going to be Burnley fans. ड्रॉ कर दे Burnley. I don't think Everton will lose this. Everton निकाल लेगी यार. Yeah. मुझे लग रहा है लीड्स आएगी पक्का. मुझे भी ऐसे लग रहा है. लीड्स की फॉर्म बड़ी गंदी रही है. You should buy a claret shirt, भाई. You should buy a claret shirt till the end of the season. You need all things from the clarets only. Burnley, Aston Villa. Bro, to be honest, I don't mind getting a Tarkowski की shirt यार. मतलब बहुत अच्छा लगता है. Ben में भी काफी अच्छा लगता है leadership wise, but Tarkowski is another level. उसकी जो डिफेंडिंग है ना, मुझे बहुत माशाल्लाह अच्छी लगती थी पहले भी. Interesting. हाँ, ये भी. That's good for both of my teams. Rafinha जाएगा बार्सा, फिलिप्स आएगा यूनाइटेड. बिल्कुल. लॉट ऑफ हेट मिल रहा है लीड्स को सरप्राइजिंगली. बहुत सारा हेट मिल रहा है. मतलब अगेन इट यूज्ड टू बी द मोस्ट हेटेड टीम, लेकिन लास्ट जो सीजंस थे ना अंडर बियल्सा, I think Bielsa, yeah. मतलब I personally even liked the way Bielsa, fast The last ball. time when Leeds were Yeah. good, back in the day when Leeds were finishing, मतलब 98 से लेके 2002 they finished in the Champions League I think a couple of times and they were real good. Like they were the most arrogant gits out there. Exactly. Yeah. मैं वही बोल रहा था, they were the most hated. So David, exactly, you have seen the new version of Leeds. The newer one, yeah, I've seen the newer one. Now, अभी भी David, as a Chelsea fan, you see each game against Chelsea that they've had, they were dirty Leeds. I call them dirty Leeds. Yeah, I've seen is that, one of the worst places to play football at. मतलब honestly, for away an fans, opposition yeah, team, for away Road teams. is horrific. I haven't seen this. What is the on? I think is it Amazon Prime? They have the वो documentary. Leeds, वो हाँ, Take us home that's कुछ how. करके है ना उनका. Yeah, I think like 2020 I seen that, and that's when I really understood what Leeds are, because before that I didn't. That transfer saga of Dan James was like a story in itself, boss. Right. Ankit, can you form the rest of the playing 11? I think we've forgotten the playing 11. नहीं अभी यार it's a major moment in the watch-along. So I thought let's just cover the relegation battle, the top 4, and till the time the next match starts, और obviously राजस्थान की बैटिंग भी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन नहीं हम करेंगे. Certainly I have it on side by side भाई, वो तो नहीं जाने वाला. यार again lot of जो kind of questions पूछ रहे जो related नहीं है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में मैं स्टार कर रहा हूँ. आई एम पार्किंग एट अ साइड. दैट डजंट मीन हम नहीं आएंगे, उन पर आएंगे, सर्टेनली आएंगे.
as much as time permits we will come back. ठीक है, तो अभी के लिए we are coming back to what you're seeing on the screen. Let's pick EPL team of the season. लेकिन 90 people watching, come on, you all can like the stream and subscribe to Almighty Blues FC. Do not forget to subscribe to Almighty Blues FC जो हमारा दूसरा चैनल है, and this channel जो अलग चैनल है, इसलिए मैं अलग लुक और फील भी दिया हूँ थोड़ा कि आपको नहीं लगे सेम है और आप भूल जाओ सब्सक्राइब करना. तो आई एम होपफुल यू आर सब्सक्राइबिंग टू बोथ द चैनल्स एंड द पैनल के चैनल से नीचे सब है, ऑल द डिटेल्स आर देयर. अभी तक मैं शेयर करता हूँ व्हाट वी हैव मेड ऑफ द टीम ऑफ द सीजन. तो एज पर द वोट्स में गया हूँ, जो भी रहे वोट्स ऑफ द पैनल, और ऑब्वियसली मेरा वोट मैंने दिया नहीं था. नो डाउट्स अबाउट दैट. आई एम गोइंग विद डेविड on my center halves. I agree with David 100% और again Sadiq bhai as well. तो I think हम तीनों ही सेम center halves के साथ जा रहे हैं. तो this is what we are going with. Again chat, आप बोलिए do you agree with this? This is a EPL team of the season as per the panel. और श्रेय भी थे, हेमंत भी थे. We had 6 votes out for the panel or votes in the chat. We are moving to right back now. So right back, let's start with Uday this time. ठीक है, एंड द चैट एज वेल. तो प्लीज टेल मी. हाँ, अंशुमन आ रहे हैं भाई, सब लोग आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए. वी हैव वॉच अलोंग 11:30 तक. सब लोग को पहले बुला लेता तो और पहले ही आ जाते तो यार 5 घंटे कौन बैठता मेरे साथ. आएंगे अंशुमन भाई भी आएंगे, सर्टनली आएंगे भाई. वी आर हैविंग, बाबा को भी दिया है, लिंक दिया है, तो होपफुली दे विल कम एज वेल. तो हाँ, उदय प्लीज गो राइट बैक. बाय द वे, before you say that and chat, आप भी बोलिए right back of the season. I will take a quick 1-minute break if it's okay. Uday, and you guys just continue. Okay, Uday, you can take the chat as well in between. Is that okay? Yeah. Sadiq ji can take it. Sadiq ji, please. कोई भी यार, आप chat ले लो. आप उदय आप वोट दे दो. चलो, thanks. I'll be back. यार देखो, वैसे तो ट्रेंट को लेना चाहिए सबको. I think even David Antau will agree with that maybe. But surprisingly, I even like Reece James' performance. I know he's not consistent and he's been injured this season, but I think there's just a very marginal difference if you compare Reece and Trent at the moment. Trent has more trophies, obviously, and Trent is more consistent if you've seen season on season. Reece James, 2-3 season के बाद definitely he can prove that, that I have been consistent. But if he puts in that performance, game on game like Trent does, so Reece James, to be honest, is not a bad shout here. Even Kyle Walker is not a bad shout, but Kyle Walker is not someone who's preferred in the starting 11. Yeah. So it is a very, very tough call. I would also prefer someone like Tariq Lamptey, to be honest, in that position because of his pace. He's also been good, yeah. But I think for James, it's the injury that has kept him out. Had he played, the full season properly, then he would be a much stronger, he would be much stronger contention for the right back. But I think Trent takes this one, this year at least. I mean, a lot of people here are saying Walker. There is a couple of votes for Trent as well in the chat. And Udit, I'm fine. Thank you. The thing is that I have always preferred my fullbacks to be performing in both the phases. Yeah. And for me, honestly, it would have been Reece James. But if not Reece James, I'll take Kyle Walker. Because Kyle Walker, पता है क्या, वो आपको what Trent gives you an offense, Walker उतना ही आपको डिफेंस पे देता है. He's defensively very solid. Evident in that Liverpool वाला game, वो जो second game हुआ था, he shut that left flank down for you guys. Reece James लेना पड़ेगा, Sadiq ji. We have to take Reece James. He's been consistent with his performances in the past 2-3 months. I personally feel in the last 2 months definitely, yeah. अगर हम इंजरी उसका कंसीडर नहीं करें, बल्कि वो इंजरी एक्चुअली उसके लिए बेनिफिट है, because it showed कि how impactful he was. You could see Chelsea were missing when he came back. You could see what Chelsea were missing, yeah. So, but I don't know. Obviously, and he commands that right centre half position as well as that wing back or full right. Any position he can play. He's very versatile that way. So. नहीं, Reece James Nitish, I'll just tell you, Reece James खेला है. He missed, I think, 10 games out of the total. November से लेके Jan. Around end of December till beginning of February, I think. Mid-February, end of 2 महीने, December के end से February के end तक गया था वो तकरीबन. Mid-end February तक he was out. So who are going with right back? Trent or Reece? I'm going with Reece James. Okay, Sadiq, who are you going with? Me, honestly, my favorite right back this season, I mean my best right back, I mean best full back. Most complete is obviously Robertson, but the best fullback in general has been Reece James for me this season. Fair enough. I won't complain. I'm sure Ankit also won't complain. They have chosen Reece James.
as the I'm pleasantly surprised, I must say. yeah. I think यहाँ पर we'll थोड़ा सा definitely मतलब not disagree. मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चुभा रहा हूँ यहाँ पर. I'm the devil's advocate here, being the host. So पैनल थोड़ा सा एक तो recency bias और थोड़ा चाह देख रही है. रीस जेम्स is a better guy, man. Come on, he's better. लेकिन I agree, man. रीस जेम्स when he's performed, he's been the best. Yeah, I have to agree definitely, with. yeah. And that is the bottom line. But on stats, on consistency, Yeah, that I thought Trent Trent has or taken. Walker. Yeah. नहीं, I said Walker, but the thing is, if you bring, अगर आप मुझे इस सीजन के बेसिस Walker का इस सीजन offensive, I mean, if Reece James would not have been there, then Walker is my next choice. It's like Same. that. क्योंकि Walker जो आपको डिफेंस में करके देता है ना, वो सामने वाली टीम का आधा ऑफेंस खा जाता है एक तरफ से. प्लस आपने थियागो सिल्वा डाला है राइट सेंटर, आप वो बेचारा ट्रेंट कवर ही नहीं कर पाएगा. थियागो सिल्वा गएगा बुढ़ापे में मुझसे मेहनत करा. Yeah, नहीं मतलब I am putting Reece James because already panel has outvoted me even if I go for Walker. ठीक है, तो मैं तो obviously यहाँ पर चार्ट में भी देखो काफी Walker है. Wow, yes, Chelsea perspective, bro. If you want to join, please join, man. Coachella been a long time been on a stream. Definitely, people do check out Chelsea perspective. Your buddy is very right. Walker fits in any format defense, no doubt about it. No doubt about it. मैं बोला ना, मैं तो Walker के लिए जा रहा था. मेरा तो your buddy, first of all, your buddy का डिफेंसिव आउटपुट, मतलब रीस जेम्स का डिफेंसिव आउटपुट वॉकर को तकरीबन मैच करता है. ठीक है, वॉकर इज स्टिल अहेड ऑफ रीस जेम्स व्हेन इट कम्स टू डिफेंसिव आउटपुट, लेकिन ऑफेंसिवली रीस जेम्स ब्रिंग्स much more than Kyle Walker at this season. And his deliveries are definitely much better, to be honest. They've been better than. No doubt. Yes, we are going to be watching that. Definitely. Michael talks football as well. We have two brilliant channels in the chat. People do check them out. Apart from the panels channels, and David Antao, again, I'm shouting out because मैंने नहीं डाला है. I think यार आपका उदय आपका भी चैनल नहीं डाला है क्योंकि आपका टैग नहीं हो रहा है. तो आप चेक करिए प्लीज. आप हाँ तो आप यार टैग क्यों नहीं हो रहा है मेरा चैनल? I don't understand. मैं हमेशा लिंक डालता हूँ. आज लिंक भी भूल गया क्योंकि यार it got in the last minute. लेकिन again आप जानते हो यार, we have featured उदय many a times. Loudmouth Football shout out, David Antao Sports shout out, Michael Talks Football shout out, and Chelsea Perspective shout out. Again, Michael, if you want to join, man, then do DM me. Let me check if you have already DM me. मैंने Twitter खोल कर नहीं रखा है. Let's see. Anyway, so yeah, I have put in Reece James because of the voting. I'm not going to change that. एक बार डाल दिया बस. Particle out. अरे भाई, interesting. Particle out हो गया भाई. राहुल बोल रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है क्रिकेट मैच भी. लेकिन ना मैं डाल रहा हूँ और यार मल्टीपल वॉच चलाऊंगा तो यू विल सर्टेनली गेट मल्टीपल अपडेट्स. और बाय द वे, आपने पता नहीं गौर किया है बीनीथ द स्क्रीन क्या चल रहा है. चेल्सी विमेंस स्कोर्ड. मैंने बोलना भूल गया. You're leading 2-1. Yes, Erin Cuthbert scored and what's that the is time? 83rd minute going on. Oh, 2-1 right now. So we are on the brink of history. Let's see. Let's hope that we are getting there. Absolutely. But I have put in Reece James यहाँ पर. Again, Premier League team of the season, people get in. It's going to be a really bad day for Manchester City in whole. yeah, exactly. Yeah, absolutely. Max Aarons, अरे भाई, come on. यार मैक्स एरन्स पता है उसने शुरू अच्छा किया था नॉरिच के साथ, लेकिन वो he's an all around above average fullback. But the thing is, he needs a proper team around him. वो अकेला he needs better than Norwich. He needs better than Norwich, absolutely. International player भाई, मतलब आएंगे उस पर आएंगे. We'll talk about international teams भी. Particle out, yes. So yeah, DM की बात कर लेते हैं quickly. David, who are you going, man? Rodri? DM. Declan Rice options. Yeah, there are a lot. I was just going to say Rodri, Declan Rice, Fabinho, of Declan course. Rice, Rodri. This year particularly, I wouldn't bring Kante in the conversation for this season because I think he's been very off and on, especially with injuries and all those things. So I personally wouldn't bring him if we are just basing it on this season. Rodri, Declan Rice, and Fabinho. I think it has to be one of them only. It has to be Rodri. I think Rodri. But yeah, I think I'll go with that Rodri. They're trying to basically influence David slowly. No, but I was debating between Rodri and Fabinho. Like Rice is also absolutely incredible what he's done this season.
he's not only scored in England, he's been scoring in Europe also, when West Ham needed it the most. So I think he's been like absolutely amazing. But I think Rodri What about you, Sadiq bhai? gets in. As much as I love my Brazilians, I mean, Rodri has to be it. He wants to select Fabinho, I think. नहीं मतलब पता even in the Brazilian team I like Casemiro more than Fabinho. मतलब पता Fabinho has that क्या है, he is defensively very solid. लेकिन you need a little bit more of a fluid defensive midfielder these days. थोड़ा बहुत आपका गेम चला है. इसीलिए I'm saying मैं हमेशा वो चलाता भी था. वो चलाता भी था, अब नहीं चला पा रहा वो. अब नहीं उसकी तरफ से नहीं आता गेम पे कहीं. इसीलिए I'm saying people are saying Haaland to City makes City really overpowered. If Liverpool gets Tchouaméni, na, it is complete. It is curtains. Because you know what Tchouaméni will do for the Liverpool team? He will unleash Thiago. अभी थियागो को थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा पीछे आना पड़ता है, थोड़ा उसको पीछे आगे बॉल चलाना पड़ता है, फिर उसको पीछे आगे बॉल नहीं चलाना पड़ेगा, फिर थियागो वो करेगा जो वो स्पेन के लिए करता है, because he has Tchouaméni who is a Rodri like CDM जो कि बॉल विन भी करेगा, बॉल आगे चलाएगा भी, and Thiago will just then have to wait at that left flank and create for all those demons and monsters that he has in front of him. Okay, 4 minutes left by the way. Chelsea women back to back, भाई साहब हिस्ट्री मैन. आदित्य राज भाई, गुड फन, मतलब that's what I would say. और कोई कमेंट नहीं है. Respect panel, I think yesterday was substitution mistakes which cost Chelsea FA Cup. Your thoughts? And Sadiq bhai, being United fan, I have only one feeling, हमें भी फाइनल खेलना है यार. आएगा यार, टाइम आएगा. I'm telling all of you, अगर हमने खेल लिया एक टाइटल आने तो पीएल का, मेरे से ज्यादा टॉक्सिक इंसान नहीं मिलेगा. राहुल बोल रहे 190 10 साल की भड़ास मिलेगी. अरे भाई नहीं it's a cycle bhai. Sadiq bhai, you know it, it's a cycle. The cycle has been pretty long, I know, but yeah, it's a cycle. Absolutely मतलब jokes apart, absolutely. I mean, it goes on. I put in Rodri, by the way, just so you know. I agree with the panel here. Yeah. All of them going for Rodri. But I think for me, along with Cancelo, he's been really, really important. What about CMs? Number 8 bologe. Uday, I'll go with you first this time. Yeah, I will take time with CMs. You can move on to the other panelists. Sorry, I missed that. What was that? नहीं, मैं चलो एक सेलेक्ट कर लेते हैं. चलो एक चेल्सी का ले लेते हैं हम. सेंटर मिडफील्ड में. आप बांट नहीं रहे हो भाई, आप जो सोचे वही लीजिए. नहीं, क्योंकि चेल्सी में I really like Mason Mount का work ethic, but Mason Mount, Kovacic are shouts, definitely shouts. Kovacic तो मैं नहीं लूंगा. Kovacic नहीं लूंगा मैं Mason Mount ले लूंगा, क्योंकि Kovacic जो एबिलिटी ऑफर करता है वो बाकी मिडफील्डर्स काफी कर लेते हैं. They can try to midfield. मैं बोल ही रहा था कल स्ट्रीम में भी कि यार Mason Mount ना बहुत लोग people kind of see the work ethic. Bhai, he has, after Lampard, the first player in Chelsea colours who's actually got more than 10 non-penalty goals in a season. Not just that, over 10 goals and 10 assists. और आप देखो कोई भी मैनेजर आज के दिन में, कोई भी मैनेजर देख लो, from the time he started playing for Chelsea, he has literally played every game. तो सब लोग बेवकूफ नहीं है. There is a reason to it. And again, but we are comparing him versus maybe even a De Bruyne, you would say, even Kovacic in Chelsea's team, Thiago for Liverpool, your buddies putting it out, Bernardo Silva of course City. So काफी good options है. Mason Mount also can play up front as a left forward at times, so वो भी option है. तो I don't know, so you are going for Mason Mount एक और दूसरा कौन था? नहीं, I am changing. I'll go with Rodri in the center, De Bruyne on the right, and Bernardo Silva on the left. I think you should have put like this, like not more than 2 or 3 players from each team. Then that would make it more. I know. Like, but if you're choosing I know best level, but then that's basically consists of the top 3 teams only, like But let's midfield है ना, मतलब आप कुछ कर नहीं सकते. Yeah, exactly. That's also there. Good midfield. No, but let's tweak things a bit. I think we can also put in Thiago or Christian Eriksen for the creation. I think Ward-Prowse also has been very good for Eriksen, yes. For Eriksen for sure. Like, since he has come in, he's just picked up very left off. Another good shout in the center of the mid would be this one, Højbjerg. अरे 2 हो गया भाई. Oh.
हॉयबेग क्या हाँ 2-2. हॉयबेग हाँ ठीक है यार हॉयबेग का ना Oh, breaking news, he people. solid Sorry, Uday, I have to defensively cut you here, आप लोग but का it's सेंटर 2 बैक all. टोटली मिस कर दिया. People, Sadiq bhai, एक second, please, yaar. This is not great news. I have to update the Watchalong part, but it is 2 all. Man City women have just scored. I don't know if you guys, आप Sadiq bhai देख सकते हो आप? हाँ मैं वो- देख रहा हूँ आप लोग के सेंटर बैक ने टोटल मिस कर दिया. ये एरिक्सन है ना. Haley Reso. I don't know. I don't follow Man City women much. I have to be honest. So Haley Reso scored 89. I was like refreshing कि अभी हुआ 90 minutes, अभी हुआ 90 minutes. ओ भाई मैं मैच नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ स्कोर देख रहा हूँ कि यहाँ पर लिंक में. नहीं मेरा तो मैच चल रहा है साइड में. मैं उसका टैब दूसरे टैब पे चल रहा है. वो भाई आप लोग का जो सेंटर बैक है ना एरिक्सन. आई मीन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एरिक्सन. दिस लेडी इज आल्सो नेम इज एरिक्सन. शी जस्ट कंप्लीटली मिस्ड इट. मतलब ओवर द टॉप बॉल आया एंड शी कंप्लीटली मिस्ड इट. 2 all. Chelsea not having a great time. Let's see, even that is going to extra time, looks like, as things stand. But yeah, please continue, guys. Sorry to cut you, Uday and Sadiq bhai. Please continue. I mean center mid में there are a lot of options, but then you know वो बात आ जाती है. When you talk about really the team of the season, तो then there are levels to it. वो वाली बात आ जाती है किसमें. तो KDB तो definitely, I mean if not picking KDB is criminal. मतलब Yeah, De Bruyne and Bernardo. KDB तो for sure है. Ericsson has a decent shout. Højbjerg has a decent shout. मतलब you can shift Rodri a little bit up and play like a double pivot. Thiago is Rodri also. and I would Thiago is a choose decent shout. Thiago over Højbjerg. Højbjerg is defensively definitely very capable. Yeah, offensively same. Yeah, I his would agree long with that. balls and he can give in those penetrating passes, but इतना consistently नहीं देता वो जितना, और उसका रोल है भी नहीं वो consistently देना. नहीं वो तो I agree. CDM का मैं बोल रहा हूँ. अगर CDM में भी अगर किसी को shout देनी है तो we can give a Okay. shout to Pierre-Emerick Højbjerg as well. Fair enough. तो मतलब who are you picking? Sadiq bhai, who are you picking finally? KDB, Bernardo Silva. मतलब they've been too good. इतना आप डिस्कस करोगे, लेकिन जब आप वो 3 मिडफील्ड देखते हो ना सिटी की, तो यू आर लाइक क्या ही करें मतलब. Oh man, City I was dominates hoping to midfield. get in Mason Mount somehow. Yeah, come on, City David. dominated team. Yes, David, KDB Silva. अंकित KDB भाई, Silva. no doubt Mason Mount. Can't argue with that also. लेकिन Mason Yeah. Mount has to compete with KDB and Silva this season. मतलब Yeah, exactly. he's unfortunately क्लास में वो स्टूडेंट है कि वो 95% ला रहा है, लेकिन जो टॉपर है वो 100% मार रहा है. मैं तो वही बोलूंगा भाई, मतलब again the City team has been next level, absolutely no two ways about it, especially the midfield. I was the first one to say that Rodri has to be a shoe-in. मैंने actually already डाल दिया था Rodri और KDB को before you guys even said, just so you know, ठीक है. Bernardo Silva, yes, he has had those moments which probably none of the City players have had, और वो consistent भी है in all tournaments. लेकिन वही है, मतलब I always go with the same argument. Like Bernardo Silva is much more pleasing to the eye. Mason Mount is not as pleasing to the eye, and that is something as fans that is norm. And in a season where Mason Mount has done a madness, आप नहीं डाल पाओगे उसको भी, तो that is little unfair to him. Not it's unfair to Bernardo Silva of course as well. तो वही है, मतलब it can be either or. So I am okay with either or, but I was like still saying that Mason Mount, I think टक्कर की है. Thiago I don't agree with. Thiago has a tremendous calendar year. इस calendar में pick करूँ, I would put Thiago any day. But again, we are picking from the season. Again, short-term memory loss आप बोलोगे. Beginning of the season में I still think that it was Bernardo Silva and Mason Mount were doing much more, even more than KDB. And I'll be honest with that. KDB काफी late में नहीं started. But Serie A का quickly मैं बोल देता हूँ. Debarco, first of all, thanks for joining. I hope आपने like कर दिया stream. Sports 18. अगर आप इंडिया में हो तो Sports 18 में आ रहा है, ठीक है, आने वाला है 9:30 बजे शुरू होने वाला है, तो we'll watch that as well, ठीक है. और अभी Mason Mount is stuck in the situation that Paul Scholes was stuck. He didn't make as many EPL team of the seasons as he should have, because there was a Gerrard who was performing out of his skin for Liverpool and a Lampard who was performing out of his skin for Chelsea, and they had the numbers, so Scholes never had those numbers to back him. जबकि अगर आप फुटबॉलर से पूछो, I mean if you would have asked the footballers of that era, they all come and say they all rate Scholes technically far superior than both of them. मतलब अगर आप जावी से पूछो, इनिएस्टा से पूछो, they all rate Scholes much higher. लेकिन the only thing is कि when it comes to this team of the season और दूसरी चीजें, output and how much you mean to your team depends. United was such a
क्या बोलते हैं, talented team at that time. कि Scholes was not the most important. I mean, he was a very critical piece, but not the piece in the team in any season of his. Fair enough. True. That's a Same great is the way case of of- putting. तो धीरे से सादिक भाई ने समझा दिया मुझे, भाई समझो यार, बर्नार्डो सिल्वा लेवल से अबव है, आपको लेना पड़ेगा. मतलब आई एग्री देयर. मतलब आई हैव टू, मतलब वही है, लेट्स सी. अभी भी मैं बोलूंगा मेरे से मुझे थोड़ा स्कोप है एक जगह में, लेट्स सी अगर कुछ है तो. लेकिन यहाँ पर क्विकली क्वेश्चन आया, आई नो मैं क्वेश्चन काफी स्टार कर रहा हूँ, ये वाला तो शॉर्ट ही तो ले लेते हैं यहाँ से. तो यार ये बेसिकली कोपा अमेरिका और यूरोस के जो चैंपियंस है ना, वो खेलने वाले 1 जून को हम कवर करेंगे सर्टनली. तो अर्जेंटीना वर्सेस इटली को जिनको मौका नहीं मिल रहा वर्ल्ड कप में, दे विल बी देयर. तो इटालियन फैंस वेट करिए उसके लिए. फ्रेड जॉर्जिनो नहीं भाई, यस एब्सोल्युटली. कोई बोल रहा है और Arsenal. Shout out, जॉर्जिनियो के साथ फ्रेड बहुत अच्छा चलेगा. साथ में अच्छा चलेगा. इस सीजन में नहीं भाई, सादिक भाई, वो भी क्या दिन थे. जावी इनिएस्टा, अभी भी आया, काफी मिडफील्डर्स है वर्ल्ड में. कम ऑन, हम Someone is वही talking 5 साल about बाद में बात Arsenal's करेंगे. midfield. Arsenal's midfield is definitely young, but in the coming years, maybe if they grow well, definitely we'll put them in, but not now, man. Arsenal are definitely not anywhere near the caliber of what we have selected. मतलब वो आएंगे, मतलब वही 5 years 7 ओडेगार्ड तो बहुत ही years young है ना, अभी कितना 20 साल का, 20-21 साल का ओडेगार्ड. We don't realize he's been there for so long. Very मतलब he's been in the limelight since 15-16 years of age. But Odegaard, yeah, he's also not someone who's Mr. Dependable. या तो 2-3 सीजन तक सीमेंट हो जाए वो, तब तो definitely जो creation दे रहा है, he shows us traces of that creation, and people started comparing him to Mesut Ozil. I mean, that was the most absurd comparison he could come up with, but I know he shows you traces of good creation. अरे क्या शॉट You need a lot more consistency from him. भाई. मैं वो भी साइड देख रहा हूँ ना. बाय द वे राजस्थान फैंस आई नो है कुछ चैट में. 3 अंकित ओवर भाई, 3.5 ओवर बाकी है. अंकित भाई, 144. City हाँ भैया. scored. City scored. Oh no! Don't tell me. don't. You're joking. नहीं Wait, sorry what? sorry. यार. इन्होंने ना पहले ही बोला था, मेरा आपको याद score है? दिखाई हालांकि नहीं. आपने पहले भी ना ये बोला 2 ओवर कर दिया सिटी ने वेस्ट हैम के विकेट. मैं देख सोच रहा हूँ, मैंने कहा अभी तक किया ही नहीं अभी तक. अरे अभी तो चेंज किया ना स्कोर. मैं अरे हाँ मतलब आदित्य अभी आपकी You're on mute. मी नहीं यार, मिस्टर डेविड. सादिक जी. No, I'm not. हाँ नहीं, मेरा वो शादी भाई mute क्या? हो गया था. कोई नहीं. हैव यू सीन रूडिगर्स इंटरव्यू यस्टरडे? इंटरव्यू तो नहीं देखा मैंने, लेकिन आई थिंक हिज परफॉर्मेंस ऑन द पिच spoke for itself. I don't think I need to see उज्जवल, लेकिन कुछ बोला है. I think I read something. I think I read somewhere that he said that he's not leaving because of the club problems, with the new owners and all. That's what he had. I think yes, so. yes. Something to I that read that effect. as Something to that effect. He said that the reason is not that why he's leaving. He kind of valued both the teams, so he said which team kind of thing. So he kind of valued both the teams, that Real Yeah, Madrid, Chelsea. exactly. That's fair enough, absolutely. भाई ऋषिकेश, बार-बार ये आप डाल रहे हो कमेंट, स्पैम मत करिए, मैं पढ़ रहा हूँ. आई थिंक व्हाटएवर द रेलेवेंट कमेंट्स सर हम हाईलाइट कर रहे हैं. और अगेन थैंक यू फॉर जॉइनिंग, लाइक आई ऑलवेज से. So where were we? We were basically in midfield, Silva, Rodri and De Now Bruyne. front यहाँ पर three. दिखाई देते हैं. Yeah. Quickly, क्या है team of the season for people out there who are watching? This is what the team of the season in Premier League is as of now. हमने जो select किया है पैनल और चैट ने मिलकर. Again, आप कमेंट कर सकते हो. So whatever you feel. लेकिन this is the Premier League team of the season अभी तक. यार मैं wrong वाला highlight कर दिया. चलो कोई नहीं. तो forward 3 तो I think they might pick by itself, लेकिन quite easy रहने वाला है. But let's see. We'll go one by one again. David, without anyone saying anything, you tell All me three. what are your All thoughts? three. I would go Son on the left. Son on the left. Salah right, and I would go Ronaldo up top. Everyone will be like ditto, I think. I think Ronaldo and De have kept United where they are. Yeah, but I have my Because of the two players, they have stepped up completely. I have something against Ronaldo. I mean, I don't like the off-ball movement and all that stuff. I don't think he'll fit that. he will fit any team. I know that, but yeah, I want someone who's pressing all the time. Okay, see, the one thing is, this is one place where you say United bias, you say whatever, matlab, statistically speaking, not just on terms of goals and assists,
Cristiano Ronaldo has won us 12 points. De Gea has saved us 13 points. You minus 25 and we are in the relegation zone right now. We are on 33. You minus the 25 out of the 58. We are on 33. We are below Burnley. अरे बहुत लोग रीज जेम्स का पूछ रहे हैं भाई परफॉर्मेंस की बेसिस पे लिया भाई बहुत अच्छा। अरे यहाँ उससे पहले कि ना थोड़ा चैट बिगड़ जाए ना, मैं यहाँ पर काटना चाहूंगा आप लोगों को, सॉरी, लेकिन रीज जेम्स जो लोग यार आप लोग चैट आप इन्वॉल्व होते नहीं हो पूरे समय, आप आते हो लास्ट में और आपने कमेंट डाल देते हो। हमने काफी अच्छा डिस्कशन किया भाई ट्रेंट, रीज जेम्स और वॉकर के बीच, तीनों में के बीच में। तो यहाँ पर यार क्विक वन लाइनर बोल दीजिए उदय एंड सादिक भाई, आप anyone, Reece James, why was he picked over Trent? And for me, it's a very close thing between Reece James and Kyle Walker because fullbacks need to give that defensive work as well. लेकिन Reece James थोड़ा सा पीछे है, लगे एक नंबर पीछे है Kyle Walker से in terms of defense, लेकिन 3 या 4 नंबर आगे है उससे in terms of offense this season. तो इसलिए Reece James takes the thing. और injured दोनों ही रहे थोड़ा बहुत, तो Reece James 10 गेम मिस किया, Kyle Walker 5 मिस किया. Both have played more than 25 games this season, so it qualifies them. Exactly. तो वही qualification pass करके we are then judging on what they have done on the pitch and how they have mattered to their teams and what makes them different. लेकिन वही है 19-20 का मामला है भाई, मतलब Liverpool fans don't get disheartened, City fans don't get disheartened. Yes, please continue now यार, हम forward line की बात, रोनाल्डो की बात कर रहे थे शायद, तो even Mane is a good shout for the left wing, but I think Son gets it. नहीं, Mane is not the best. David Groh, I have you on the panel, man. I thought you'll take Kai Havertz and Mason Mount. Come on. Mane has actually regressed massively. Have to be fair, right? We're building a. Kai Havertz has done a madness, man. He's literally led Chelsea's line. What are you saying? Yeah, I mean he's done well this season for Chelsea, but I think what Son has done also for Spurs is also Son quite. Is the highest non-penalty goal scorer this season, right? Correct. मैंने तो actually already not only this season, bro. For people, I think even best the previous one. नहीं कोई record, he has shattered some record. He is the only player who has scored 21 non-penalty goals overall Premier League. कोई ऐसा कोई stat निकला है? I think you should check it. I think शायद 3 दफा या कुछ ऐसा स्कोर किया उसने. मैं देखता हूँ. More than 20 non-penalty goals 3 सीजन में उसने स्कोर किए हैं. 3 किया है? नहीं फर्स्ट टाइम है सादिक भाई. फर्स्ट टाइम है कि नॉन पेनल्टी गोल इतने मारे किसी ने, देखता हूँ. आई डोंट थिंक ये हुआ है, मतलब इन द मॉडर्न एरा समथिंग इज देयर, मतलब 20 एंड नॉन पेनल्टी गोल्स में थोड़ा है उसका. ये सही कमेंट्स कर रहा है, मतलब आई लाइक दिस कमेंट्स. सॉन एंड साला फॉर स्पर्स. अच्छा फॉर स्पर्स. हां फेयर इनफ. भाई वे काफी आउट हो गया भाई, भाई मैंने वही देखा था. यहाँ पर एवर्टन ब्रेंटफोर्ड शुरू हो गया फॉर पीपल आउट देयर इंटरेस्टेड. लैम्पार्ड स्टैंड्स 17 overs 150 for 5 Rajasthan, so looks like predictions might be near, so 180 190 के बाद आराम से मार लेगी. Diaz, Salah, Son, Foden is a shout. लेकिन प्रीमियर लीग में he done enough. He has actually crucial 3 pointers. I remember his goals to the end. Come on, Ankit. I think I'll go with Son on the left, Salah on the right, and Ronaldo बोलना ही पड़ेगा मुझे. Ronaldo up front. You don't have an option though. There, come on. मतलब मैंने actually Dan James up front. For your own personal safety. Danny Welbeck. Yeah. But this season, I mean, Ronaldo ने मतलब प्रूव भी किया है भाई. Undisputed. Yeah. करते Can't argue with that, yeah. मतलब he has literally saved our season भाई. Completely. ये बता रहा हूँ ना, रोनाल्डो डे गया 25 पॉइंट्स, मतलब मिल के 25 पॉइंट बचाए उन्होंने हमारे सीजन. सादिक भाई ये क्वेश्चन ले लीजिए क्विकली हो सके तो. थॉमस टुखल का इतना भी अग्रेसिव प्लेइंग स्टाइल नहीं है, बट इट्स जस्ट लाइक व्हाट आई हैव सीन इज के चिलवेल एंड रीस जेम्स आर लाइक सॉर्ट ऑफ वेरी बल्की इन द शोल्डर एंड बैक एरियाज. मतलब रीस जेम्स आप देखो अब जब वो आया वापस, ही इज लुकिंग मोर like we usually make fun of a person like Raheem Sterling for his hips and all those things, but that is a very good body type for a footballer, especially someone who has to cut in so much, move so much. Your hips and your hamstrings have to be really big and strong. Same with Reece James. If you see Reece James now, his play style, his movement style,
is a little different as compared. He's not running as straight up and down. तो आपको थोड़ा सा change करना पड़ता है अपना style. तो it's a little bit of that and a little bit of your medical staff also. I think Chelsea has to have a look at that. Yeah, that's something that वो इस सीजन में कुछ coincidence नहीं बोल सकते, इतने सारे problems है, especially FA Cup के final के पहले. So yes, we'll come to other topics as well for sure. We should make the worst CPL. चलो वो भी कर लेंगे, टाइम रहा तो देखते हैं. मतलब वो ला लीगा पर भी आएंगे और UCL पर भी आएंगे. But David, I know that you have to go, bro. Yes. So and Sadiq bhai as well, I believe. So again, before going, मैं दिखाई देता हूँ team people. Let's see. और I know that we are going to have the Milan match and we're going to have Anshuman joining in hopefully in some time. यार ये comment निकाल देते हैं पहले, सबसे पहले quickly. I'll just try and show the team of the season. Again, people, you might have different opinion. It's okay, perfectly fine. We are not kind of claiming that you're wrong or right. लेकिन this is our team of the season for the EPL. ठीक है, हमने पैनल ने जोड़ के बनाया है ये सीजन का. तो अगेन आप कमेंट करिए इस पर और आपका भी टीम ऑफ द सीजन बताइए क्या है EPL के लिए, और हम UCL टीम ऑफ सीजन भी करेंगे इन कोर्स ऑफ टाइम और ला लीगा एज वेल. लेकिन हाँ, डेविड, फर्स्टली please go ahead and share your channel details, bro, and then where can we find you? I have 2 channels. One is David Antau Sports and the other one is just David Antau. Do check out both. Sports is of course only I make Formula 1 and football videos over there, and the other one is just like lifestyle videos. So yeah, do check both those channels out. Okay, perfect. And David, thanks a lot for joining. Yeah, as always. thanks for having me, man. Thanks for having me. Hopefully we win, man, in the Chelsea women thing, as in it's Yeah. still too all extra time going on. But yeah, big up, man. Take care. Nice meeting you, Sadiq. Yeah, nice. चलो मिलते हैं यार, मिलते हैं definitely. Okay. David Sadiq quickly, and people, yes, do check out his channels, and we have Anshuman as well who's just joined in. Let's get Anshuman and Sadiq. Hi. हेलो भैया. हाय. सादिक भाई यहाँ पर बाय बोल रहे हैं, लेकिन अंशुमन हाय बोल रहे हैं. लेकिन सादिक भाई पहले तो यार थैंक यू आने के लिए, as always, you know it. भाई last words यार, as the season's gone, United का एक ही बंदा हो सकता है. हाँ, वो भी है, fair enough. जैसा हमारा सीजन गया, यूनाइटेड का एक ही रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है टीम में. ज्यादा हो गया तो कोई नहीं. सादिक भाई will come back in the future, but again आप जानते ही हो, is always welcome. Sadiq bhai, but seriously, man, on a serious note, you really think that it's Liverpool's year, or you think Man City abhi bhi hai na? They should win that last game. यार, honestly, this is the first time I was कल तक तो I was thinking that probably Liverpool is going towards the Leverkusen route. Second in all competitions, in all the 3 big ones. Correct. But the way अचानक से City has dropped points, and now it's that sometimes you have to see the story in sports. Steven Gerrard slipped 6 years back, missed out on the title. He's now the manager of a team that's going up to City, who can probably win that game, and if Liverpool wins the 2 games, gets them the title, and not just the title, gets them in the race for a unprecedented quadruple. तो उस तरीके से जब आप चीजों को देखते हो, and someone who sees things in that perspective, डर तो लग रहा है. सच्चाई तो वही है, मतलब whether we like it or not, मेरे लिए तो दोनों ही अच्छे आउटकम्स नहीं है, सिटी या लिवरपूल, लेकिन the lesser of the evil right now is City. Okay, fair enough. I'll take that. Between the devil and deep blue sea, and of course Sadiq bhai is a huge Brazil fan, as you know as well. तो हम definitely बात करेंगे इंटरनेशनल फुटबॉल. आई थिंक समर में सादिक भाई साथ डिस्कस करना है, लेकिन सादिक भाई अभी होगा ना, नेशंस लीग स्टार्ट हो रहा है जून के फर्स्ट वीक से. हाँ, मतलब वही एक तो और अपना ये I have a biggest match to sit and watch that day. UAE versus Australia in the playoffs for the World Cup qualification. Oh, right. हाँ, वो तो हम भूल ही गए, वो भी बाकी है. Right, exactly. वो UAE ऑस्ट्रेलिया तो मुझे तो मतलब that's my home team भाई. Interesting. चलो anyway सादिक भाई, मजा आया यार, काफी मजा आया. एंड ऑफ कोर्स हम तो यार देखेंगे मिलान वाला मैच. मैं तो आप जानते हो मिलान को सपोर्ट कर रहा हूँ, अंशुमन का देखते हैं, आपको भी सपोर्टिंग. लेकिन वहाँ हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे. इंटर. चलो कोई नहीं, मिलते हैं यार सादिक भाई. चलो, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग. Okay, so Sadiq bhai, let's see if we can have also Baba joining. Anshuman, आपका शायद अटक गया है. I don't know if you are.
ओके नाउ अभी ठीक है, अभी ठीक है। आपका शायद कुछ इंटरनेट नेटवर्क का इशू है, कुछ नेटवर्क का इशू है भैया। हाँ कोई नहीं। आई थिंक उदय इज जस्ट टेकिंग अ ब्रेक, उदय विल बी बैक एज वेल होपफुली। लेट्स सी इफ उदय हैज मैसेज मी समथिंग, बट आई एम सीइंग ओके। अंशुमान यार, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यार स्ट्रीम। थैंक यू भैया, थैंक यू। क्या लगता है, मतलब सेम क्वेश्चन गोज आउट टू यू एंड ऑफ कोर्स द पीपल इन द चैट। यार क्रिकेट देख रहे हो आप? क्रिकेट वाला भी हाँ देख रहा हूँ, आप किसको सपोर्ट करते चल रहा हो? है मेरा कोई ऐसा। अच्छा अंशुमान, आपको चेक करना पड़ेगा, थोड़ा इंटरनेट आज इशू लग रहा है। आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी, और चैट आप ही बोलिए। ओके लेट मी मैसेज अंशुमान। Okay, no problem. I'm just messaging Anshuman. Give me a like few seconds. Let him come back. You know. Yeah, his video is stuck. Yeah. Uday, you might want to help me out here, bro. Let's see. I'm watching Everton versus Brentford. I think this match is also going to be कैमरा नहीं चल रहा क्या? नहीं, मैं अभी I'm just eating, so I don't want to be on Oh, the. अच्छा. Oh, no. Fair enough, bro. Fair enough. No problem. I'll handle it myself for the timing. But yeah, Anshuman is trying to come back. Let's see. He's just trying to come back. मैंने actually Anshuman आपको एक बार के लिए हटाया, लेकिन hopefully Anshuman is going to come back. And I've sent the link to Baba as well. Let's see if he's able to join as well. Let's see. अभी मैसेज भाई एक तो यार प्राइवेट चैट में कर दो मैसेज, कंटेंट क्रिएटर्स आपका अलग से मैसेज आता है, कोई नहीं। यार होता है भाई, होता है, टेक्निकल इश्यूज हैपन, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम। एनीवे थैंक्स सब लोग ज्वाइन करने के लिए। भाई फेवरेट इंटरनेशनल टीम बताना आदित्य, आपसे बात करते हैं अभी। चलो अब चैट से बात करते हैं, चैट बहुत देर से वेट कर रही है और आई नो यहाँ पर मल्टीपल मैचेस चल रहे हैं, चेल्सी वुमेन भी चल रहे हैं। बाय द वे चेल्सी ने स्कोर कर दिया है, I just realized it. Chelsea has scored the third goal in extra time. It is for real or what? It has just happened. Chelsea fans in the house. Sam Kerr. Oh, bhai. Sam Kerr has scored the winner. The biggest of big game players. Wow. Abhi to yaar, absolutely we are on basically in between the topics. Batata United. Netherlands. Yes, my favorite is Netherlands as well. Chelsea women 3-2. Sam Kerr. क्या ही तो बोले यार, लेजेंड। मतलब द चेल्सी मैन फॉरवर्ड शर्मा नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ। मतलब दिस लेडी हैज टॉट हाउ टू स्कोर गोल्स लिटरली। मतलब दिस लेडी ऑलरेडी हैज डन सो वेल। एंड बाय द वे पीपल हु डू नॉट नो, सैम केयर हैज रूट्स इन एशिया, शी हैज रूट्स आई थिंक इन इंडिया एज वेल। सो अगेन मतलब हैट्स ऑफ भाई, अंशुमन इज बैक बाय द वे। लेकिन चेल्सी वुमेन डेफिनेटली जेन्युइन अपलॉज। होपफुली इस बार हम रखे यार, डिफेंस थोड़ी सी है डगमगा रही है, लेकिन होपफुली हम रखे। अभी भी बाकी है काफी। आई थिंक टेक्निकली देयर आर 15 मिनट्स स्टिल लेफ्ट एंड लेट्स सी वी आर एबल टू होल्ड दैट। लेट्स सी। रिचार्लिसन, एवर्टन ने गोल मार दिया। रिचार्लिसन एवर्टन ने भी मार दिया गोल, ब्रेंटफोर्ड ने। रिचार्लिसन क्या? दैट्स माय क्वेश्चन। रिचार्लिसन looks like from the chat. You're able to hear me, right, Uday? Yeah, I can hear you. That's what I was asking, if you know who scored the goal. I think Calvert-Lewin. नहीं, रिचार्लिसन मारा। हाँ मैं चेक किया, रिचार्लिसन। एंड चैट थैंक्स यार, थैंक यू फॉर letting us know. Sam Kerr is a Ronaldo fan, so not surprising. Okay, interesting. Portugal and Man United. Okay, Argentina 168 for 6 in 19 overs. तो मैं यहाँ बात कर रहा था अंशुमन से क्रिकेट के बारे में क्विकली, बिकॉज हाँ क्रिकेट वॉच अलॉन्ग इज पार्ट ऑफ इट, वेरी मच सो पार्ट ऑफ इट। सो अंशुमन आप बोलिए यार, क्रिकेट आईपीएल में आप एक पर्टिकुलर टीम तो फॉलो नहीं करते, फिर भी एक होता है ना, दिल्ली इज योर एफिनिटी। कभी उस तरीके से नहीं, मेरा हमेशा से वार्नर रहा है, ठीक है, तो वो जहाँ तो एसआरएच और दिल्ली काइंड ऑफ। हाँ मतलब ही इज बेसिकली द गाय हु मेड मी वॉच आईपीएल। मतलब वो जब शुरू में आया था, यू नो, ही मेड हिज डेब्यू ऑस्ट्रेलिया से, जब उसने किया था 89 डेब्यू मैच में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, एंड दैट टू विदाउट प्लेइंग अ गेम। मतलब वो एक होता है ना कि यू वॉच दैट प्लेयर एंड लाइक उसके बाद दिल्ली ने उसको आईपीएल में लिया एंड ही वाज एब्सोल्युटली फेनोमेनल। बट ठीक है, दिल्ली के साथ हमने देखा है दे लेट द बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स गो, चाहे वो एबी हो, चाहे वो वार्नर हो, गंभीर हो। तो आई रियली वांट दिल्ली टू, मतलब उस तरीके से नाउ दैट ही इज बैक, सो आई वांट हिम टू परफॉर्म। चलो देखते हैं, चांसेस लग तो नहीं रहे हमारे, बट मैं बाय द वे रिप्ले देख रहा था, उदय इज राइट यार, मतलब इट ऑलमोस्ट टच्ड क्या Calvert-Lewin का लगा है गोल एक्चुअली।
हाँ मतलब वो टच लगा ना, मुझे भी लगा मुझे, बट अगेन वो जस्ट अबाउट टच हुआ था काइंड ऑफ थिंग. तो लेट्स सी whom the I think they have still officially given to Richarlison only from what I see, but again Yeah, doesn't matter yeah, yeah. for Everton. Everton gonna win the champ. सेफ एनीवे. मैं आपको पहले भी बोला था अगर याद हो अंकित भैया, I told you ये बच जाएंगे. ये इनकी क्वालिटी है, you know, they are going through a bad phase, but इनके आसपास वाले जो बंदे हैं ना, they are not good enough. एग्जैक्टली आदित्य. तो यार मैंने अब कमेंट्स देख रहा हूँ ना, तो यहाँ पर एवर्टन को आज अगर जीतेगी दे आर सेफ. हाँ, बॉटम लाइन. तो आई थिंक दे आर गुड एज थिंग्स स्टैंड. एवर्टन आर सेफ. आदित्य तो आप चैंपियनशिप की बातें मत करो अभी फॉर लैम्पार्ड सेज दिस. ये गेम के बाद भी they have 2 games अंकित भैया. This game, after this game they have 2 games more. लेकिन एक आर्सेनल के साथ है ना, एक आर्सेनल के साथ है, वही है थोड़ा. मतलब जिनके साथ भी हो, when you are playing for your survival, और तो उस तरीके से you know you show up. You do show up, but Everton की प्रॉब्लम है एक तो Iwobi और इनकी मिड लाइन बहुत, they are not as creative as they should be. Doucouré and Allen don't offer you as much creativity as much they offer. Physicality बहुत देते हो, लेकिन creativity के मामले में रिचार्लिसन अकेला रह जाता है आगे. Gordon उसको हेल्प करता है राइट लेफ्ट पे. Calvert-Lewin is back now, so he is also out there. Calvert-Lewin is also like a target striker. I don't consider him to be a good ball player also. Dribble भी उसकी कोई खास नहीं है. मतलब on the ball he's not very comfortable. He's more of a person who can finish games for you. I feel, you know, he's a proper number 9. अरे मैच हो गया क्या चेल्सी वुमेन और मैन सिटी वुमेन का? यार जो भी देख रहा है बोलिए, थोड़ा टेंशन है यहाँ पर. 3-2 is what the score was. Let's see. We are let me change the score यहाँ पर. तो अभी एवर्टन आर लीडिंग 1-0. Everton are leading 1-0 and we have Chelsea women definitely leading Man City from what I see. But again, anyone who's watching the match in the comments, please let me know क्या हो रहा है. अगर आप लोगों को एक्सेस है, मेरे पास एक्सेस नहीं भाई देखने का वो वाला मैच. बाकी तो देख रहा हूँ मैं certainly. तो अभी यार definitely we are hoping that we are champions in FA Cup Women's again. But हाँ मिलान भैया. वो भी 15 मिनट बाकी है ना टेक्निकली, हम देखेंगे उसके में. तो यार हाउ डिड यू फाइंड पेप्स रिएक्शन आफ्टर द मैच? आई फाउंड इट वियर्ड. भाई वियर्ड क्यों भाई? मतलब हाउ वुड ही रिएक्ट मटाटा यूनाइटेड? वियर्ड ही करेगा ये. हाँ मतलब एनीवन वुड बी इरिटेटेड, एनीवन वुड बी लाइक काइंड ऑफ डजंट नो हाउ टू रिएक्ट भाई. मतलब दे हैव रियली टेकन थिंग्स टू टास्क और लिवरपूल हैव बीन देयर ऑन द नोज. आई नो कुछ भी करे भाई, लिवरपूल हमारे यहाँ है. मतलब तो एक वियर्डनेस आएगी और चैंपियंस लीग में भी आई थिंक इसने झेला है. So I think you can understand to some extent, to give him the benefit of doubt कहीं तो. 3-2 प्रेडिक्ट किया था भैया ये गेम का स्कोर मैंने, वेस्ट हैम वर्सेस सिटी. महाराज इतना बड़ा क्या ही बोलूं मैं, साला पेनल्टी मार जाता तो चैन से सोता मैं बिल्कुल. एक मिकेल एंटोनियो का मिस देखा था, 1-on-1 था वो कीपर के साथ. प्रेशर के अंदर हमेशा क्रम्बल करता है वो, स्टिल उसको देते हैं पेनल्टी लेने. मिकेल एंटोनियो का चांस देखा था तुमने? मिस किया था उसने 1-on-1 एडिसन के साथ. हाँ वो भी काफी क्लोज था. वो चिप करने गया उसको. यहाँ पर यार चैट क्विकली यार क्योंकि ब्रेक है तो क्विकली मैं यहाँ पर टिप्पणी देना चाहूंगा क्विकली. आरआर हैज स्कोर्ड 178, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स फॉर आरसीबी, दिल्ली, पंजाब एंड आई थिंक एसआरएच आल्सो दे वुड नीड आरआर टू लूज आइडियली स्पीकिंग. तो 178 179 इज नॉट अ रियली डिफिकल्ट टोटल. लेकिन लखनऊ का जो लास्ट मैच में था परफॉर्मेंस ना, उसके मुताबिक तो मैं बोलूंगा लखनऊ विल नॉट बी एबल टू स्कोर दिस. आई नो लखनऊ आल्सो बैट डीप टेक्निकली, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा माय प्रेडिक्शन आफ्टर द फर्स्ट इनिंग स्कोर आई फील दैट हाँ दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ आरआर लॉस. I am seeing RR to win this game, but anyway, panel yaar, if you want like to add, like first of all, Anshuman, whom are you seeing yaar? 4 teams in the IPL playoffs. एक तो हो गई खैर, गुजरात is already there. देखो दो तो ऑलमोस्ट जा चुकी. नहीं लखनऊ का अभी टेक्निकली नहीं गई है ना. लखनऊ if they do वैसे if you are asking for 4 तो मेरे ख्याल से GT और LSG तो ऑलरेडी है ही वहां पे. ये आरसीबी का थोड़ा पंगा इस वजह से है क्योंकि दे हैव देयर रन रेट का इशू. ये जब हारते हैं तो ये इतनी बुरी तरीके से हारते हैं कि मतलब पूछो ही मत. I just feel that with the experience of Warner and Marsh, अगर ये दोनों अगर थोड़ा और खींच जाते हैं तो आई थिंक दिल्ली might just sneak in, क्योंकि इनके पास बॉलिंग है. You know they can get their job done in the bowling department. 150 160 तक ये रोक सकते हैं लोगों को.
बट फिर वही है कि बैटिंग देन टॉप 4 हैवी है, यू नो. अगर भाई वो रेड पहले कार्ड, की सॉरी यार अंशुमन, एक मिनट, रेड कार्ड मिल गया भाई एविडेंस के डिफेंडर को. अरे वो सब छोड़ो, अभी सब बंद, रेड कार्ड छोड़ो, आधार भाई. छोड़ो, सब चीज. नहीं 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 नहीं, तुम्हारी बात नहीं है. मैं यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं चाह रहा अभी के लिए. द डिस्कशन हैज टू बी चेल्सी वुमेन, मैन. वी हैव जस्ट बीटन मैन सिटी. नो इट्स हिस्टोरिक. Back to back, man. We are back to back WSL champs. We are back to back FA Cup champs. Come on, we have created history. Chelsea अंकित women भाई have कह रहे हैं created history. चैंपियन एक कप तो मिल जाए मुझे. And not just that, it is the performance. एक है, हाँ, defense kind of weak थी, but they came back in dire straits. They came back. You know, एक last minute goal can be a put off. मतलब Liverpool fans know it about it. They have dealt it recently, and they have Sam Kerr coming scoring that brace by Sam Kerr. Really, मैं बोल रहा हूँ, I mean it. She deserves a statue. Even in these last 2 years, she has shown she deserves a statue. And I'm telling it for real. एक real है. She is an example for all Chelsea, you know, all forwards in general, even for women football. She has done so much in women football in 2 years that a lot of the people haven't done. So definitely, you know, I would give that, you know, platform to Sam Kerr and Chelsea women. And yes, absolutely, Chelsea should compensate for Chelsea men. Well, again, they are the only saving grace. I remember even last year, जब हम लोग FA कप हारे थे ना, पता नहीं आपको याद है कि लेस्टर के साथ जब हारे थे, I think it was around I think probably the same day we played Barcelona women, right, and who are probably the best in the world, or we lost that game. तो इतना डल थे ना, मतलब the women were so down, the men were so down, but again, you know, it is women who show it that they have come back with, you know, trophies, so they need it absolutely. Yeah, absolutely, I agree with that. Jon Snow 264 against Gujarat Lions, also masterpiece. Fair enough, thanks for joining. But हाँ, please, sorry to cut you guys. And Everton का भाई अभी आते हैं भाई. उदय आप बोल रहे थे किसका रेड कार्ड है? Braithwaite खिलाया इस ब्रांथवेट का. लैम्पार्ड भी बोल रहा मैं रेलीगेट करा के ही मानूंगा. भाई क्रिस्टियन एरिक्सन की फ्री किक देखी यार. ओ पोस्ट लगा ना? मिलान गेम लगा के नहीं, हाँ, जस्ट 1-2 यार्ड से बच गया. नहीं मिलान के भी देखेंगे ज्यादा, लेकिन अभी तो शुरू नहीं हुआ है ना. खैर 9:30 है ना अंशुमन. आ गया. हाँ, मतलब गेम किक ऑफ तो नहीं हुआ ना, मतलब नहीं अभी तो 9 मिनट है. हाँ, तो we'll speak about that. पूरा सैन सिरो भरा पड़ा है भाई, पूरा रेड दिख रहा है यहाँ से. हाँ, यहाँ पर आई होप यू guys are able to hear me. यहाँ पर as usual थोड़ी बत्ती चलेगी, लेकिन आएगी यार 2 मिनट में. You can hear me fine. I'm hoping. ठीक है ना? Panel, I'm asking you, am I audible? Yeah. बिल्कुल Audible. आवाज क्लियर है, कोई टेंशन मत. So let's go with the voice. I cannot nod much right now for the timing. Whoever is not like the stream, please like the stream भाई. सबसे पहले आप, मैं देख रहा हूँ people are dropping. स्ट्रीम बिल्कुल लाइक होते रहनी चाहिए जो भी आ रहा है. काफी लोग देख रहे थे to be honest, लेकिन I have seen that people have dropped. I'm guessing that lot of them were, you know, I don't know, maybe City fans जो खुश नहीं थे after the result. I can understand. लेकिन again, it is what part of football is. And again, it's a mega stream where we are doing. Milan are also on the brink of history. So let's actually back that. You know, इस area they deserve a lot as well, to be honest. Very interesting. और सेकंड इनिंग्स बाकी, अभी लखनऊ का हम बात करेंगे. एवर्टन का अभी रेड कार्ड मिला है, तो काफी इंटरेस्टिंग है. तो होपफुली एवरीवन लाइक्स द स्ट्रीम एंड होपफुली वील हैव, यू नो, कपल ऑफ पीपल मोर जॉइनिंग. बट अगेन, अंशुमन and Uday, thanks for taking the time, and rest of the panel as well. Give them a follow, please give them a follow. All the links are below, as you can see. Okay, we can also hear you and see you is what the comment should be here. Hopefully वापस नहीं जाए. Let's see. Also bottling IPL के सारे is a masterpiece. Okay, कोई नहीं. तो यहाँ पर आते यार. Again, I know Milan game is going to start अभी, लेकिन अंशुमान क्विक प्रेडिक्शन ले लेते हैं. मिलान का क्या लग रहा है? मिलान का they should seal the league tonight or Inter Milan will come back? I don't think so. आज नहीं. मतलब आज तो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इंटर का मैच आज है क्या? नहीं, आज इंटर का मैच नहीं है, आज तो पॉसिबल नहीं है. I just think Milan might be shocked the way they are playing recently. Atalanta is by shock I'm not saying they are going to lose the game, but I just see, you know, with this Atlanta team they have nothing to play for. They are just here to, you know, spoil the party. So for me it's going to be a draw. चलो कोई नहीं. That is the opinion of Anshuman. Again, मतलब I have a soft corner for AC Milan very strongly. Soft नहीं बोलूँगा, strong corner. No, I won't mind if AC Milan wins it, you know. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, but I just think that the way they have played last के 2-3 games अगर आप देखो, they have just somehow got over the line. ठीक है, I'm not saying Atlanta कोई world beating form में नहीं है, you know, they are having a terrible season अगर उनके standard से देखा जाए तो. But then again, Atlanta is a team you don't want to face when you are, you know, up there
जहाँ पे they have nothing to lose and you have everything to lose. तो वहाँ पे अटलांटा जैसी टीम you won't want to play, या फिर मोरिनियो जैसी टीम, एक जो कि आके बिल्कुल बस पाक कर दे, और एक ऐसी कि जो मतलब सिर्फ अटैक पे अटैक करती जाए, कि मतलब अगर आप 2 मार रहे हो तो हम 4 मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं. That's how Atlanta plays. चलो कोई नहीं, यहाँ पर ना मैं okay, so Uday I think has to go. No problem, Uday. So Uday, final thoughts, man. I'll take your prediction as well. AC Milan or Inter Milan, who's winning Serie A? And of course, Atalanta. I think AC Milan have higher chances and they should nip the bud tonight. अगर आज कर दिया उन्होंने तो बढ़िया है. बाकी I think AC Milan have been quite the revelation this season, but nonetheless I think Inter को सबने expect किया ही था before the season started कि वो जीतेंगे, but अभी रेस जारी है. एटलीस्ट इंटर शुड इंश्योर वो सारे गेम जीते जितनी पेंडिंग गेम्स हैं. एक ही गेम पड़ी है ना अभी, कितनी पड़ी है? 2 है. दो गेम मैं टेबल दिखा भी देता हूँ, टेबल दिखा देता हूँ फॉर योर बेनिफिट इफ यू वांट, बट हाँ सर्टेनली विल डिफरेंस है. 2 गेम बची है. Okay, so I hope people can see it. So AC Milan have 36 games, 80 points. Inter have 36 games, 78 points. Of course, technically आप बोलोगे यार नापोली का नहीं है, they cannot win. 79 ही होगा उनका. चलो, so I think those are the only 2 teams in the league जो कि जीत सकते हैं. But Atalanta के साथ what are score predictions today? Atalanta are a good team यार. I mean, this season obviously they have regressed a bit as per the last couple of seasons. जैसे how they rose from the ashes, but अभी देखा जाए तो मेरे हिसाब से ड्रॉ हो जाएगा मैच यार. मुझे तो लग रहा है ड्रॉ हो जाएगा. मतलब इंटर मिलान को चांस है. बेसिकली यू आर सेइंग दैट they might just win the third trophy just like Liverpool, ना? तो Liverpool and you have seen Inter Milan perform well against Liverpool, so I can see why you are saying that. तो कोई नहीं. They are a good story team. ऐसी बात, Inter Milan a very good team. तो उनको ठंडे में नहीं लेना चाहिए, थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई एसी मिलान को जीतना पड़ेगा ये गेम. ये जीत गई फिर तो ठीक है, फिर तो निकाल लेंगे ना उसे. कोई नहीं. मतलब अगेन थैंक्स अ लॉट Uday for coming as always a great sport, and of course congratulations again for having एक slim of a chance और to win the I know yesterday एक रोज ही दे रहा हूँ, but देखते हैं love more football people. Again मैं tag नहीं कर पाया हूँ for some strange reason because of technical reasons, but I don't know क्यों हो रहा है वो. लेकिन लाउड माउथ फुटबॉल आप देख रहे हो, नाम उदय का है, वहां पर इजी फाइंड है लाउड माउथ फुटबॉल. तो आप जाकर सर्च करिए, 1 सेकंड लगेगा, आप सब्सक्राइब कर दीजिए. बट इफ यू कैन टैग दैट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम उदय, जस्ट हैव इट चेक. मैं वही बोलता हूं, एक ही चीज बोलता हूं मैं भैया कि रिगार्डलेस ऑफ व्हिचएवर टीम यू सपोर्ट, ठीक है, व्हेन अ पर्सन इज आउट देयर बस्टिंग हिज लंग्स आउट, सुनने में कुछ नहीं जाता है. यू कैन आल्सो हैव ओपिनियंस अबाउट from different fans, to be honest. मतलब उस तरीके से जाके you can support those guys, simple as that. चाहे you are Chelsea fan, कोई Liverpool fan है, मतलब obviously banter is a totally different thing. ठीक है, वो हमेशा चलता रहता है. मैं आपके चैनल पे आता हूँ, यहाँ भी चलता है, मेरे चैनल पे आप आते हो, वहाँ पे भी चलता है. But end of the day, as we all say, it's just a sport. Ankit, sorry Anshuman, before I drop out, ये दुवान सपाटा वे पूछ रहे हैं लोग underrated. He is not underrated. I think his endurance is not enough for him to last an entire 90-minute game. वो थक जाता है बहुत जल्दी. और बहुत कितने मैचेस मिस किया for injury. That is a fact. वो I would back Uday's point. How many chances he misses in a particular game? अगर आप देखो जिस तरीके से chances बनाती है Atlanta, the number of chances they create in every game. अगर मतलब सपोज अगर उनके पास कोई ज़्लाटन जैसा स्ट्राइकर हो इंस्टेड ऑफ अ ज़पाटा, तो मतलब वो हर सीजन 30 गोल मारेगा यार. वो हर सीजन 30 गोल मारेगा. वो उनके पास है ही कहाँ. वो मिडफील्ड में भी उनके अटैकर भरे पड़े हैं. कहने को फ्रॉयलर या फिर डिरोन जो है वो डिफेंसिव माइंडेड है, बट उनको देख लो वो आधे से ज्यादा टाइम अटैक पे लगे रहते हैं आगे, तभी अटलांटा इतने गोल खाती है. एंड दैट्स व्हाई दे स्कोर एज मच, उस तरीके से मारते भी है फिर वो उसी वजह से. Yep, certainly. But again, thanks Uday for coming on. Thank you. Uday is taking people, but again, you are welcome to come back if you are interested. We are going to be streaming. मैं आ जाऊंगा बीच में, देखूंगा सीरिया, देखूंगा बीच में कर दिया है. मैं बैठे अभी सब्सक्राइब कर देता हूं मैं. चलो, yes, certainly helps. And again, people, Everton 1, Brentford 0. क्या लगता है भाई, Everton का ये सीजन होने वाला है where they actually still again get relegated or not? Down to 10 men though, वो एक प्रॉब्लम है, and I know that that was not expected. लेकिन now let's move on to the Milan game as well. Yes, Milan are playing Atalanta और Anshuman, we are going to be talking and reacting to that. लेकिन उतना ही नहीं,
हम एक्चुअली एक टीम ऑफ द सीजन भी किए थे। अंशुमन, आई डोंट नो आपको मौका मिला स्ट्रीम देखने का? डिड यू गेट अ चांस? अर्लियर वी एक्चुअली पिक्ड एक बढ़िया पैनल था और वी पिक्ड अ टीम ऑफ द सीजन फ्रॉम द ईपीएल। इस ईपीएल की कौन सा था? एंड मैंने अभी तो मैं दिखाने वाला हूं आपको थोड़े देर में। लेकिन अगर पीपल हु हैव जॉइंड इन द चैट लेटली, आई विल शो इट टू यू गाइस आल्सो। लेकिन अगर आप लोग भी अगर साथ दे, अगर वी एवरीवन हु वाज वाचिंग शेयर्स द स्ट्रीम ऑन सोशल मीडिया and of course also like the stream, we will have more people so that we can watch the game. But not just that, हम actually करने वाले हैं एक team of the season in general, that might include La Liga, that might include Champions League performances, that might include anything. ठीक है? तो यहाँ पर आई नो काफी रिक्वेस्ट आए थे ला लीगा टीम ऑफ द सीजन, लीगन को पूछा नहीं था फिर भी बोल देते चलो, बुंडेसलीगा। तो यहाँ कोई बायस नहीं है, वी विल बी डूइंग टीम ऑफ द सीजन। And yes, 250 likes done. Let's now target 300 likes. Absolutely. Please subscribe to all the channels in the link, including Anshuman's The United Road. I've been there many times. Trust me on that. This guy deserves a lot. तो हाँ अंशुमान, ओवर टू यू भाई। मतलब अभी बिफोर द मिलान गेम मैं टीम दिखा रहा हूँ, लेकिन टैक्टिकली क्या लगता है भाई, मिलान विल बी सेफ? मतलब दे हैव बीन सेफ इन मैचेस, बट अगेन वुड यू सी द लाइनअप्स एंड देन यू वुड से दैट मिलान अगेंस्ट एटलांटा इज बेटर दे अटैक? they're defensively दोनों की टीमें थोड़ी फुद्दू हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो वर्ड यूज करूं तो मैं, क्योंकि they are both struggling. आप देख लो कलूलू और टमोरी। एज अ मिलान फैन इट्स लक टमोरी इज हैविंग अ ग्रेट सीजन, बट अगर आप फिर कलूलू को देखो तो डिफेंसिवली ही इज एवरेज। ठीक है, फिर आप साइड में देखोगे थियो हर्नांडिस अटैकिंगली फैंटास्टिक, डिफेंसिवली दिखता नहीं है वो मार्कस अलोंसो है मिलान का। ठीक है, क्लैबरिया का भी वही सेम सीन है। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली, मतलब I honestly feel कि अगर यही मिलान की टीम with 3 at the back खेलती, those two guys would have been world beaters. मतलब imagine थियो हर्नांडिस को सोचना ना पड़े कि भाई उसको पीछे जाके डिफेंड करना है, वो बस तो बॉल लेके आगे बढ़ जा भाई। सेम विथ क्लैबरिया, दोनों के दोनों सेम है, बट हाँ they have a particular system, they play with 4-2-3-1. So paper पे obviously Milan, when you look at the paper, player by player obviously they are a bit better, but with that pressure कि भाई अगर नहीं जीते तो all of a sudden Inter is on your heels, तो वो चीज बहुत ज्यादा इनको हर्ट कर सकती है। So as I said, I am taking it as a draw or Atalanta win. Fair enough. अरे भाई सब लोग जो देख रहे हैं ना, एक तो 30 लोग देख रहे हैं, एक बार बताना चाहूंगा, मतलब अंशुमन तो ट्विटर के गुरु है, मतलब इनको तो पता ही है। खैर मतलब आई एम स्टिल नॉट देयर, बट लेकिन हाँ हम लोग ट्विटर पे भी है ऑलमाइटी ब्लूज एफसी करके। आजकल पता नहीं नया ट्रेंड हुआ है यार, मैं पीपल हु आई डू नॉट नो आर टैगिंग मी, व्हिच इज ग्रेट टू नो। लेकिन भाई मैंने भी ट्वीट किया तो आप रीट्वीट कर दिया करो थोड़ा अगर हो सके तो। मैं भी ट्वीट ही करने जा रहा था तब मैंने नोटिस किया ये बात। ठीक है, तो अरे एक्चुअली भैया वो लिंक भेज दिया करो, क्योंकि वो 50 लिंक होते हैं ना, वो उसमें कहीं ना कहीं या फिर टैग्ड होते हैं या फिर कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, वो मिस हो जाता है फिर। हाँ बिल्कुल नहीं अभी देखो, अभी यहाँ पे भी देखोगे पूरे नोटिफिकेशन आ रखे हैं। अब इस पे क्लिक करूंगा ना, ठीक है, अब ये सारे के सारे, अब देखो 25 तरीके के नोटिफिकेशन, सब उसमें पता नहीं लगता, कभी कभी वो मिस हो जाता है फिर, या तो फिर बाद में कोई इस पे कमेंट करेगा तब जाके वो दिखेगा कि अच्छा ये भी है। करेक्ट। तो anyway, congrats to Chelsea women. Again, people in the chat, आप comment करिए यार, हो गया ना मैच? मतलब I hope I'm not tweeting early. मतलब I know I'm doing multiple things at once, इसलिए congrats to Chelsea women. Certainly makes us proud यार, मतलब क्या ही तो बोलूं मैं, that is a different level. But again, हम बाकी चीज भी कवर करें, तो मैंने ट्वीट किया है अभी। Again, people अगर आप रीट्वीट कर सको तो बढ़िया रहेगा, so that we have more people joining till the time। यार मैच शुरू हो गया ना, आप देख रहे हो ना टीवी पर? कहाँ देख रहे हो? मैं वोट, अरे वोट के भाई साहब हो क्या? मेरे पास वोट है नहीं, ठीक है, तो मैं स्पोर्ट्स रेटिंग का इंतजार करता हूँ। स्पोर्ट्स रेटिंग में क्या होता है ना, पहला जो मैच चलता रहता है वो कंप्लीट जब तक होता है तब तक दिखाते नहीं है, वो प्रॉब्लम है। तो अंशुमन यार मैं लिंक ढूंढता हूँ, कोई नहीं, गिव मी 2 मिनट्स। बट अगेन अंशुमन आप कुछ कमेंट्स ले सको तो मीनवाइल, अगर आपको कमेंट दिख रहे तो इफ यू कैन जस्ट एड्रेस देम। बिल्कुल। जॉन स्नो इज आस्किंग कांट इट यूनाइटेड हैपनिंग और नॉट? एब्सोल्युटली नॉट. And if we make that move, that would be a typical Ed Woodward move. Now that he is gone, I don't expect it. If Liverpool draw with Southampton, will title be over? क्या? बिल्कुल नहीं. Football creaks.
it won't be over. It will absolutely go to the last day, and then Liverpool will have to score a lot of goals in order to win, and they will have to hope that City loses as well. So because of the draw, if City would have won it, obviously it would have made it easier for them. But now that they have draw, in the next game anything could happen. चलो मैं अटलांटा वाले गेम्स को बताता रहता हूँ. 3.5 minutes में है. And Atlanta is pressing like crazy. मैं लिंक ही ढूंढ रहा हूँ. और 1 मिनट लीजिए यार, आप थोड़े पुराने कमेंट्स ले लीजिए, मैं आ रहा हूँ. कोई दिक्कत नहीं. Matata is asking when is the next stream. Matata most probably tomorrow. मैं न्यूज का थोड़ा वेट कर रहा हूँ क्योंकि यूनाइटेड जैसा खेलती है उसमें तो मिड स्ट्रीम में टीवी बंद करने का मन कर देता है, बट कोई बात नहीं. अब तो यूज टू हो गया ये सीजन. अब जल्दी खत्म हो, एक गेम बचा है क्रिस्टल पैलेस वाला. Guys, Aditya की बात सुनो. It's a request to all viewers to please subscribe to the YouTube channels. Obviously, as I said, regardless of the team you support, you follow, showing up on the streams, it's a huge thing for anyone who's out there trying to put up content for you. जरूरी नहीं है you are going to like everyone's opinion. You might disagree with some of them, you might agree with some of them, you might laugh at some of them, but that's how it is. So चलो फाइनली मुझे स्ट्रीम मिल गया. फाइनली मिल गया भाई. फाइनली आईपीएल मैच स्टार्टेड. यस एब्सोल्युटली. तो मैं टीवी में आईपीएल देख रहा हूँ, मैं लिंक में मिलान वाला देख रहा हूँ. चलो ठीक है. और ये अंशुमन भी देख रहे हैं, तो अंशुमन मुझे बोलते रहेंगे. एंड एवर्टन ब्रेनफोर्ड भाई जो भी देख रहा है बताइए वहां पर, क्योंकि 1-0 है. 1-0 है ना. चलो ये रेड कार्ड ब्रेंटफोर्ड के लिए इट्स नॉट गोइंग टू मेक इट इजी. नाउ दैट ये बिना लीड के इनको रेड कार्ड मिलता ना, they would have been huge trouble. But now that they have one goal to defend and with the midfield they have, ये मैनेज कर लेंगे. ज्यादा से ज्यादा कुछ ब्रेन फेड मूवमेंट ना हो तो कोई नहीं. 179 टारगेट है ना लखनऊ का. 179 टारगेट है, तो वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा मैच. तो साथ में करने वाला हूँ. लेकिन हाँ, AC मिलान ऑब्वियसली आर 0-0 विद एटलांटा. तो मैं स्कोर अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि पीपल हु आर नॉट एबल टू वॉच आर एबल टू गेट द स्कोर एट लीस्ट. तो यहाँ पर है पूरा स्कोर. आई होप कि यार मैंने मिस नहीं किया हो. आप देखिए नीचे स्कोर डाल दिया सब लोग. आई पुट अ स्कोर लाइन आल्सो सो दैट वो अपडेट करते रहेंगे एज थिंग्स चेंज. And yes, congrats to Chelsea women. Absolutely, that is the biggest news, biggest of all I would say. लेकिन हाँ, yes, will Lucknow win? नहीं, मेरे ख्याल से लखनऊ नहीं जीतेगी. It's a big score considering जो था ना उनका जो performance. इसलिए मैं बोलूँगा लास्ट मैच में काफी बैटिंग ने हद दिया. I don't think so. Absolutely, and yes, congrats. I do see them winning this game. वो एक जो होता है ना, all of a sudden you have that performance out of the blue. और क्या बढ़िया शॉट भाई, डिकॉक. They will take down the ground. They have to just make sure that they don't give wickets to चहल को नहीं देते तो बस. मैं वही चहल फैक्टर है. और ऑफ कोर्स यार मतलब बॉलिंग है तगड़ी आरआर की, चाहे कुछ भी बोलो. दे आर हैविंग गुड बॉलिंग यूनिट. और प्लस ये लखनऊ बैटिंग फॉर्म है नहीं इतनी लास्ट 1-2 मैच के देखे तो, जस्ट गोइंग बाय फॉर्म. तो बट हाँ, डिकॉक अगर चल गया ना भाई, डिकॉक राहुल इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग. दोनों में से एक भी चल गया तो गेम खत्म है. हाँ मतलब वो ये एंकर एक चाहिए उन्हें. और बाकी एवर्टन वाला गेम 1-1 हो गया भैया. अरे भाई यहाँ पर जैसे चैनल चेंज करता हूँ ना, आज क्या हो रहा है ना, एज सून एज आई चेंज द चैनल कुछ ना कुछ हो रहा है दूसरे गेम में. इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग हो गया वो. यहाँ पर थोड़ा फिजिकल गेम होते हुए रुक जा, अभी 1-0 ही दिखा रहा है. 1-0 दिखा रहा है क्या? वीआर देख रहा होगा. लेट मी सी क्या हो रहा है वहाँ. तो मैच टीवी पर भी आ रहा है ना, देखते हैं थोड़ा. यस एब्सोल्युटली. हाँ 1-1 है भाई. 1-1 है. ओन गोल कोलमैन ओन गोल पीपल. भाई आज ओन गोल्स काफी हो रहे हैं. बट नाइस क्रॉस मैन भाई. आई डोंट थिंक ये ओन गोल है. ओन गोल है, डेफिनेटली ओन गोल है. वो क्रॉस था एंड ओन गोल ये हेडर लगा ना. 100% ओन गोल है. मुझे लगा कि साइड से गया. Ankit, you and your panel should take back your words saying when Everton were winning that they are safe. No, aren't. अरे यार ये लाइट बार आ जा रही. यार एक बार देख लेते हैं मटाटे यूनाइटेड. अगर हम गलत है तो डेफिनेटली I'll take back my word. No two ways about
definitely chat. We are just fans man, हम पंडित नहीं है, देखते हैं मतलब we will look at the table again. मैं टेबल देखने वाला हूँ. अगर if you are saying तो definitely you must be saying the fact. So let's go with the table अरे again. भैया they are safe. Even if they lose today, they are safe. क्योंकि मैंने बोला ना साइड वाली जो दो टीमें हैं. हाँ. Okay, so Matata United, I think क्या बोलना चाह रहे हैं कि when Anshuman is saying they are safe means they will be safe. That's what he means. He doesn't mean that they are technically safe. लेकिन they are they will be safe is what the meaning is. तो देखते हैं. Atlanta on the attack, Muriel and brilliant defending. मैं देखने वाला हूँ यार. मैं I didn't want to show the table again because we are having multiple matches. लेकिन because we have been challenged, let's actually go with it because sometimes chat is also right. ना, we have to grade. चलो तो देख लेते हैं भाई. यहाँ पर है टेबल देखो. तो Everton as things stand 36 games. Okay, 37 points. Okay, and oh yes, there is a point. लेकिन नहीं. तो Leeds if they get 38 points they can be safe. लेकिन Burnley हाँ, I think he has a point. Certainly he has a point. He or she, I'm sorry, Matata United. लेकिन I think you have a point certainly. कि technically safe नहीं है, but वही है. With relegation teams आप expect नहीं करोगे कि last दो मैच में दोनों जीत जाएंगे. You know what I mean? Anshuman, that's what he meant as well. मेरे लिए तो in my opinion Leeds are going down. They somehow got a point as, but आखिरी गेम में so let's see how that goes. Yeah. कोई नहीं. यार, do you think that they will win against Crystal Palace? यार, Crystal Palace season is over. मतलब why not? There is possibly an argument saying that they might be not giving their 100%. That might be the only thing. लेकिन it will be interesting. Matata United, you have a point certainly. मतलब it will be interesting. यार यूवे किट नया वाला मैंने तो देखा नहीं है. To be honest, मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ 24/7 में आपके साथ स्ट्रीम कर रहा हूँ. आप लोग आया करो और आप लोग मुझे न्यूज देते हो, मैं फिर जाकर देखता हूँ. तो मैं अभी देखने वाला हूँ. थैंक यू सार्थक. मैं देखने वाला हूँ ये वाला. अच्छा रहेगा होपफुली. यार लेट्स गेट द लाइक्स अप एब्सोल्युटली. और मैच में क्या हो रहा है देखते हैं यार. टीवी पे आ रहा है कि नहीं. अंशुमन आप तो वुड पे देख रहे हो. मैं लिंक पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना, मैं स्ट्रीम पे भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ और उस पर भी कर रहा हूँ. तो थोड़ा एसी मिलान वाले में जो होता है तो बोल मैच में एब्सोल्युटली कुछ चल नहीं रहा. अटलांटा सेम ओल्ड, दे आर ट्राइंग टू प्ले ऑन द काउंटर. मिलान के पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर हैविंग द बॉल. Obviously they will have to do their job. 10.5 minutes. This comment ना, मतलब अगेन हम कल काफी बात किए थे आफ्टर द पेनल्टी शूट आउट ऑफ चेल्सी. आई डोंट थिंक हमें जज करना चाहिए ऑन पेनल्टीज. इट्स रियली, आप सोचो कितना प्रेशर होगा हमारे इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली ऐसा नहीं है कि टोटल हगा था पेनल्टी में. मतलब यू हैव टू गिव द गोलकीपर आल्सो. फैबियांस्की वाज गुड. मतलब दैट्स व्हाट आई वुड से. अंशुमन अगेन आप कुछ ऐड करना चाहो तो पेनल्टीज के बारे में. भैया मेरे ख्याल से you should have given the penalty to KDB. ठीक है, अब वो मेंटालिटी उसकी नहीं है, वो पेनल्टी लेना नहीं चाहता है या एक डेजिग्नेटेड आपने टेकर बना रखा है. दैट गाय मिसेस पेनल्टीज. उसने पहले भी मिस किए हैं. एनफील्ड पे सबको याद है जिस तरीके से उसने मिस किया था महारेज ने. सो इन द क्रंच मोमेंट यू गिव इट टू द गाय हु इज बेसिकली योर स्टार एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आई थिंक दे मिस द ट्रिक बाय नॉट गिविंग इट टू KDB or even Bernardo Silva. अच्छा, मतलब अगेन डिबेटेबल है ना अंशुमन, वो थोड़ा मतलब इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन आल्सो. हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू गिव इट टू द गाय हु इज बेसिकली टेकिंग यू थ्रू आउट द सीजन. ठीक है, महारेज ने गोल मारे हैं बट महारेज ऑलवेज ससेप्टेबल है पेनल्टीज पे. उससे 25-30 यार्ड से गोल मरवा दो, ही इज ब्रिलियंट. उसका जो फॉर्म रहा है एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. But when you look at his penalty stats, वो कुछ it's not mind boggling उस तरीके से नहीं है कि भाई ये बंदा ही लेगा तो लेगा. It's not like that. You should have tried, even given it, as I said, KDB और Grealish में से दोनों को दे सकते थे. Yeah, that's also. Sorry, Bernardo Silva, not Grealish हटा दो. KDB और Bernardo Silva में से एक को दे सकते थे. फेयर इनफ. अरे भाई मैं निकाल ही दिया यार आपके रिक्वेस्ट पर. ये निकाल दिया. यूवेंटस का नया किट है भाई. यूवेंटस का नया किट ऑफिशियल वेबसाइट पे है, तो ये ऑफिशियल ही है सर्टेनली. मतलब मुझे तो वाइब्स दे रहा है. इट इज गिविंग मी वाइब्स सर्टेनली. द फैक्ट दैट जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज द पार्ट. इट्स लुकिंग लाइक इलेक्ट्रिसिटी चल रही है इस शर्ट में फॉर मी. तो देयर इज अ वाइब. लेकिन मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ. I always like those simple stripes of Juventus. पता नहीं यार, मुझे वो Juventus that is निकलने वाला है, मैंने बोला नहीं अभी.
बोल दो कोई नहीं। ये तो टट्टी है। यार मतलब बिजली एवरीथिंग इज बिजली जा रही है ना, बिजली। इतना अच्छा शो बनाया है ये दोनों साइड से, और बेसिकली बीच में जी पे मतलब ओवरडू कर दिया है। अरे गोल भाई, अच्छा ब्रेंटफोर्ड मारने वाली एक और गोल लग रहा है। अरे एवर्टन आर रियली डिफेंसिव अभी। लैम्पार्ड इज गोइंग डूइंग एटलेटिको मैड्रिड, आपको लेकिन टीसीएसबी भाई थैंक यू। कोई ऑप्शन नहीं है। डिकॉक भी गया। बिल्कुल या गया हाँ डिकॉक गया। वही मैं जैसे ही चेंज कर रहा हूँ चैनल, कुछ ना कुछ हो रहा है पिछले मैच में। टीसीएसबी यार, बिग अप टू यू, मतलब पीपल डू फॉलो टीसीएसबी। काफी अच्छे फैंस हैं। आई नो दैट दे वुड लाइक रियल मैड्रिड टू विन द चैंपियंस लीग। देखेंगे, बात करेंगे सर्टनली। अंकित भैया क्या लगता है, सिटी बॉटल करेगी? फोटोन ये आज बॉटल करी है, आई वुड अग्री, लेकिन यार लास्ट मैच में नहीं करेगी। दैट्स माय ओपिनियन। जेरार्ड, आई नो लिवरपूल फैन, लिवरपूल प्लेयर, लिवरपूल लेजेंड, वो चाहेगा कि यार गिव हिज बेस्ट शॉट, बट यार टीम खेलेगी भाई एट द एंड ऑफ द डे। आई डोंट सी दैट हैपनिंग। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन अंशुमन, क्या लगता है? जस्ट प्रेडिक्शन। इनकमिंग थंपिंग। एस्टन विला गेटिंग थम्प। ये आई एग्री। मैं वही बोल रहा था कि सिटी को लाइफलाइन दिया खुद लिवरपूल ने। यू नो आई वाज एक्सपेक्टिंग सिटी टू ड्रॉप पॉइंट्स अलोंग द लाइंस। ये बिल्कुल वही सेम सीजन चल रहा है जैसा जिस टाइम पे लिवरपूल 1 पॉइंट से गई थी, जहां पे बोथ वेंट ऑन अ 13 गेम्स रन, और वो 1 पॉइंट जो सिटी के पास था वो सिटी एंड तक लेके चली गई। दिस टाइम इन्होंने लिवरपूल से टॉटनहम से ड्रॉप किया। दे शुड नॉट हैव। लिवरपूल का पॉइंट ड्रॉप करना एट एनफील्ड अगेंस्ट टॉटनहम बनता नहीं था, ठीक है, स्पेशली आफ्टर डोमिनेटिंग द गेम। अरे भाई क्या टैकल था यहाँ पर। बहुत फिजिकल गेम चल रहा है एसी मिलान एटलांटा फॉर पीपल वाचिंग, और आउट हो गया बाय द वे लखनऊ का एक और। इसलिए मैंने बोला कि लखनऊ नहीं चेस कर पाएगी, दे कैन नॉट। बट बटाटा यूनाइटेड, ग्रेट क्वेश्चन हियर। मतलब ऑनेस्टली मैं बोलूं, यू कैन नॉट कंपेयर द टू। The reason is when you are in a penalty spot, you are under the limelight of the entire stadium. You are under the limelight of literally everyone. मतलब I know even when you are scoring in that moment you are, but again it is a flow of the game. बाकी players भी है game में. Penalty में you are the only player in the game. ठीक है, तो there is far more limelight, far more pressure. So you cannot compare the two. Plus आप जब game खेलते हो, you are playing that game for 90 minutes. आप penalties 90 minutes के लिए नहीं लेते हो. तो if that 1 second judging a player would be unfair in my opinion. But again in modern day football people practice everything. तो ऐसा नहीं बोलोगे यार you अगर total penalty बहुत ही बुरा लेते, obviously I will criticize them. But again, has the penalty been totally out of effort, totally out of line, छक्का मार दिया, उस टाइप का penalty definitely I would say yes. परिनका ले लिया और फिर यार इतना attitude दिखाया, फिर मिस हो गया, वो मैं डेफिनेटली क्वेश्चन करूंगा। अगर प्रॉपर पेनल्टी ट्राई किया है एंड द गोलकीपर हैज सेव्ड इट, आई थिंक आई विल गिव इट टू द गोलकीपर। दैट्स माय ओपिनियन। अगेन इफ यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एज एन यू नो दैट आई लव यू एज वेल। लेकिन हाँ, बर्नार्डो कुड हैव टेकन द पेनल्टी। हाँ, दैट इज आल्सो गुड वन लाइक अंशुमन ने बोला, इट्स अबाउट हु टेक्स द पेनल्टी। अगेन इट कुड बी द प्लेयर जो खुद बोला नहीं मैंने लेना चाहता हूं, एंड हु इज डेजिग्नेटेड। दीस आर टू डिफरेंट टॉपिक्स दैट हम बात कर सकते हैं। या एब्सोल्युटली लव यू एज वेल। टीसीएसबी ऑलवेज। Juve new kit have triangle instead of block stripes. Exactly. मुझे यार block old school ही अच्छे लगते हैं, मतलब that's what I am for. Everton, Brentford 1-1. Dicock out हो गया और next batsman भी out हो गया। और दूसरा बैट्समैन कौन था भाई, by the way? आयुष बडोनी। अरे भाई आयुष बडोनी जल्दी आया था आज। आयुष बडोनी आउट पीपल। एवर्टन को पेनल्टी। अरे ये भी हो गया। मैं बोल रहा हूँ ना अंशुमन, आज क्या हो रहा है भाई, मैं जैसे ही चेंज कर रहा चैनल ना कुछ दूसरे में लिटरली हर एक बार बोल रहा हूँ, और ये हुआ है। चलो 2-1 हो गया। पीपल, एवर्टन हैव स्कोर्ड। यहाँ पर वापस से चेंज करना पड़ रहा है मुझे स्कोर लाइन बार-बार। अगेन आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए तब तक। रिचार्लिसन स्कोरिंग अगेन। भाई रिचार्लिसन ने लिटरली बचाया यार एवर्टन का सीजन। आप बोलोगे अगर हो गया तो नहीं, मैं तो कब से बोल रहा हूँ भैया ये बच जाएंगे ये, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि दे आर ग्रेट, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इनके साथ जो कंपटीशन है वो कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल का बुरा है। व्हेन यू लुक एट लीड्स, 2-3 गेम जीते वो somehow, and then you have Burnley,
वो 2-3 गेम बीच में नया मैनेजर चेंज करने के बाद दे वन. तो आई थिंक Burnley might survive. Leeds are going down. क्योंकि उनके पास गेम भी एक ही बचा है. हमारे तो 6 पॉइंट मुफ्त के जा रहे हैं. Giroud has been better man in recent games, and plus so fitness bhi is a point, right? Zlatan I don't think is 100% fit. Giroud को next season they are changing with Origi, so which is a good signing. लेकिन question था about Zlatan versus Giroud. तो क्वेश्चन के हिसाब से मैं तो बोलूंगा Giroud has been better form. He has scored also यार recently. तो मैं तो बोलूंगा फॉर्म और यार वो Zlatan is not anymore who will give you 90 minutes per game. So that is the reason. यार Zlatan अगर है तो definitely आएंगे is what I'm guessing, right? यहाँ पर मैंने दिखाया था ना लाइनअप एसी मिलान का. देखते बेंच इज व्हाट ऑप्शंस वुड हैव. I think we should be our top priority for CDM in the transfer market, right? क्योंकि मेनी ही होना चाहिए टॉप तो. But now that we are linked with Frankie de Jong, I don't think we will go for Tuke Meni. हम गार्नर ट्राई करेंगे and we might go for someone like Bissouma और Kamara. 30-35 मिलियन का बंदा उठाएंगे हम. Who will back out, और बैकअप में रखेंगे मैकफ्रेड को. So transfer window is going to be absolutely epic. अरे यार I call every creator out there. सबके पास मैसेजेस पहुंचते हैं. It is upon their availability. तो we will certainly have. पहले भी आ चुके हैं भाई. मतलब he knows it यार. Again, every content creator out there has helped me immensely. Anshuman remembers यार जो हुआ था मेरे साथ 2 हफ्ते पहले. The support I got from everyone out there. Everyone is behind me, and of course आप लोग का साथ है इसलिए we are doing marathon streams and whatnot. Certainly, yeah. As in, remember when Barca put 85 million for Richarlison and Everton turned it down. Those were the days. We put 50 million for John Stones. हमको मना कर दिया लेकिन सिटी को मना नहीं किया. I remember that as well. Top 5 league predictions भाई. मतलब ये अंशुमन से पूछते हैं. अंशुमन कर दीजिए भाई top 5 league predictions. Top 5 league predictions as in winners. नहीं मतलब लीगन बेसिकली नेक्स्ट सीजन के लिए लीगन, ईपीएल, ला लीगा, बुंडेसलीगा और यार कौन सा भूल गया मैं, सेरिया जो देख रहे हैं हम लोग. नेक्स्ट सीजन विनर्स के लिए. हाँ नेक्स्ट सीजन विनर्स तो भैया एक बार ट्रांसफर विंडो हो जाए उसके बाद ही, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी एग्जैक्टली पूरा शेकअप होने वाला है ट्रांसफर विंडो में. और इस सीजन तो यार आदित्य भाई हो गया ऑलमोस्ट हो गया. इंटर मिलान, एसी मिलान इज प्रोबेबली द ओनली वन लेफ्ट. ठीक है आप वही बोलोगे. बाकी सब हाँ मैन सिटी, लिवरपूल आप बोलोगे, लेकिन अगेन मैन सिटी के हाथ में ही है अभी भी मैं तो बोलूंगा. एग्जैक्टली. यस, Rahul reminding it again, more than 3 hours certainly deserves a like, absolutely, and so that we have more people and hopefully like करते रहो, subscribe करते रहो. सिंपल सी बात है. It's not gonna cost you a single penny. Like और सब्सक्राइब करने में. Yes, absolutely helps. Rooney or David Beckham, who has been bigger legend for Man United, यार. Rooney भाई. Not even a question. Exactly. Not even a question. अरे याद है अंशुमन और डेज एंड Rooney was so strongly Mourinho का second time so to Chelsea, याद है? He was so strongly linked to Chelsea second time जब Mourinho आया था 2013-14 में. इतना strong links हुए थे. Mourinho का almost वो statement भी आ गया था कि नहीं I am considering. लेकिन यार Rooney is a Man United legend man. I have to. No, he would have made a move, but obviously he wanted United to make those moves in the transfer market. वो खुद के लिए नहीं. He wanted the team to perform better. उसको अच्छे players चाहिए थे क्लब में. That's why he was going for कि अगर नहीं लाके दोगे भाई मुझे बंदे तो चलो ठीक है मेरे को ही बेच दो. यार राफेल लियाओ ने इंजर्ड कर दिया प्लेयर को, बाय द वे एटलांटा के प्लेयर को. म्यूरियल जा रहा है, नपाटा वापस आ जाएगा गेम में और क्या. बहुत फिजिकल लग रहा है गेम में, काफी फिजिकल गेम. अगर रोनाल्डो इस सीजन रहता तो वो भी डेविड बेकहम उनके लेवल पे. अगर रोनाल्डो इज अ बिगर लेजेंड फॉर यूनाइटेड देन डेविड बेकहम. भाई कौन कहां हो तुम लोग भाई. डेविड बेकहम से बड़ा है रोनाल्डो. ऑब्वियसली बेकहम इज मोर फॉन्ड ऑफ बिकॉज वो एकेडमी से आया. बट व्हेन यू लुक एट द इम्पैक्ट और जिस तरीके से द वे रोनाल्डो कैरीड और जिस तरीके से ही मेड अप द केमिस्ट्री विद टेवेज एंड रूनी. सो इफ अगर कोई बिगर नहीं मान रहा तो एट पार तो जाने से पहले ही हो चुका था वो. winning the UCL, obviously treble, but that treble cannot be put upon David Beckham alone. Simple as that. So
वो पूरा टीम था वो उस टाइम। ये मेरा थोड़ा सा अलग है यहाँ पर. आई अंडरस्टैंड लाइक इम्पैक्ट एंड ऑल दैट, बट वो मतलब आई थिंक बहुत बार क्या होता है ना, डेविड बेकहम बिकॉज ऑफ द मैन ही वाज, जस्ट द एक है ना ऑरा, एक पब्लिसिटी, आप जो भी बोलो मैं वही बोल एज रहा हूँ। गैलेक्टिक हो. नहीं, बहुत लोग, लेट मी कंप्लीट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अंशुमन इज अबाउट people actually forget that he was at one time the best midfielder in the Premier League. Period. ठीक है, there was a time and there was a period, क्योंकि मैंने लिटरली हर एक मिनट देखा है यूनाइटेड को उस समय. एंड पीपल, और पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं, मैंने बॉस स्ट्रीम में शेयर भी किया है, डेविड बेकहम वाज एक्चुअली माय फर्स्ट फुटबॉल जर्सी, बिलीव इट और नॉट. ठीक है, आई वाज नॉट अ मैन यूनाइटेड फैन, लेकिन जस्ट डेविड बेकहम द प्लेयर, क्योंकि यार वो एक अलग एलिमेंट आता था. बट वही है, आई एग्री विद अंशुमन ऑन दैट पॉइंट कि व्हेन रोनाल्डो केम, ही चेंज्ड फुटबॉल इन द प्रीमियर लीग. Okay, that is something. जैसे I would say that Eric Cantona, Ronaldo kind of जो elements थे United में, they changed the entire, मतलब आपका grand scheme of things ही change हो गया, आपका बार ही change हो गया. तो और getting the Ballon d'Or again, David Beckham was also there almost, लेकिन हाँ, I am going with Anshuman eventually, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा काफी close था. I don't think it was like आप बोलोगे it was easy one, but again Anshuman knows his United stuff, so I won't debate. I'm just saying it out there as a neutral. मैं I'm just वही है भैया कि देखो सिंपल सी बात, एंड ऑफ द डे वही आ जाती है कि सबका अपना ओपिनियन है, ठीक है. मेनी पीपल कंसीडर बेकहम ऑलराइट, बट द वे एज यू सेड, यू नो, जब रोनाल्डो आया, एंड व्हेन यू लुक एट द टाइम जब रोनाल्डो आया, तो दोज गाइज, यू नो, द लाइक्स ऑफ स्कोर्स एंड जो बाकी लोग थे, कीन भी ऑलमोस्ट जाने की कगार पे था, यू नो. सो नो दीज गाइज वर देयर जब व्हेन बेकहम वाज देयर, सारे प्राइम में थे. You know, when Beckham was there, everyone was in their prime. अगर आप देख लो, you know, Scholes देख लो, there was Nicky Butt, फिर Gary Neville था, and उसके पहले, you know, at that point of time, Cantona तो चलो उसके पहले ही चले गया. Obviously, he didn't win the treble with us. He retired before that, but वही है. Yeah. Again यार आदित्य, मैंने आपके लिए मैसेज भेजा है. I know that is for everyone. Again, I'm pretty sure यार, being a new mod, अभी नए हो तो, you know, let's try and just, you know, take जो language हमारी होनी चाहिए as moderator, we have to try and, you know, understand what kind of, you know, background people come from. If you are there on regular stream, बहुत बार आप जानते हो कैसे हमारी streams होती है. We'll go with that. And again, मतलब again, sense of humor is brilliant, लेकिन again, not everyone might understand that, or people might misunderstand, especially जब आप mod हो ना, तो you have to be a little bit careful about the way you say it. But absolutely brilliant यार, आप support कर रहे हो. Just wanted to put that point. Yes, 35 to 300 likes. Let's get there. Okay. Fans under 25 haven't seen the David Beckham era. Matata United, I was coming to the same point. मतलब वही है, मैंने इसलिए मैं बहुत स्ट्रेस किया था उस पॉइंट पर. मैंने डेविड बेकहम का हर एक मिनट देखा है, और आई मीन इट. बट अगेन अंशुमन भाई, बॉबी चार्टन या जॉर्ज बेस्ट, अरे भाई ये तो मतलब बहुत ही बहुत ही डिफिकल्ट टू से. Yeah, come on. बहुत difficult. I don't think it's fair also, right? It's not fair, to be honest. ये comparison नहीं कर सकते. ये वाला देखिए, हैरी मैग्वायर और फिल जोन्स. हैरी मैग्वायर, अंशुमन का ये better go defender, Micah Richards. Good one. That's the Anshuman deals with this question. देख लो उसकी defending. Good looking. Yeah, मैं वही बोल रहा हूँ, Micah Richards की defending देख लो. After that, you will understand how good a defender Maguire and how good a defender Jones was. Obviously, he has not played for 2-3 years, but when he started, before his injuries. अरे कोई नहीं भाई आदित्य भाई, कम ऑन, मतलब मेरा ड्यूटी आपको बोलना. अगेन यार आदित्य, पता नहीं यार. There was a question, Ankit भैया, who wins, you know, El Shami का कोई था, who wins Champions League first, United or Barca? Yeah, United won the Champions League first. Barca had their first Champions League in 1992. नहीं, ये United had their Champions League in 19. I don't think that is the question. Next. Again आपका, हाँ, next कौन जीतेगा पहले, बार्सा या मैन यूनाइटेड? अच्छा, alright, मुझे लगा पहले. Next, too difficult to say. You know, I think 50-50 वाला chance है अभी. Barcelona in a mess, United in a mess. You know, Barcelona के पास, you know, in the next 2 years, I don't see them winning. You know, United को भी next 2 years में I don't see them winning. Barcelona के पास भी they have a good young core. United के पास भी they have a good young core. Now it's totally come down to, you know, थोड़ा सा luck का भी factor चाहिए होता है.
You know, when you play in a competition like Champions League, you need those draws to win your favor as well. And so I think it's 50-50. या दिस वन इज बहुत बार आ चुका भाई अंकित, सॉरी भाई, मैंने पता है स्टार करके रखा था, मैं उस पर ही आने वाला हूँ अभी. आई कम टू सम क्वेश्चंस. अगर पता नहीं यार 3 घंटे से लोग देख रहे कि नहीं, मैंने स्टार करके रखा है काफी क्वेश्चन जो उस समय हम बिजी थे टीम ऑफ द सीजन पिक करने का, और उस पर भी आएंगे. व्हाई डिफेंडर डोंट विन बैलन डोर? भाई एक तो यार सोशल मीडिया आई थिंक द मेन रीजन. हाँ, एक होता है यार, आप एज फुटबॉलर्स, एज फुटबॉल फैंस, आप भी देखना चाहोगे गोल्स. दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. आप जब फुटबॉल देखते हो, जब शुरू करते हो नए ना, यू काइंड ऑफ वांट टू वॉच द गोल्स, और दैट काइंड ऑफ इज मोर प्लीजिंग टू द आई. तो आप एज अ फैन जब बनते हो, बाय डिफॉल्ट आप एक सबकॉन्शियसली आप एक एफिनिटी रखते हो विद फॉरवर्ड्स. प्लस आपका अगर ग्रेट डिफेंसिव क्लियरेंस करेगा तो आप फ्रंट पेज न्यूज में नहीं होने वाले. दैट इज अ फैक्ट. मे बी आप एज अ गोलकीपर यू विल बी इफ यू सेव अ पेनल्टी इन द लास्ट मिनट्स, वो हो सकता है. लेकिन इफ यू गेट अ गोल लाइन क्लियरेंस इन द लास्ट मिनट, यू विल नॉट बी इन फ्रंट पेज न्यूज. लेकिन इफ यू गेट अ लास्ट मिनट विनर, शर्ट उठा के अग्वेरो मोमेंट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल आउट ऑफ द ब्लू, मेरे मन में आया, तो दोज आर द थिंग्स दैट यू विल बी ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. तो अगेन, आप जो वोट कर रहे हो, कौन कर रहे हैं भाई? वोट कर रहे हैं वो हमारे फैंस हैं, या तो टीम्स के कैप्टन्स हैं, या तो जर्नलिस्ट हैं. तो 2 out of the 3 are so very much into news और social Fans media. are not voting, भैया. Fans are not voting. नहीं, among them भी fans है ना. What I'm saying, जो भी उन लोगों में भी they are also fans. They are also fans. Journalists you can say. हाँ, होते हैं भाई. Bias, आप वो लोग बोलेंगे यार we are not biased. Come on. If you are following football for 25 years, even if you are a journalist, deep down you are a fan भाई. भैया देखो, simple सी बात है. If you are giving a Ballon d'Or, every category has its own Ballon d'Or. Simple as that. Otherwise, तुम्हारी कोई authenticity नहीं है, यार अंशुमान, आपका इंटरनेट थोड़ा अटक रहा है भाई. जिसको जर्नलिस्ट, आई थिंक इंटरनेट थोड़ा अटक रहा है. आई थिंक यू माइट वांट टू कम बैक अगेन. आप रीसेट करके वापस आइए एक बार, थोड़ा ज्यादा अटक रहा है लास्ट 5 मिनट्स में. इफ यू कैन ग्रेट. एक बार रीसेट करके आइए, होता है कभी, कोई नहीं. हाँ, अभी बेटर है. अभी ठीक है भैया, अभी बेटर है. हाँ, बेटर लग रहा है अभी. और बाय द वे यार, राहुल, मैंने सब कंटेंट क्रिएटर्स को भेजा है, और अगेन टाइम तो नहीं बताया यार, जब भी आएंगे तो आएंगे. तो अगेन आई एम नॉट दैट पुशी काइंड ऑफ गाई, और आई रियली आई एम जस्ट ग्लैड कि एवरीवन अग्रीज टू कम, मैन, सिंपली पुट. एंड अगेन वी आर नॉट काइंड ऑफ रिलाइंग ऑन एनीवन हियर. आए तो सोने पे सुहागा, एब्सोल्युटली. लेकिन हाँ, मैं पुश नहीं करने वाला किसी को भी, लेकिन एब्सोल्युटली यार आए तो मोस्ट वेलकम, एज यू ऑलवेज नो भाई आपने. वेल, 566 वोट्स बट ओनली 266 लाइक्स. ओह, ये तो यार क्या ही तो बोले, मतलब कोई नहीं. शुड ओनली क्लॉप बी गिवन ऑल द क्रेडिट टू फॉर ऑल लिवरपूल सक्सेस? व्हाई he should get a huge credit ना अंशुमान, बट ओनली नहीं यार. हाउ कैन अंशुमान is coming back, looks like. कोई नहीं. तो यार Matata United, I'll take this. 0-0 है भाई 31 मिनट्स में. नॉट रियली इंटरेस्टिंग मैच, लेकिन हाँ, सर्टेनली भाई क्लॉप डिजर्व द मेन क्रेडिट. बिकॉज आप देखो यार, टाइम एंड अगेन जो हुए लिवरपूल में ट्रांसफर्स, लॉट ऑफ इट ही हैज गॉट टू डू इट. लेकिन अगेन देयर इज लॉट ऑफ बैकग्राउंड स्टाफ जिन्होंने किया है वो ट्रांसफर्स को पॉसिबल. लुइस डियाज, who knows who was behind Luis Diaz? सच में जानते हैं आप? We don't know what the real story of Luis Diaz is. तो maybe you should thank Tottenham. उन्होंने Luis Diaz का प्राइस नीचे लाया. Maybe it is someone in Liverpool who really scouted Luis Diaz, who was negotiating a lot of things. और Luis Diaz अगर नहीं आते जनवरी में, trust me, I mark my words, वो नहीं होते इस पोजीशन में. Luis Diaz was a major factor for me. तो मैं तो इतना ही बोलूंगा अभी के लिए, but I would take Sam Kerr in Chelsea men's team at the moment. Wow, what a comment! And maybe yes, and वही मतलब she will score more than Lukaku for sure. Mark my words. 100%. Yeah, Lukaku, Havertz सब मिला के भी she will score more. Werner तो बोलो ही मत, बोला अलग ही लेवल. How would you rate Zlatan? Interesting question. I think I rate him really highly before his injury. Obviously, after that ACL and at the age of 38, he was never going to be the same player. Obviously, people will say that, देखो Milan में जाके he's doing. Yeah, Milan, Serie A, you don't have that pace.
with your physicality you can bully them and you will have your way. That's what Ibra did when he came in, with his movements and with his physicality when he came back, when he came for the first time in Premier League. But after that injury, it was going to take some time, and I think he made the right move by going first to MLS. He just got back to his confidence and his fitness, played over there, played the way he wanted, and then he came back to Milan and scoring goals for fun. Okay, fair enough. Let's see now. Again, people who have been there on the stream for a long time, thanks, and I'm hoping यार सब लोग तो United Road को कर ली है अभी तक सब्सक्राइब. I'm assuming that has been done. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब करते जाओ और यहाँ पे लाइक ड्रॉप करना मत बोलो, सिंपल सी बात है. Whenever you for joining for 2 minutes, 5 minutes, obviously 3 घंटे 4 घंटे सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, but keep on liking the stream. Every like that is the drill. Absolutely. 29 for 3. अरे भाई ये क्या हो गया? मैं बोला ना लखनऊ is falling. अभी यार लखनऊ बाहर हो सकती है. Technically they can. Technically तो हो सकती है. यार भाई ये मैच में इमेजिन अगर ऑल आउट हो जाए जल्दी. नेट रन रेट में अगर इस मैच में भी अगर 100 पे अगर लुढ़क गई तो फिर दिक्कत है इनके लिए भी. इनका रन रेट भी जाएगा, नोज डाइव लेगा बहुत तगड़ा. यार यंग डिफेंडर्स नहीं. Thank God there are academies. Thank God basically there are coaches. Thank God there are setups. इसीलिए basically मतलब again I would love India to be there at the level that they should be. लेकिन वही है ना, इंडिया में इतना नहीं है क्योंकि इंडिया में इतना सेटअप ग्रास रूट लेवल इतना अभी तक सेटअप नहीं हुआ है. वहां पर हो गया भाई. यूरोप में डेफिनेटली आपको नहीं मिलेंगे वो. डेफिनेटली देयर बी और डिमांड एंड सप्लाई वाला चीज हो जाता है ना. है भाई काफी डिमांड है. कम ऑन, एवरी बिग क्लब वांट्स डिफेंडर्स आज के दिन में. चेल्सी की बात कर लो तो दैट इज व्हाट इट इज. I would like to address Sarthak bhaiya. Sarthak, just tell me 5 Serie A strikers who has made it big in the Premier League. He is talking about Serie A doesn't have pace mentality. Tell me 5 strikers who has made it big outside Serie A. Serie A's best ever striker, best ever, Shevchenko. And Ronaldo भाई. Ronaldo R9. मैं वही बोल रहा हूँ. Those two basically the biggest names of Serie A. What they did outside Italy. चलो मान लिया शेफ्चेंको के साथ, चलो चेल्सी कर्स हो गया स्ट्राइकर वाला. आई डोंट नो व्हाट कर्स दे हैव, जिसको भी लेके आते हैं अलग ही सीन हो जाता है उसका. बट व्हेन यू टॉक अबाउट रोनाल्डो ने कौन से 3 मार लिया अपार्ट फ्रॉम रियल मैड्रिड में. he was great, but again like मैं थोड़ा ये ऐड करूंगा अंजुमन. प्रॉब्लम ये हुई ना, when Serie A were in their very peak, the strikers never moved out. So अंशुमन tried to make that point कि यार वो अपने को टेस्ट नहीं किए. I remember like Crespo for me, मतलब again I have watched every minute of Crespo in Chelsea, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ. Trust me, I am capable of putting that opinion. Crespo for Chelsea has not been given the credit what he deserves. Crespo came from Italy. I know वो homesick थे. He wanted to go back. But for me, he should be counted as one of the strikers जिन्होंने किया है outside. We won that league in a canter. Manchester United and Arsenal were dominating the league, or Crespo was part of that team, and he scored a lot of goals. Trust me. Another name that I would say is again, maybe they have not tried themselves enough. लेकिन the fact that I know Inzaghi, maybe अगर आते तो करते नहीं करते वो debatable है. But I think Anshuman has a point. Did they test themselves enough? They have the Roberto Baggios of the world, the Alessandro Del Pieros of the world. They didn't test themselves. So that is why that's what I'm saying कि यहाँ पे we are talking about pace mentality. ठीक है, यह managers कहाँ से आएगा? Obviously Italian football always blessed with the greatest of managers. इसको कोई doubt थोड़ी कर रहा है. This is totally two different things. Two different things. मतलब एक ये है कि भाई we are talking about the players who are there, who are playing as a striker. Managers are totally different thing. You can they have the likes of Ancelotti, उसके पहले कॉन्टे ले लो, एलेग्री ले लो, वो लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. वो मैनेजर्स का तो कोई है ही नहीं. Atalanta almost scored भाई. मैं वही देख. Zappacosta, anyone remember Zappacosta, the poor man's Cafu जो मैं बोलता हूँ. Still basically I don't know, no ये सोल्ड कर दिया था, हमने सेल कर दिया था Zappacosta को, if I remember right. मैं क्या बोल रहा था, ये मैच होगा बहुत क्लोज, ड्रॉ और अटलांटा निकिंग इट. कोई नहीं.
आप किस पे स्ट्रीम करते हो यार? मैं तो स्ट्रीम यार्ड पे करता हूँ अमरजीत भाई, आई डू ऑन स्ट्रीम यार्ड जस्ट सो यू नो। गेम के पेस की बात कर रहा हूँ। गेम के ही पेस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्राइकर्स पेस। गेम की पेस मैं थोड़ी बोल रहा हूँ स्लो है। एंड ऑब्वियसली गेम की पेस भी, इफ यू लुक एट सीरिया की गेम की पेस, 2-3 टीमों को छोड़ दो, ऑब्वियसली द टॉप टीम, बाकी में कहाँ है पेस? इन द लास्ट फ्यू इयर्स दे हैव कम अप विद द प्लेयर्स जो कि उस तरीके से पेसी फुटबॉल खेलते हैं। यू हैव बीन लेकिन सार्थक, आई एम विद सार्थक इन दैट, क्योंकि यार थिंग्स हैव चेंज्ड अंशुमन, थिंग्स हैव रियली ड्रास्टिकली चेंज्ड। मैं वही बोल रहा हूँ, नाउ दे हैव कम अप विद द लाइक अब देखो, अगर किसी भी टीम के पास दे हैव अ पेसी प्लेयर, ठीक है, चाहे वो अटलांटा उठा लो, चाहे वेदर दे आर सक्सेसफुल इन दैट इन दैट मोल्ड और नॉट, आई डोंट नो, ठीक है, जपाटा ले लो, मुरियल ले लो, दे हैव पेस। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर कुछ टाइम पहले जाओ, ये सारे उस तरीके से थोड़ी थे सक्सेसफुल। Atalanta has been the story of Syria for the last 3-4 years. इस सीजन दे हैव बीन, दिस सीजन इज ओनली द, ये सीजन थोड़ा सा, इस सीजन इनका थोड़ा अच्छा नहीं गया, बट दे हैव बीन द स्टोरी ऑफ सीरिया फॉर द लास्ट 4-5 years. बट द गेम ऑफ स्पेस ऑफ सीरिया हमेशा से इस लेवल का नहीं रहा है। वी हैव बीन वाचिंग सीरिया आज से नहीं, बहुत पहले टाइम से हो गए 10 साल ऑलमोस्ट सीरिया को भी देखे हुए, बट दे डिडंट हैव द पेस। पिछले 3-4 साल में ऑब्वियसली दे हैव इंप्रूव्ड अ लॉट। अब तुम बोलोनिया के पास भी जाओगे तो दे हैव प्लेयर्स फ्रॉम अफ्रीका हु आर एब्सोल्युटली हु विल किल यू ऑन द काउंटर अटैक्स। बट इट पहले वाली ये बात नहीं है, पहले ऑब्वियसली इट वाज ऑल अबाउट मिडफील्ड और डिफेंसिव गेम प्ले, और जिसके पास अगर टॉप का स्ट्राइकर है दे यूज्ड टू डोमिनेट, सिंपल। अभी बोल तो यार और क्वेश्चंस आ रहे हैं आगे यार, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, आई एम स्टारिंग हिम यार। क्विकली यहाँ पर लेना चाहूंगा प्रसन्ना के व्यूज, बिकॉज यस प्रसन्ना डिड अ वॉच अलोंग। Prasanna, man, I know we are still watching the Lucknow RR and Milan Atalanta games, which are kind of on the edge. But let's have a word also about Chelsea women. The fact that you covered that, please, man, the floor is yours. The men's team, are you watching? Because if only they had half of the mentality the women's team had, we would be winning much more trophies now. But seriously, man, credit goes out to Emma Hayes. The way the team is just... She's been here since 2012, yeah? And at this time alone, she's won 5 league titles, 4 FA Cups and 2 Conti Cups. It just speaks volumes. Exactly. Prasanna, I think me and Anshuman were just talking about it earlier, but I think वो statues जो हो रहे हैं ना in different clubs, I think Sam Kerr probably has already reached that level, man. I'm not even joking. Yeah, I mean, she's just that big game player. I think Drogba, I think, posted something about her, and it's something later to that. It's good to see that greatness recognizes greatness. I mean, whether we need a statue for Sam Kerr or not, we definitely need a statue for Emma Hayes. The way she has turned this club around and she's made this, made this a huge club. Yeah, Emma Hayes probably is a larger picture that probably a lot of us miss out on. Just do one thing. Don't put that guy who built the statue of Aguero for City. Don't hire that guy. वो पता नहीं वो सैम का स्टैचू बना के दे देगा, फिर हंसना पड़ेगा। वो टोनी क्रूज का लग रहा है ज्यादा। Exactly, literally Tony Cruz has tweeted उसके ऊपर। I mean, to be honest, Chelsea doesn't have much statues though. I mean, we have probably 1 or 2 at best. We have one for Peter Osgood, and who else? I think Greavesy, Jimmy Greaves is just the ashes, right? But of course, Peter Osgood is the one. But for me, we don't even have statues for many other players. So, but still, Peter Osgood, man. Statues. When you look at the statues, it's a culture City are trying to adopt in terms of, I think, to be relevant. कि भाई बाकियों के पास है 2-3 statues है, हम भी लगा देते अपने. But when you look at the players, their statue they are putting, all right, Aguero might deserve it. You can basically say company, but when you look at the statue that other clubs have, obviously City they don't have history, so they cannot go back and talk about we can have those statues and all. When you look at Chelsea, when you look at United, by the way, there's a penalty appeal. By the way, one second. There's something happened in the Milan game, Milan Atalanta. There's a huge fight and there's a commotion. Giroud is like begging to the referee. Let's see what is happening. इनका वार यूज होता है भैया। अरे पेनल्टी है यार भाई, पेनल्टी होना चाहिए, 100% पेनल्टी है। Milan should get a penalty. It's a clear. वार चेक करेगा, इनका बहुत सही होता है। I reacted too early. Push है यार, it's a momentum के साथ push है।
नहीं है यार बॉल तो नहीं खेल रहा था भाई, both खुश both है। both players were trying to hold each other. जिरू ने थ्रो अरे, किया अपने आप को. 1 Momentum minute, let के me साथ just है mute भाई। myself and come back. Giroud is like really pissed off, man. He's like really wanting it. I actually feel that, you know, a lot of time defenders get away. I know it's modern football I'm leaning towards, but I think वो clearly वो जा रहा था और वो बॉल तो डेफिनेटली नहीं खेल रहा था और शोल्डर पुश भी नहीं था, हाथ से किया है भाई, मोमेंटम के साथ पुश किया है. Giroud had total right to fall. जिरू को येलो कार्ड दिया है. वो गलत Clear किया. dive. It wasn't a dive. It wasn't a dive. Clear I dive. disagree. He literally threw नहीं. himself. Let's agree to disagree. It's okay, perfectly fine. होता है कभी-कभी. But अब मेरे ख्याल से डिसेंट the way he reacted of not getting a no डिसेंट होगा. उस चक्कर में आई थिंक उस हाँ वो डिसेंट के लिए उसको दे दिया येलो कार्ड. रेफरी जस्ट वांटेड टू बी अथॉरिटेटिव कि भाई मेरे से जबान मत लड़ाओ. यार अरे बाय द वे दिशांक आप हु एम आई देखिए यार, उसमें काफी सारे मोमेंट्स ही. दैट इज व्हाट हु एम आई Chelsea season which Prasanna was part of and he'll come back again. Check out our Who Am I playlist on Almighty Blues FC. You will know a lot of historical moments and each particular clue is a historical moment there. So you will get to know about not only recent history but previous B. Loads of it. We had loads of it. Chelsea have loads of history. Not that other clubs don't. Don't get me wrong. जो देख रहे neutrals. लेकिन we have loads of history. Trust me on that. मतलब I am confidently saying that क्योंकि मैंने देखा यार, मैं 2000 से देख रहा हूँ और मुझे पता है what a cup team we were. We had huge kind of cup moments and even in the league, yeah, even in the league, especially जो हुआ था Blackburn के साथ हुआ था game where basically it was a 1-0. Everyone was, you know, against us and basically Blackburn players were literally playing kung fu on the pitch. We still got that 1-0 Robin's goal. That Robin's goal, that check out the celebration. There we've had such pivotal moments in our history. And talk about Joe Cole's goal against Man United, not because you know Anshuman is here, I'm putting a pun. This is a fact that was actually one of the historical moments for Chelsea. Thiago's goal, you know, that is again a lot of times people forget him. So बहुत सारे गोल है यार, मतलब but Aguero का जो हुआ था ना 93 odd minutes में हुआ था, तो that is 93-20 if I'm not wrong. The way it happened, the last day of the and season. that yeah. When you हमारा था Which यार. time they scored 2 goals? That was the most crazy part. Yeah. अरे we had Prasanna, you remember? I'm pretty sure you remember under Ancelotti. You know, when we won the league, it went to the last game of the season. People don't talk about it much. We beat Wigan 8-0. 8. We could have gone to that moment and kept it dramatic. Nahi, but we dominated. So that was the difference. Yeah. So we could have had that moment. But people don't talk because we didn't get a last minute goal. United has had a last minute, last match wala itne sare seasons mein. They have won a lot of time. So every club has. ऐसा नहीं बोल रहे कि ये club बुरा है ना. Every club has its moments. It is just that the Hollywood moment. Back under the Ancelotti season where we used to score for fun. 8-0, 7-0, 7-2, 7-1. Mm-hmm. Oh my God. I mean, I think we had 100 goals in the league alone. Crazy. Yeah, absolutely. We first time ever that was done at the time. Don't you think Hazard should look for another club? As I don't think he will get any more chances after the rise of Vinicius and possible arrival of Mbappe. Hope you reply. Subhash, why don't we will reply यार. Neutral से लेते हैं पहले. क्या लगता है भाई अंशुमन, ये हजार्ड ने बोला कि he wants to stay at Real Madrid. Is he doing the right thing or wrong thing? फ्री के पैसे मिल रहे हैं. जोन्स बनेगा ये अगला फिल जोन्स. फ्री के पैसे उठाने की आदत पड़ी हुई है तो फिर अच्छा लगता है बैठे पैसे उठाना. You know, still just 30. He should definitely take a move. किसको? Vinicius replace करेगा वो. You know, he is going to replace Rodrigo. Mbappe ले आया तो किसको replace करेगा ये? He knows no one is going to pay the wages that he is getting right now at Real Madrid. He is more than happy. He is going to be the next Bale situation for Real Madrid. Simple as that. ये उनका next Bale situation है. Bale का तो हो गया. Contract खत्म हुआ. Now he will leave. Hazard is getting paid. I think Ancelotti told that Hazard was part of his plan somewhere. I'm not sure if that's true though. Yeah. Okay, again, sorry to cut you guys, but Aditya, obviously no manager will come out and say, you know, that he is not part of our plan. Mourinho did that with Costa, and that costed Chelsea around 20 that is part of management, especially not Mourinho, Conte. Not Mourinho, that was Conte. Yeah, Conte. Yeah, Conte. And then we got Alvaro Morata. People, sorry.
I have to take this comment क्योंकि आदित्य मैंने actually वही है मतलब like I said, Yes. lot of moments Yeah. for me. मतलब if you actually watch, I would like you to watch again. I spoke about Who Am I. There's also Know Your Creator series. उसमें actually मैंने बताया how I became a Chelsea fan, Chelsea fanatic from just a follower. तो it was two moments, I think, clutch moments मैं बोलूँगा. One is definitely the $20 million game जो आदित्य बात कर रहे हैं. Definitely जो ना ग्रॉन्कियार का गोल था. That is something that has to be there. So Chelsea wouldn't have been bought by Roman Abramovich. One of the reasons was that. ठीक है. Second one is Wayne Bridge scoring the goal against Arsenal in the quarterfinals of the Champions League क्योंकि Arsenal dominated us every time. We actually got one over them finally और हम believe करने लगे कि okay, we are the big boys also. So those are like two moments and उसके पहले भी actually cup में हुआ है, but हाँ, definitely great points that definitely I would agree. Where do you think Bale will go? Again, talking about Hazard, great point जो panel ने बोला है. Golf course is the only place I think for him. Prasanna? Where did he say? Bale, golf course. Yeah, probably. Or maybe MLS if they're willing to pay him the wages. Yeah. No I one think is he'll going get to it up at the pay. MLS though. Correct. Simple as that. He will have to take at least 5-time wage cut if he is going to any other club. Yeah. Minimum 5 times. मतलब literally उसके अलावा कोई पे नहीं करने वाला. He is 31 now. It's not like he's 27, 28. He's 31. How many games? भाई half time हो गया है यहाँ पर half time 0-0 ही है. अरे भाई. I told you it's going to be a KG game. एक गोल आएगा यार मुझे अभी लगता है Giroud, you know, he's creating space for himself. He's doing मतलब वही येलो कार्ड it'll be interesting. Atalanta भी अच्छा खासा पीछे स्पेस बना रही है. They have been unlucky 2 or 3 times. They should have scored. But I think Zlatan आएगा ना, आना ही पड़ेगा. Milan need 3 points here. I feel. Zlatan is there, Rebic is there, दोनों है. Correct, absolutely. Let's see if it wasn't for the red card. Arsenal versus Barca UCL final have different winners. I'm not too sure about it. You can say that, लेकिन that Barca team also was madness. Bhai. I know Arsenal were also madness. Thierry Henry at his best. But yeah, I would say that Barca scored, by the way. Barca scored, and that was disallowed, and then Lehmann was given the red card. That didn't make sense though. But I think he could have chopped off the red card, and they scored anyway. No. What the chat is trying to say here, मतलब chat is having a point about like okay, goal कर दिया, लेकिन यार अगर red card नहीं देता ना, तो at least they would have kind of come back is what you know. Yeah. But again, I disagree as Prasanna disagrees. Because I still really they played well though. I mean, Sol Campbell goal, that was Prasanna, talk about clutch moments again. Yeah, people forget 4-2 against Barcelona. Ronaldinho had that great goal against Czech. That was the previous year. ठीक है, तो that Barca team is what we're talking about. You know, they knew what they were playing. Yeah, I know that. I'm not discrediting them, but I'm just saying Arsenal still, despite being not 10 men, they still played well. I mean, it's not that they folded or anything. They played well, exactly. In recent years, when you see the results and the quality of refereeing, it's been horrendous, especially in UCL. No one can forget that Drogba rant. You guys are basically robbed against Barcelona. It's a disgrace. Exactly. That's the same way we were robbed at Old Trafford against Real Madrid. That year UCL was ours. Literally ours. When we got a red card, Nani got a red card, we were literally hammering Real Madrid at Old Trafford. Hammering left, right, and center. Real Madrid was our bitch that night. Simple as that. And that red card came out of the blue, and we ended up losing the game. With away goals and all, we were there. Simple as that. That red card happened and everything changed. These are the. That was a yellow card, though. To be fair, I mean his boot was high, but it was a yellow card at best. He didn't really started into him like that. Both guys had their eyes on the ball. What do you expect? Both are looking at that, and no one is knowing that which guy is coming from which side. Simple as that. It's like a similar thing now when you're doing a tackle and when you follow, you catch someone on the studs. I mean, you tackle just to get the ball, but on the follow, goal, man! Brentford score 2-2. Lampard, man! Don't tell me. Matata United called it also. Yeah. Header, man! Nice header. Yes, 2-2. You were right.
Why speaking about the MLS thing? Christensen with his sorry. free kick. Christian Eriksen with the corner. No, I'm just seeing the replay. Prasanna, 1 second. Yeah, Eriksen sure. What a header, man. इनका टोनी था क्या? कौन था हेडर? बढ़िया हेडर था यार, nice header. I'm just looking at it. अरे no, not Tony. But yeah, brilliant man. I must say Brentford are First goal came from this guy itself. Visa. Yeah, Great, first man. first goal assist किसी को मिलेगा. Which was worse for Man United, 2009 loss or 2011 loss against Barca? I think 2009. 2009. उस समय एकदम peak थी ना Man United, you would say. Like that was the year, obviously we would have given Ronaldo a great farewell with the win. Correct. But I think 2009 because the way that we conceded the goals, 2009. But yeah. Which Barca was better, 2009, 2011? I think 2009 Barca. Did it change much between 2009-11? I don't think they changed. Not really. I mean, 2011 they had Villa. Apart from that, not much changed though. Not. Yeah. For Man United, things changed, but Man United that team changed. Yeah, in 2011 we were totally under transition. When you look at the players we had the likes of Berbatov, we had likes of Hernandez. Just first year in the league. So for us it changed a lot. For Barcelona it was basically similar. Yep, fair enough. Just coming before that. Bale's wages at Madrid are somewhere around 34 million euros per year. Something like that. Yeah. People, one more goal. Sorry, Prasanna. I know 2 times Prasanna has tried to make that point. दोनों बार goal हो गए. Yeah, 3-2. 3-2 who? Brentford? Everton are gone, man. Who scored for Brentford? अरे राहुल यार वो वाला मैच राजस्थान जीतने वाली है इसलिए उसके मालूम यार 2 गोल Henry wing back. But thanks for the update, भाई. Atletico confirmed Suarez will leave. His priority is top European Cup. ले क्या? अरे नहीं. अभी Suarez is not that player anymore. लेकिन हाँ. What a header, man. What a header. भाई क्या ये गॉर्डन करके आ रहा है वहाँ पे खड़े होके. It's like a Carvajal moment. KD भी पीछे से आके मार गया. भाई साहब. Wow. टेंशन हो रही है मुझे लैम्पार्ड के लिए अभी. I still think Leeds are going down. Everton may survive by the skin of their teeth. I said the same. Yeah, I said the same that they will survive. Obviously, they are down to 10 men. They might lose, but since Leeds dropped points today as well, I think they are done. They got and 1 Everton point. have a game in hand, I think. Yeah, after this game, they'll have only 36. Yeah. I want Everton to make it difficult for Arsenal. Yeah, that may also be because Arsenal are chasing top 4. The Everton are chasing this thing survival. I think it's Everton's Spurs top 4 to lose in my opinion. Yeah. And Arsenal at St James' Park. Last game they are going to Norwich. Yeah, last game. Yeah, that they should win. Great chance for Son to get past Salah. Now that Salah is gone. Yeah. Burnley were unlucky today though. They had 1 or 2 chances where they should have scored. And Nick Pope was literally that guy from Shaolin Soccer. Everything that comes towards him, he literally was saving. No, when you look at those keepers, likes of Pickford, Nick Pope, Raya, Sanchez, these are the guys against better teams. Somehow they just become Casillas, they become, Schmeichel. Making saves. Exhibit A. Yeah, exactly. That's what I'm saying. That when we play against those guys, so. अरे मैं थोड़े कमेंट्स लेना चाह रहा था यहाँ पर क्विकली. तो वन इज लाइक मैं देख रहा हूँ बाय द वे डू नॉट स्पैम इन द कमेंट्स. मैं देख रहा हूँ भाई, डेफिनेटली देख रहा हूँ. रैंकिंग में इट्स नॉट फेयर. I don't know about the panel. I have literally seen everyone, so I can maybe I have my opinion if I can. But again यार क्लिप मत करना मुझे. मैं बोल रहा हूँ पहले ही यहाँ पर कहाँ गया भाई वो. तो मैंने देखा है भाई, context is important. But again, if I am picking these players in the prime. So I'll go first because just because I've seen the comment. मैं पहले जा रहा हूँ. I'll then go to Anshuman.
Definitely, no two ways about it. R9 has to be first. ठीक है, R9 was, I think, among the top 5 strikers of all time. Simply put, ठीक है, जितने भी मैंने देखे, R9 is there. And I know a lot of Chelsea fans won't like me saying it, but I think the peak of Henry was better than peak of Drogba. And I just said it. I know people I might, agree. Yeah, actually, slip me there. And I love Drogba to bits. In a big game, context इसलिए मैं बोला, in a big game, in a final, or Drogba. maybe if you want a physical element, Drogba hands down. But if you're picking 11, if you're starting a team to win a championship for you, Henry any day. Okay, Henry is your guy. Third, Drogba any day. Suarez did that great stuff for 2 seasons for Barca, 1 season for Liverpool, 3 seasons. Drogba did that for what, 7-8 years consistently. Yeah. So I would still have Drogba over Suarez. But I know that Suarez was brilliant in those 3 seasons. So I am going Suarez fourth. I know controversial हो सकता है, but I just said it. Anshuman, over to you. See, I totally agree with the ranking, भैया. Agree. Top 4 जो आपने बोला, मैं उस ranking से जाऊंगा. हाँ, same. And the point is, people are saying that peak of Suarez was terrifying as well. Apart from that one season with Liverpool, where he basically played with the likes of Sadiq and an upcoming Raheem Sterling. When you look at when he played at Barca, who he played with, and how Drogba started at Chelsea, and who he played with, and what competition he had. वो किसी को आने नहीं दिया. इतने स्ट्राइकर साइन किए. He didn't let anyone come. And वो चलो ठीक है, वो एक चीज है कि चलो you are good, you are not letting anyone get near you, ठीक है. But तुम्हारे बैकअप ऑप्शंस देखो. There is one striker who is assisted by basically Messi, Xavi, Iniesta, Please. Neymar on in his prime. Then you also have other support cast. When you look at Drogba, it's just Drogba. He could terrify in the air. He could run with the ball. He was basically what Ruud used to be for us. He didn't need anyone. Put Ruud and Nistelrooy anywhere, and he is going to bring you goals. Simple as that. There is absolutely, for me, there is absolutely no comparison. To be very honest, I don't even rate Suarez with these grades. If you want to name, take the names of other guys, I will take Shevchenko over Suarez. I will take Ruud, in the top 5. Even Inzaghi, Inzaghi को भी डालेंगे. राहुल. मैं देखा हूँ, मैं literally मैं तो AC मिलान का fan था भाई. Rahul is also one. मैं वही बोल रहा हूँ, Rahul. That's what I'm saying. Suarez doesn't belong in this list. ये basically, ये 3 लोगों के लिए basically you can say it's a bit of disgrace. Just like company making the Premier League team, Hall of Fame before other guys. Yeah. Comments यार काफी funny आते कभी-कभी. लेकिन again, just take one comment too. When someone says Henry is an old school Harry Kane bottling in finals, please, man, don't even compare. Henry can run with the ball from all the way. Seriously. Yeah. I can say maybe we'll come back to this. Okay. You cannot take. Yeah. It's just a banter. But again, Aditya has a point, because Harry Kane, when he ends the career, it will be only fair to judge that if you want to. Yeah. Let's see. भैया एक बार कमेंट लेना. एक कमेंट है, Suarez ruled in the PL. भाई एक सीजन is ruling the PL. ऐसे तो फिर Miku ruled the PL. That to with Fonzie. सुभाष नहीं, मैं मुझे एड्रेस करने दो अंशुमन. देखो यार भाई, डेफिनेटली क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाज मोर ऑफ PL स्ट्राइकर्स थे. तो यार अगेन हम रोनाल्डो R9 की बात कर रहे थे ना, तो यार हम एक्चुअली PL के स्ट्राइकर की नहीं बात कर रहे सुभाष, हम बात कर रहे हैं बेसिकली इन देयर करियर. तो मैं ऐसे समझा, इसलिए मैं बोला है ना, डू नॉट जज. जो मैं बोलने वाला, अंशुमन बोलने वाला, इट इज देयर ओपिनियन. उन्होंने देखा है पूरा करियर, हो सकता है. आई नो सुभाष, आपने भी देखा है पूरा करियर, हो सकता है. मैंने तो देखा है, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने देखा है पूरा करियर, मैंने देखा है, और सब स्ट्राइकर्स का पूरा करियर देखा है मैंने. एंड आई लिटरली, आई एम सेइंग इट, आई एम नॉट ब्रैगिंग, दैट्स अ फैक्ट. मैंने देखा है हर एक मैच, ट्रस्ट मी, आई वॉच्ड इट. तो सुआरेज ओवर अ करियर, और Drogba over a career, or basically like the names Ruud van Nistelrooy over a career, आप बोलोगे तो I think
अंशुमन हैड अ ग्रेट पॉइंट वहां पर. हाँ, डेफिनेटली दोस 3 years that I said, इसलिए मैं बोला ना, वो 3 साल का अगर ले लो तो he was better than most of them, I would say. लेकिन you are seeing an entire career, so that is the only difference कि what they have done over an entire career. इसलिए हैरी केन और ऑनरी का भी डिबेट था ना. It's not fair. Even in the PL that he's saying that he ruled in the PL, one season is not ruling the PL. Exactly. हाँ, one and a half बोलूंगा, चलो 1.5 season. हाँ, one season is not. Michu, ऐसे फिर वही बोल रहा हूँ ना, फिर Michu ruled PL. That too with Swansea, he scored 20 goals. यार ऑनरी ना, अच्छा, एटलीस्ट ये तो सब लोग मानते हैं जॉन टेरी इज अमंग द बेस्ट सेंटर बैक्स एवर इन द प्रीमियर लीग. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीमियर लीग बोर्ड. जॉन टेरी, ही इज गॉन ऑन रिकॉर्ड सेइंग, एंड जॉन टेरी हैज प्लेड एवरीवन. ठीक है, जस्ट सो यू नो, जॉन टेरी ने 2017 में चेल्सी के साथ जीता है, और जॉन टेरी में 2000 में हमने कप जीता था ना, तब भी ही वाज देयर. तो बेसिकली द एंटायर स्पैन ऑफ 18 years जॉन टेरी वाज देयर. In that period, उसने बोला है the guy who actually gave me, shivers. Nice. हाँ, that was Henry, man. Oh, that is the reality. तो वो आपको देखना पड़ेगा. मतलब again, when John Terry speaks, we listen. हम भी कुछ नहीं जानते उसके सामने. मतलब again, it's an opinion. If you feel otherwise, people are chatting, it's absolutely fine as well. क्योंकि you see the game differently. If you feel that, okay, I feel that is ruling the Premier League, then fine. But again, हम objectively बोल रहे हैं, just so you know. Which is again debatable, लेकिन हाँ, Trent Bolt is back on the field. By the way, यहाँ पर quick update दे देते हैं for people wanting the cricket update. I know Rahul has been updating. Thanks Rahul भाई to be on it. But again, the reason I am not giving it because I still feel एक क्वेश्चन आ रहा है यार, उससे पहले एक अपडेट दे देता हूँ भाई. पहले अंशुमन एक अपडेट देता हूँ. 12 overs 90 for 3 है people. 12.2 overs 90 for 3, and I think they literally need another 89 runs. 89 or 46. Required rate is 11.61. तो अभी भी मुझे लग रहा है डेफिनेटली राजस्थान अ फेवरेट. वो अलग बात है कि राजस्थान किस मार्जिन से जीते. तो अभी आई स्ट्रेंजली वांट लखनऊ टू एक्चुअली लूज अ लॉट ऑफ विकेट्स. हाँ अंशुमन प्लीज यार, कौन सा कमेंट बोल रहा था? नहीं, वही वो एमसे का एक क्वेश्चन है. ही हैज पुट इट अप अराउंड, आई थिंक 3 या 4 बार डाला है एट 23. हाँ, यही. आई थिंक कंपैरिजन नहीं है कोई, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं बताता हूँ रीजन बीइंग, एम्बापे इज प्लेइंग इन अ फार्मर्स लीग. ठीक है, पहली बात. फार्मर्स लीग, पीपल टेक इट इन अ रॉन्ग वे, बट हाँ, वहां पे कंपटीशन नहीं है. Till the time they are not winning the Champions League, they will be regarded as a Farmers League. Simple as that. कोई hate नहीं है. I want Mbappe, he's अभी के generation में he's one of the best. Absolutely, कोई doubt नहीं है. But when you look at where Ronaldo was at the age of 23, people nowadays go along with the goals and assists. Stat pad. Obviously, when you look at the goals and assists, Mbappe के almost Messi और Ronaldo से double मिलेंगे. डबल मिलेंगे without a doubt. Mbappe is playing in a team where basically everything revolves around Mbappe. All right, and when we look at the team where Ronaldo used to play and where Messi was, बाकी के लोग भी थे. It was not a one man show. At 23, Mbappe वो बारसा की टीम में होता, I don't know. Might be, might not be. We may never know. At that age of 23, the way we used to gel, it's not about the talent, it's all about the teamwork. वो United की टीम में at the age of 23 खेलता, we will never know that. So it's very hard to compare कि मतलब when you take a time span जहाँ पे 10-12 साल का difference हो. It's not like कि Mbappe is 23, Ronaldo, Messi is 24, 25. So it's very, very difficult to compare. Stat padding, obviously people will say Mbappe के goals and assists देखो, obviously यार he is scoring for fun, उसको कोई deny नहीं कर रहा. But when you look at the overall impact, what Messi did for Barcelona at that point of time, what Ronaldo did for United at that point of time. So comparatively, अगर उस तरीके से बोलो, goals assists नहीं मिलेंगे, but when you look at the way they played. अरे भाई, Atlanta almost scored. You know what? By the way, Zappacosta is the guy, man. Zappacosta, पता नहीं भाई आप इंटर मिलान फैन हो क्या? अटलांटा के कलर्स पहनकर, मतलब he's trying his best to score. But यहाँ पर राहुल पूछ रहे थे, मिलान has to win. I feel, I definitely believe that way. लेकिन वही है, मतलब इंटर का मैच अभी बाकी है, तो I'll go there. Again, I know that multiple matches are happening, so अगर कुछ मिस हो रहा है तो यार चैट आप हेल्प कर दीजिए, पैनल आप हेल्प कर दीजिए.
I am मैं focusing तो now on the खाली Milan Atalanta मिलान game. वाला गेम ही लगा के बैठा हूँ, तो इधर कुछ भी होता है तो क्योंकि फिर मैं एक वही गोल, बताऊंगा। 1 goal will change the thing वहां पर। तो मेरे ख्याल से मिलान एटलांटा इज मोस्ट इंटरेस्टिंग। लखनऊ मेरे ख्याल से नहीं जीतने वाली, मतलब ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ, लेकिन अगेन एनीथिंग कैन हैपन। Prasanna, question for you. I think Chelsea is a focus more on the academy. What would it take for Chelsea to come back? Last City, Liverpool, depth, last Chelsea proper. Steve, Klopp and Guardiola have had six or 7 years respectively, so they have been backed enough. And now Liverpool and Man City's team that have been built by them from the scratch. Tuchel kind of needs the same. He needs to be back. Imagine. And let's be honest, Lukaku and Saul were not even his signings. They were both signings, to be honest. And with this team, in a span of say 12, 18 months, has won us like 3 trophies and got us to like 3-4 other finals. Imagine if he's actually back with his players, and he mentioned himself, we need proper scouting and all. So that's the thing. So, and good that Todd Bowley is here, and all we know that how he changed the LA Dodgers around, and he believes more in analytics and stuff. So, and for a start, I hope we get back Gallagher, Gilmore, Broha, and make them a regular part of our squad. That's for start. And obviously, with players going out, we need to replace them accordingly. It's not going to be overnight, but we need to see at least some genuine progress. I mean, when Klopp came in, he finished 8th that season but got to 2 finals. Next season, he finished 4th. Next season, 4th and UCL final. Next season, he won the UCL and lost the league by 1 point. Next season, he won the league. That is what we want to see. If it means 1 or 2 years, we go trophyless, but at the end, 3-4 trophies will be a monster to reckon with, I'm all for it. Yep. That's a great answer. Yeah, man, I have to drop off now, but yeah, man, catch you soon. Yeah, sure, man. Sure. Again, Yeah, man. PB talks. Thanks, man. Bye. It was good seeing you. Sure. Take it. Yeah, man. Thank you. Take care. Nice. यहाँ पर यार अगेन यार चैट जब ये कंपैरिजन आता है ना, मैं तो यार फ्यूचर में आंसर नहीं करने वाला, क्योंकि मैं पहले डिस्क्लेमर देकर भी देता हूँ। आप लोग फिर भी सेंसिटिव हो जाते हो, मैं क्या ही तो बोलूँ भाई। मेरा ओपिनियन है भाई, ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। रॉन्ग राइट का क्वेश्चन आता ही नहीं, क्योंकि 2 people सी फुटबॉल डिफरेंटली। मुझे जो अच्छा लगता है और एंटायर करियर फॉर समवन माइट बी डिफरेंट देन यू। आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, इट इज माय ओपिनियन, इट इज योर ओपिनियन। आई डोंट थिंक मतलब इतना इजी होता ना, मतलब ओपिनियंस हम लोग व्हाई आर वी इवन डिस्कसिंग, व्हाई आर वी इवन हैविंग लाइव स्ट्रीम्स, क्योंकि हम लोग के हर एक डिफरेंट ओपिनियन है, व्हिच इज फेयर। एब्सोल्युटली वी कैन कोएग्जिस्ट, you know, we can agree to disagree, which is absolutely fine. Right. And again, मुझे पता है काफी चैट जो है काफी प्यार भी दिए मुझे, तो यार again no disrespect to anyone here when I say anything. मैंने बोला है भाई, सब लोग great है, it's nothing about that, absolutely no. And I'm not saying कि you know it is a joke or something like that. ऐसे word use नहीं किए, so let's get it right. First of all, I have said in words, I have said in writing. मैं वापस से समझा दिया और फिर भी नहीं समझो, तो यार let's agree to disagree, which is fine, absolutely fine भाई, वो भी एकदम fine है। I respect you, you respect me, it's what it is. But यहाँ पर हाँ, let's get to 300 likes. That is the first objective. Second objective is let's get Milan to score a goal. I know Anshuman is like नहीं मुझे Serie interesting चाहिए, they should drop points and interest should, you know. Interesting, it will be interesting till the last game, क्योंकि you know one slip here and there and title is gone. Yeah, वहाँ पे फिलहाल तो you know, यहाँ पे AC Milan, if they drop the points, you know, for me it's over for them. क्योंकि वो 15 गोल का डिफरेंस they are not going to catch up, अगले गेम में 15 गोल नहीं मारने वाले। देखते हैं भाई, मुझे तो टेंशन होना शुरू हो गया अभी, लेकिन यार मैंने कैच नहीं देखा हमारा, मैं एक्चुअली 3 मैचेस में ना शिफ्ट कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है ना, आज जैसे ही मैं दूसरे मैच में लगाता हूँ पिछले मैच में कुछ होता है, तो मैं आई एम नॉट एबल टू फॉलो ऑल द 3 मैचेस टुगेदर। आई थिंक मैंने लगाया भी था यहाँ पर, अबे भाई, तो आई एम सीइंग एवर्टन ब्रेंटफोर्ड एंड मिलान एटलांटा, क्योंकि वहां पर है ना खाली मतलब आधी घंटा बाकी है, आधी घंटा और 10 मिनट बाकी है, तो आई एम लाइक राइट नाउ फोकसिंग ऑन देम। लेकिन हाँ, कुछ भी हो रहा है तो आई एम सीइंग राहुल्स अपडेट्स, आई एम सीइंग बेसिकली आदित्या's अपडेट्स, काफी अच्छा है, आई एम गेटिंग दोस, एंड ऑफ कोर्स पैनल इज अपडेटिंग एज वेल। लेट्स सी, मीनवाइल तो 4 डाउन हो गए ना, लखनऊ और 4 डाउन। 300 लाइक्स के बहुत करीब है स्ट्रीम,
So whoever is here for the first time, do like that stream. Stream like करना कोई ना भूले. और एक और चीज है, सब्सक्राइब करना मत भूलना टू ऑल द चैनल्स इंक्लूडिंग ऑलमाइटी ब्लूज एफसी और हमारा दूसरा चैनल है, राइट? पीपल माइट नॉट सब्सक्राइब टू हमारा दूसरा चैनल, सो लेट्स डू दैट. काफी बार हम देखते हैं, भूल जाते हैं. एंड अगेन द यूनाइटेड रोड, प्लीज चेक इट आउट. पीपी टॉक्स, प्लीज चेक इट आउट. लिंक्स आर ऑल बिलो, राइट? सुन लो अंकित भैया की बातें भाइयों, इधर भी आने चाहिए सब्सक्राइब. अभी लेकिन गोल करा दो यार मिलान का, कैसे ना कैसे. मैं तो ऐसे बोलता हूँ अभी. ये देखो मैं मैच यहाँ मैं बोल रहा हूँ गोल करा दो. अमर बोल रहे हैं आई लाइक एटलांटा ऑफ द विन. नहीं बोलता भाई, नहीं बोलता, सॉरी. अरे नहीं भाई, नहीं नितेश भाई, आप हमारे मतलब कम ऑन, मतलब नितेश से कौन गुस्सा हो सकता है भाई? यू हैव बीन सपोर्टिंग एवर. एंड अगेन लाइक आई सेड, इट्स एन ओपिनियन. यू थिंक अरे ऑलमोस्ट गोल हो गया, नहीं साइड नेटिंग. Theo Hernandez था क्या? अच्छा फ्री किक था by the way. What a blessing for United. They have got such an ambitious manager in Ten Hag. They should be very happy. He is ambitious, but again, in the biggest of leagues, has he done? Expectations come rakho as United fans. Would that be right, Anshuman, to tell that? My expectations, भैया, to be very honest, expectations depends on the signings we make. ठीक है, तो मैनेजर किसी को भी उठा के ले आओ, तुम उसको if you are not backing that manager up in the window, मैनेजर को हम विंडो में क्या दे रहे हैं? You know, I'm literally gonna scream my lungs out अगर हम इनको पहला साइनिंग अगर एरिक टेन हाग को फ्रैंकी डियोंग दे दे. अरे वो तो अभी डे बाय डे लग भी रहा है ना. अब नो लेवेंडोव्स्की probably for me it's 90% done. By the way, substitutions here. Quick yeah, shout out. Giroud is off and Zlatan is not on. Rebic is on. Interesting. मतलब हो सकता है Zlatan is probably ending his career, man. मतलब looks like it. मतलब pretty sure अभी तो. Anshuman अभी यार, अंकित अभी thank you. मैं वही बोल रहा हूँ कि भैया when it comes to Ten Hag, ठीक है, he will demand. वो एक ही रीजन से आया है यहाँ पे कि उसको जो मांगेगा उसको मिलना चाहिए. ठीक है, there is no fooling around कि भाई मांग कुछ रहे हो, लाके कुछ भी दे रहा है और मैनेजर बोल रहा है चलो ठीक है. So अरे Zlatan is not even kitted यार, वो किट भी नहीं पहना अपना. उसको जरूरत नहीं है ना. लायंस डोंट वार्म अप बोल देगा वो ऐसा आके. वो बोल देगा आके लायंस डोंट वार्म अप, क्योंकि बेंच पर है. आई एम सीइंग द. हाँ बैठा है. मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो, people are saying that we need a CDM. Obviously we need a CDM. Just because we are getting, if we get Frenkie de Jong doesn't mean कि हम CDM ना लें. We need that CDM, but then you cannot let go of player like Frenkie de Jong if he is available. Simple as that. Pogba already जा चुका है, Pogba. So अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आंसर कर दूं जल्दी. अंशुमन, what will you do if Ten Hag also fails in 4 years? See, if but वाली चीजें बहुत हो सकती हैं. एक तो 4 साल रहेगा नहीं फेल होता तो नहीं. मैं वही बोल रहा हूँ ना कि if but बहुत सारी चीजें हो सकती है कि 4 साल में it's very very hard to say at this point of time. यहाँ एक स्ट्रीम पे बैठ के कि 4 साल में if he fails what will happen. 4 साल का कोई कुछ नहीं बोल सकता. ऐसा भी हो सकता है अगले साल आके प्रीमियर लीग जिता दे, अगले 10 साल में कुछ ना कर पाए. तो you never know. It's football. और तभी लेस्टर won the Premier League. ठीक है, मिलान स्कोर्ड. अरे भाई मैं चेंज ही क्यों करता हूँ चैनल, लेकिन अभी तो अच्छा किया. मैं मिस कर दिया भाई गोल. मैं एवर्टन वाला गेम देख रहा था. राफेल लियाओ. What a player, man. What a player. What a goal. अकेला रन हाफ लाइन से लेके गया बॉल एंड ही स्कोर्ड. यार फाउल है कलुलू का. दिखा रहे वापस. अभी देख रहे हैं. वार चेक ऑन. कलुलू है फाउल. Clear foul. Goal is going to be disallowed. अरे भाई ये तो बैट्समैन का याद दिला दिया. I think it's going to be disallowed. But यार, will they take the play back in ना? That is my point. माल्डीनी को देखो भाई कितना. अरे भाई what? Rafael Leao, Chelsea fans will remember the goal against Manchester United in a cup where we lost. It was a Carabao Cup. Batshuayi actually headed the ball
वो वाला गोल याद आ रहा है मुझे देख कर ये, फाउल नॉट, जहाँ पर रैशफोर्ड ने मारा था मस्त फ्री किक, हाँ उसमें जो बैट्समैन ने Foul मारा is था ना not वो given. वाला। foul is not given. I think it was a clear foul. लेकिन अंशुमन मैं क्या बोलूंगा, एज पर द रूल्स बोलूंगा, आर दे अलाउड टू टेक द गेम बैक इतना, मतलब ही शुड हैव स्टॉप द गेम, मतलब आप Yes. बोलोगे ना ये क्योंकि एक फेज में था, बॉल डिडंट गो आउट ऑफ द प्ले, उसी फेज में जाके दे स्कोर्ड, should have been given a यार foul. इटालियन रेफरिंग यार, इट बैलेंसेस आउट। No, I absolutely love their VAR. You know, इनका VAR और Bundesliga का VAR, they work the best. बेटर है, मच You know, बेटर उसमें है। कोई डाउट नहीं है. But yeah, at this point of time, I think they have made a wrong decision. राफेल लियाओ, काफी लोग बोल रहे थे ना अबाउट मिलान इन्वेस्टिंग और नॉट, आई डोंट नो अबाउट इन्वेस्टिंग, दे शुड होल्ड ऑन टू राफेल लियाओ, टोनाली, you know, they should really not get rid of these players. Tomori, मतलब these are the players जो उनको नहीं बेचना चाहिए exactly. No, Inter fans नहीं यार, नहीं आने वाला वो, राफेल नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा वो, डीएनए ही नहीं है चेल्सी की वजह से। हम लोग लाएंगे बेसिकली यार जो 2 साल से स्काउट कर रहे हैं, जो नो लोगों को पता है सबको, राफेल अभी तो पता है खैर, लेकिन मतलब जो साउथ जैसे ले लो एग्जांपल, 1 साल स्काउट करने के बाद लोन पर लाए। Chelsea is scouting, man, really sad, but anyway I hope it gets better, like with Perisic is a great one यार। what do you think about Perisic भाई, अंशुमान, मतलब is it a good one for wing back, भी खेलता है, अटैकर भी खेलता है, experienced है, 2 साल के लिए not a bad option, from the bench he is never a bad option, और फ्री है भाई, और ये गोल हो गया, don't tell me, अरे बच गया, I thought one more goal, कुछ ज्यादा लालच हो गई यहाँ पर AC मिलान फैंस को। 600 वोट्स बट ओनली 280 लाइक्स, कम ऑन, 300 लाइक्स तो बनता है डेफिनेटली, 50% लाइक आ जाएगा भैया, अभी बचा है, अभी स्ट्रीम भी आधा घंटे से ज्यादा बचा है। अरे तो अगर टोटल टारगेट तो ना वो ज्यादा है भाई, इसलिए बोल रहा हूँ, अभी चाहिए अपने को, वी नीड टू गेट 3K सब्सक्राइबर्स एंड 350 लाइक टारगेट है, ठीक है? सब लोग देख रहे, कर लीजिए जो भी नहीं किया है, आई नो, थैंक्स जो भी रहा है। मेरा तो क्वेश्चन भैया, अंकित भैया, नितेश इज अ सिटी फैन, उसका एक क्वेश्चन आई वुड टेक। हाँ नितेश भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो व्हाट सिटीज प्रॉब्लम इज इन द यूसीएल, यू नो, आई थिंक ये अफ्रीकन कर्स बोल लो, जो भी बोल लो, या टुडे कर्स मेंटालिटी है भाई, मेंटालिटी exactly. हम लोग थे ना, हम लोग थे 2000, याद है मिड 2000s में, you know, when you look at the teams like, you know, when you look at the teams like Madrid, United, कि भी चलो अभी तो टीम की ही हालत वैसी बुरी है, बट व्हेन यू लुक एट द मेंटालिटी, यू नो, इन द लास्ट मिनट भी जहां पे वी आर अ गोल डाउन, वी डोंट गिव अप, एंड व्हेन यू लुक एट सिटी, लाइक लिटरली 2-0 से अप हो यार, 2-0 से अप हो ना, तो कोई अवे गोल्स का सीन है, कुछ नहीं है, ऑल यू हैव टू डू इज होल्ड फॉर 5 मिनट्स एंड फ्रॉम देयर यू एंड अप लूजिंग द गेम। या अरे आपको बना देते हैं भाई मटाटा यूनाइटेड यार, आई नो, मतलब यूनाइटेड फैंस हो, लेकिन अगेन इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, और आई नो यू हैव बीन सपोर्टिंग फॉर लॉन्ग, इफ यू वांट टू, मतलब आपको अगर बनना है मोर तो मुझे बताइए, मैं अगेन डिपेंडिंग ऑन इफ यू आर रेगुलर, हाउ योर कमेंट्स आर, अगर आप सपोर्ट कर रहे हो एंड ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड द लार्जर पिक्चर, जो डिस्कशंस होते हैं हमारे जनरली, you are certainly, you know, you can become a mod भाई, definitely I'll make you a mod। यार अंशुमन, आप अगर कुछ कमेंट्स ले सको, 2 और कमेंट्स, मैं 1 सेकंड के लिए आता हूँ। ठीक है एमसी से इतने इंपॉर्टेंट मैच में 2 रेड कार्ड कैसे चलेगा लैम्पार्ड भाई? वो बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, लीड्स उनको हेल्प कर रही है, बट दे आर नॉट हेल्पिंग देमसेल्व्स। भाई नितेश भाई, द थिंग इज, you won't be called as the biggest club in the world till the time you don't win the Champions League, ठीक है? लीग में, you know, लीग में you have dominated in the past 7-8 years, but till the time you're not, you know, beating the likes of Real Madrid, beating the likes of any team, you know, in the Champions League to win that trophy, you won't be considered as a global superpower. You know, that's one of the reasons that team is still struggling in order to fill a stadium. You know, that's what I'm saying, कि मतलब ठीक है, you know, you are successful and still you are struggling. ठीक है, पहले हमने मिस कर दिया था क्या अंशुमन भाई? आई थिंक रॉन्डॉन का रेड कार्ड, पता नहीं, मैंने मिस कर दिया शायद, रॉन्डॉन रेड कार्ड वो दोनों ने मिस किया। रॉन्डॉन और ब्रैंथवेट का जो था ना, तो फॉर मी, आई नो रॉन्डॉन इज नॉट लाइक अ स्टार्टर,
लेकिन अगेन यार भाई मतलब कंसिडरिंग द मैचेस मे बी दे वुड हैव नीडेड, अभी 2 प्लेयर्स नहीं अवेलेबल होंगे लैम्पार्ड के लिए फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। इमेजिन, आई नो दोस आर सबs, नॉट रियली स्टार्टर्स दोनों ही, लेकिन इट मैटर्स भाई। एक भी अगर होता है आपका अटैकिंग इंजरी में, दे वुड हैव वांटेड रॉन्डॉन। सेम थिंग आप ब्रैडवेट बोल सकते हो ऑन द अदर एंड। तो इट इज अ मेजर इशू फॉर एवर्टन, इसलिए मैं बोलता हूं they have given up basically, मतलब वो अब जा रहे हैं feisty, they are trying to be feisty but it's not working for them. और मैंने अभी देखा था मटाटा यूनाइटेड का कमेंट था दैट यू हैव अ पिक विद जॉर्ज विया, दी जॉर्ज विया। अरे भाई मतलब वाओ वाओ, दैट इज लाइक ब्रिलियंट मैन, ब्रिलियंट, मतलब जॉर्ज विया। बाय द वे चेल्सी I met Roberto Carlos when he was playing for Delhi. wow, Roberto Carlos and another legend man, wow, lucky you. लेकिन Perisic is okay, he's not bad. Okay, let's see, please share the link to your family and friends if you're enjoying the stream. Yeah, absolutely helps as well. City are becoming bigger bottlers than South Africa. Well, यार वो थोड़ा सा अभी देखते हैं यार, like it's not easy man, मतलब it's easy for to say but let's see यार, लीग में तो they have been dominating. नहीं भैया, from the position they have lost, you know, no one is saying कि वो easy था, मतलब ऐसा नहीं था कि they are going to just, you know, run past Madrid, ऐसा कोई नहीं बोल रहा था, but you know the way they have lost, that shows the mentality. ये वाला तो ऑलरेडी ले लिए थे। People might say KL Rahul is player of LSG this year. Definitely Huda has been the best batsman. Good point, Amar. Very good point. मतलब while KL Rahul has been their मतलब highest run scorer for a long time, उसका आप बोल सकते हो the acceleration at the time जो करता है maybe that is debatable, और his captaincy is not up to the mark. Maybe यार he's not commanding नहीं इतना। तो those are points that maybe would say Huda if he does more, if he use more the ball, maybe आप बोलोगे Huda है। हाँ बैटिंग में तो डेफिनेटली दिखाया, लेकिन अगेन मैं फिर भी केएल राहुल जाऊंगा यार, मतलब जस्ट बिकॉज वो स्टार्ट जो देता है ना, और वो डोमिनेट करता है जब भी करता है इन द एंड। राजस्थान रॉयल्स विल विन फॉर श्योर, एब्सोल्युटली दैट इज व्हाट इट इज। 107 फॉर 4, कोई स्कोर तो चेंज नहीं हुआ ना, मैं नीचे स्कोर कर रहा हूँ, मतलब आई थिंक इट्स ऑल द सेम, आई डोंट थिंक इट हैज चेंज्ड। आपको यार मिलान का चेंज हो गया भाई, मैं मिस कर दिया था मिलान का चेंज हुआ। लेकिन हाँ, अदर देन दैट आई थिंक वी आर ऑल फाइन। मतलब अगेन पीपल, अगर आपने द यूनाइटेड रोड नहीं चेक किया तो प्लीज करिए यार, मतलब इट मींस अ लॉट इफ यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू यूनाइटेड रोड एज वेल। या ही हैज रीगेन्ड ऑफ कोर्स द फैक्ट दैट वो कृणाल पांड्या और हुडा एक टीम में समा गए भाई। थिंक अबाउट इट, उनका जो हुआ था कांड जो हुआ था उसके बाद एक टीम में समा गए और अच्छा किया, दोनों ही अच्छा किया टू बी ऑनेस्ट। कृणाल पांड्या और हुडा दोनों ही अच्छा किया टू बी ऑनेस्ट। Believe me, in 2 to 3 years, Serie A will compete with Premier League. Let's see. पैसों का मामला आ जाता है। Let's see how much if Milan gets, maybe other clubs get, वो हो सकता है। They have very high competition. I don't think so. You know, I think exactly. It's a bit of exaggeration. I also believe. If you are saying कि 2-3 साल में you know they will compete, तो 2-3 साल में PL में और भी ज्यादा पैसा होगा यार। You know, when you are ahead, you are ahead. और the thing is कि Italian, when you look at Italian football, ठीक है, तो वहां पे अगर 3-4 टीमों को हटा दो वेयर दे हैव ट्रेडिशनल सपोर्ट, बाकी की टीमें कितना मैचेस देखने आ रही है यार। यू नो 30,000 के स्टेडियम। एल्सन बोल रहे हैं एलएसजी अभी भी जीत सकती है भाई। 64 और 26 बॉल्स, स्टॉइनस है, हुडा है, यू कैन से दैट हुडा हैज प्लेड रियली वेल। वो इंटरेस्टिंग हो गया मैच, आई विल बी ऑनेस्ट, लेकिन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट वन विकेट। Huda and Pandya best friends until and unless Pep, Klopp and Tuchel, yeah, I think managers kind of call it as well, as Anshuman said. Nitesh bhai, the thing is when you have you know people in the stadium कोई किसी ने देखा, अंशुमन देखा वो विकेट? नहीं, मैं इधर ये मिलान वाला गेम देख रहा हूँ। अरे सॉरी, हुडा का स्टंप आउट हुआ है अभी भाई। संजू सैमसन बॉल मिस कर दिया था ऑलमोस्ट, और ऐसे ही विकेट को मार दिया था स्टंप में, लेकिन फिर वापस से इतना टाइम मिल गया कि वापस बॉल उठा के वापस से विकेट में गिरा दिया। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यू नो मेकिंग मोर फैंस आउटसाइड यूरोप देन स्पर्स एंड मिलान, तो उसका क्या करें? यू नो बाहर के सपोर्ट से, यू नो ऑब्वियसली यू नीड दैट लोकल सपोर्ट भाई। व्हेन यू आर गोइंग इनटू दैट स्टेडियम, तुम्हारे पास 55,000 का स्टेडियम है, तुम बाहर फैंस बना लो, ठीक है। अभी तुम जीत रहे हो तो तुम्हारे बाहर फैंस बन रहे हैं। अगर तुम 2 साल बाद पेप जाने के बाद अगर तुम जीतोगे नहीं, कोई पूछने नहीं आएगा भाई तुम्हें।
कोई पूछने नहीं आएगा. That's why when you look at the likes of Chelsea, when you look at the likes of Arsenal, Spurs, they have that traditional support. जहाँ पे they fill their stadiums with ease. चलो, Arsenal in the recent years they have struggled a bit क्योंकि because of the ticket prices and all. But when you look at City, they struggle anyways. You know, इतना जीतने के बाद भी they are struggling. You know, वो हार्ड. चलो, कोई पैसा इन्वेस्ट किया नहीं हुआ वो अलग की बात है. You know, but यार थैंक यू यार बोलने के लिए. अगेन पैनल और चैट ही बनाती है. मैं आकर इतना भी बड़बड़ कर दूं ना, मैं तो रिपीटेटिव लगूंगा आप लोग को. जैसे कमेंट भी किया था एक बंदा, मैं काफी रैंट पर चल जाता हूँ. और लेकिन हाँ, अगेन यार मतलब अगेन यू ऑब्वियसली लाइक डिफरेंट व्यूज एंड दैट्स व्हाई यू गाइस आर हियर. और अगर आप लाइक कर रहे हो तो लाइक करिए स्ट्रीम को. मतलब सिंपल बात है. यूजी डज इट अगेन. यस यूजी मैन, आई मिस हिम मैन. ऑनेस्टली मैं बोलूं, आई मिस हिम इन आरसीबी, बीइंग एन आरसीबी स्टैन. इफ रसल और पोलार्ड एंड यस, अगर वो होते ना इस पोजीशन में तो बोल सकते थे. बट स्टॉइनर्स भी मार सकता है भाई. आदित्य स्टॉइनर्स मार सकता है. आई डोंट थिंक. बाय द वे, गेटाफे और बार्सिलोना का शुरू हो गया मैच, जस्ट सो यू नो. 0-0 है, ऑब्वियसली जस्ट शुरू है. लेकिन हाँ, आई जस्ट रियलाइज कि वो भी मैच हो रहा है. यार मैं चाह रहा था वो भी कवर करे, वो भी उसके बारे में बात करें, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा वो तो. अगेन नहीं, बारसा फैंस हाँ है यार. आई थिंक बारसा फैंस है तो गाली देंगे मुझे, वो नहीं कवर करेंगे तो थोड़ा बहुत. लेकिन हाँ अगेन यार, गेटाफे बार्सिलोना मेरे ख्याल से मतलब अगेन मैं बोलूंगा इनकॉन्सिक्वेंशियल है. बारसा आर ऑलरेडी देयर, दे आर ऑलरेडी देयर. सेकंड ही कंप्लीट होने वाली है. मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, कहीं नहीं जाने वाले. हाँ देखना पड़ेगा कि यार परफॉर्मेंसेस देखने पड़ेंगे. डिफेंसिव हाँ आज बहुत डिफेंडर्स मिसिंग है, तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा कि हाउ दीज सेकंड चॉइस डिफेंडर्स प्ले. देखते हैं, मतलब मैं लाइनअप देख ही रहा हूँ. हाँ एज एक्सपेक्टेड बाल्डे, लॉन्गले. I will pick up the comments. हाँ आप करो यार थोड़ा, मैं टीम दिखा देख लेते हैं. अंशुमन भाई अगर सेम तरीके से चलते रहे तो 10-15 डाउन पे भाई. दैट्स द थिंग नितेश भाई, दैट 15 साल इफ यू आर सक्सेसफुल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तुम 15 साल बाद सक्सेसफुल रहोगे या नहीं रहोगे पता नहीं ना. ठीक है, तुम 15 साल बाद तुम इस तरीके से सक्सेसफुल रहोगे कोई बोल नहीं सकता ना. So let's see how that goes. Milan is saying Brentford win. Expected था Milan. You know, Barcelona made their own mess. So, you know, they dug their own hole. Now they are देखो Everton on 36 points. they will be safe. अभी भी 2 गेम्स है यार. Technically थोड़ा है. कोई नहीं, मतलब देखते हैं. मतलब लैम्पार्ड के लिए you are such an honest and humble guy. We need more people like you. Keep going, brother. I'm from Nepal. But love the passion you guys have for sports. Both of you are awesome. Thanks a lot. Yeah. And I definitely, you know, kind of learn from people around me, which includes Anshuman, which includes everyone in the chat. So that is also part and parcel. भाई मतलब every day is a learning. I don't know यार, बारसा फैन गुस्सा मत होइए. आप देखिए यार, वो भी थोड़ा सा कवर कर ही लेंगे. तो यार लाइनअप यार बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइनअप है, इसलिए मैंने किया हूँ कि वी कैन नॉट मिस सच अ लाइनअप. आप देखो डिफेंस, देखो बारसा की बाल्डे जो बेसिकली बारसा बी के लिए खेलता है, लॉन्गले, मिंगेजा, डैनी एल्वेज इज द ओनली एक्सपीरियंस गाई. अरे रिकी पूज भी खेल रहा है. मतलब 5 आप बोलोगे 4-5 ऐसे जो यू विल नॉट स्टार्ट एट ऑल. बट अगेन इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच है ऑलमोस्ट. मैं तो बोलूंगा बारसा विल फिनिश सेकंड. आई डोंट नो वाज इट फेयर टू प्ले द एफए यूथ का फाइनल. भाई हम फाइनल में पहुंच गए, उसके बाद वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ मटाटा. वो वेन्यू पहले डिसाइडेड होता है. ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड जीत के फाइनल में आ गई है तो भाई यूनाइटेड को होस्ट करा दो स्टेडियम में. इट वाज चेंज नहीं करते भाई ये लोग, चेंज नहीं करते चाहे कुछ भी हो. एग्जैक्टली. एंड ऑब्वियसली फॉर अ गेम ऑफ दैट स्टेचर, यू नो, तुम चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए. नॉटिंघम के स्टेडियम में कितने लोग आने हैं? ज्यादा से ज्यादा 25-30 हजार. यू नो, अमर हैज अ पॉइंट बाय द वे. यहां पर पोलार्ड दिस ईयर हैजंट बीन दैट. मतलब अगेन मतलब इज एंडिंग टू, मतलब प्राइम पोलार्ड मुंबई सेम नहीं रही. एग्जैक्टली. सिटी आर बिल्डिंग द हिस्ट्री, सो एवरीवन्स टाइम विल कम. भाई बहुत टाइम है अभी, लेकिन हाँ डेफिनेटली वी हैव टू गिव टू लिवरपूल एंड सिटी यार. अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ रहा है. लिवरपूल मैं बोलता हूँ काफी स्ट्रीम में मेरी मेन राइवल है, डिस्पाइट लॉट ऑफ लिवरपूल फैंस गिविंग मी द लव. और यहाँ पर होल्डर भी गए भाई. होल्डर इज आउट एंड यहाँ पर लखनऊ जाते हुए 17.7 नहीं होने वाला. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. जस्ट नोटिस ब्रेंटफोर्ड वन, आई थिंक आपने ऑलरेडी ले गया है. अगला स्ट्रीम कल ही होगा भाई. वी स्ट्रीम ऑलमोस्ट एवरी डे. और हमारे जस्ट फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया. सेम विद अंशुमन, सेम विद ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स. जस्ट फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, फॉलो अस और कम्युनिटी पेज. आपको मिल जाएगा अपडेट, सर्टेनली मिल जाएंगे, एज लॉन्ग एज आपने बेल नोटिफिकेशन दबाया. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग.
रैंडम नेम जनरेटर, इससे बेटर डिफेंस लाइन देता। और ये अच्छा है। अंशुमान 2050 तक ऑयल खत्म नहीं हो रहा, सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अब स्टेडियम में लोग नहीं है, देखते हैं नहीं, City हेट के करने बारे में कोई बात नहीं करते बोल हैं। रहा भाई। नो वन कैन आस्क यू टू हेट द क्लब यू लाइक, सिंपल एज दैट, यू नो। कोई हेट करने नहीं बोल रहा, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस इज योर मोमेंट एंड यू गाइस, यू नो, हु आर ओवर देयर, उनको वो चीज नहीं समझ में आ रही। चलो एनीवेज, फॉर अस इट्स फाइन, यू नो। हमारा वो चैंट हमेशा आर्यन रहेगा। अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। आर्यन, आप लेना चाहेंगे आर्यन का क्वेश्चन? अंशुमान बिल्कुल बिल्कुल। प्लेइंग 11 नेक्स्ट सीजन आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं, बट या डेफिनेटली आई सी 3 चेंजेस। बट यू नो, ये चीज ऑब्वियसली समर ट्रांसफर विंडो के बाद इट्स वेरी इजियर टू से कि कौन खेलेगा कौन नहीं। But when I look at the playing 11 next season, I think definitely Frankie de Jong, you know, it's one signing. Now I will be very disappointed if we are not going through, because जितने reliable journalist है, I don't take reports of Sun और बाकी के जो, you know, कुछ भी डाल दो, मसाला डाल के बेच दो. Coming from the most reliable Barca journalist, coming from one of the most reliable United journalist, दोनों ने confirm किया है, we are going to make a 70 million pound bid, you know, very very shortly. And they are more than happy to consider it. More than happy to consider it. You will Azio यार, मैं शायरी करूँ, सच में बोलता हूँ, क्योंकि यार मतलब अगेन आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग मोर कंटेंट, तो मैं करूंगा वो मैचेस जहां पर यू नो सम सिग्निफिकेंस हो, यू नो व्हाट आई मीन। यू विल Azio मुझे नहीं लगता इतना सिग्निफिकेंट है कंपेयर टू बेसिकली आज जो हो रहा है मैच। हाँ, लेकिन इंटर मिलान का मे बी हु नोज दैट वी माइट डू। और प्लस वी आर लुकिंग एट मोर कंटेंट। आप मैं हु एम आई की बात कर रहा था, नो योर क्रिएटर की बात कर रहा था। वी हैव सर्टेन सीरीज ना जो काफी यूनिक है। मुझे काफी लोग ने कांटेक्ट भी किया बिकॉज दे हैव कंटेंट क्रिएटर्स हैव लाइक्ड इट दैट मच, बिकॉज दोज आर सर्टेन सीरीज। वैसे सीरीज है जो आपको बेसिकली यू नो अलग से टाइम निकाल के क्रिएट करना पड़ता है। तो अरे गोल हो गया भाई, व्हाट अ गोल, व्हाट अ गोल बाय थियो हर्नांडेज भाई, ही हैज डन अ रायन गिग्स ऑलमोस्ट। What a goal! Oh man, I am like Theo Hernandez has finally. अंशुमान, पूरे सीजन में we have spoken so much. Theo Hernandez इतना प्रॉमिस करता है, आज तक वो जाता है, वो खत्म नहीं करता। ये गोल देखो भाई। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि Theo Hernandez is one guy who's a, you know, in a 3-man defense. मतलब ये दो लोगों के डिफेंस में what he does is absolutely amazing. 3-man के डिफेंस में जहां पे ही कैन प्ले एज अ विंग बैक, ये कम से कम सीजन के 15 गोल मारेगा ये, द वे ही प्लेज। अरे भाई, मैंने तो फीफा में ऑलरेडी ले लिया उसको, जस्ट सो यू नो। मेरे चेल्सी टीम में ऑलरेडी है वो। चलो, या एब्सोल्युटली, दिस हेल्प्स। ओह मैन, व्हाट अ गोल मैन। मतलब फ्रॉम द लेफ्ट बैक टू अ मिडफील्डर टू अ राइट विंगर टू अ लेफ्ट विंगर। भाई ये तो रायन गिग्स भी बेसिकली विल स्टैंड अप एंड अपलॉड मैन, दैट काइंड ऑफ अ गोल। और लेकिन मैं बोलूंगा अटलांटा को, यू नो, वेरी नाइस, दे शुड हैव फाउल्ड हिम। दे हैव डन व्हाट कॉकलिन डिड नॉट डू टू हैजार्ड। आई थिंक वो फाउल करना चाहिए था। अटलांटा डिफेंडर्स बैड वन बिल्कुल। लेकिन यार थियो हर्नांडेज वी हैव टू गिव इट यार। Zlatan को देखो, जिरू, लुक एट द जिरू एंड ज़्लाटान लव। हां प्लीज, कौन सा वाला? वो अंशुमान, I saw your video trolling City fans for not winning CL. भाई obviously as a United fan I will troll them. Obviously it's my, you know, it's my job to troll them. Simple as that. यार सिंपल सी बात है भाई। मतलब जो भी कमेंट किया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर द कमेंट। सेकंडली यार लाइक कर दो स्ट्रीम। थर्डली अंशुमन के चैनल पे आप सब्सक्राइब कर दो। सेम चीज टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी। और फाइनली मैं बोलता हूँ यार, लीड्स के लिए तो मैंने इतना बोल दिया कि आई होप दे गेट रेलेगेटेड एंड नेवर कम बैक। दैट इज आवर प्राइम राइवल। हमारे 6 पॉइंट फ्री के खा जाओ, मतलब हर बार डबल मारते हैं हम लीड्स के ऊपर जब भी होती है वो लीग में। हमारे 6 पॉइंट खा जाओ, है ना? नहीं भाई, लेकिन लीड्स है ना बहुत, मतलब एक तो हिस्ट्री है लीड्स और चेल्सी की। सेकेंडली यार जो भी खेलते हैं ना, हमारे से ज्यादा बड़ी नहीं है, हमारे से ज्यादा बड़ी हिस्ट्री नहीं है लीड्स चेल्सी की। नहीं है भाई, कैसे लोग मरे थे, पीपल डाइड। वो अलग की चीज है, यू नो। बट व्हेन वी लुक एट द राइवलरी जो चली आ रही है यॉर्कशायर लैंकाशायर, वो डिवाइड इज डिफरेंट। 1970 भाई, 1970 एफए कप बेसिकली क्या हुआ था, स्टैम्पीड हो गया था, ठीक है? तो लिटरली लोग मरे थे, दैट हैपेंड। तो तब से
स्टैम्पेड इज डिफरेंट भैया, बट नहीं स्टैम्पेड वो सॉरी स्टैम्पेड नहीं, मतलब लड़ाई हो गई थी, मुकामुकी हो गई थी एंड पीपल किल्ड ईच अदर, दैट हैपेंड वो चलो वो, बट अगर वैसे एक नॉर्मली अगर उस तरीके का डिवाइड देखो ना डे टू डे बेसिस, you know that Lancashire Yorkshire divide, geographically yeah you're right absolutely बिल्कुल बिल्कुल नहीं ये मतलब वो वही question नहीं अरे मैं बोल रहा हूँ ना अंशुमन, मैं उससे पहले बोलता हूँ, सादिक भाई थे पहले, मैं डिस्कस ही कर रहा था इन अर्ली 2000s एंड लेट 1990s लीड्स वर इजीली द मोस्ट हेटेड टीम, क्योंकि वो फुटबॉल भी वैसे खेलती थी। एग्जैक्टली वही सीन है, एग्जैक्टली यू हिट द नेल ऑन दैट। I do think Frankie de Jong will be sold this season and feel bad for a player who wants to succeed in a team. एक सुभाष भाई का एक क्वेश्चन था, I have been अच्छा ये तो नहीं, हाँ except the players which you want to buy realistically बोल रहा हूँ भाई, Frankie de Jong is very realistic और एक स्ट्राइकर ज्यादा रियलिस्टिक है, whether it's going to be incl और whether it's going to be Nunez वो देखना पड़ेगा। हमारा जो थर्ड प्लेयर will depend upon the sales which we make. So थर्ड प्लेयर का I don't know, but दो प्लेयर तो I am pretty much sure कि एक CM हम ले ही रहे हैं the way things are going. In the meantime we are also working on Calvin Phillips जो हमें 25 मिलियन का मिल जाएगा, 20 से 25 मिलियन का। Whether he wants to make a move or not, that's a totally different thing. But अगर लीड्स नीचे जाती है तो they will need that cash. तो हम 20 से 25 मिलियन में कैल्विन फिलिप्स उठा सकते हैं with the प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस. He would be a steal. सब लोग ताली बजाओ अंशुमन and chat. Bakayoko is coming. Bakayoko is coming onto the field. अरे भाई चेल्सी फैंस को पता है, जो किसी भी टीम में जाते हैं they are lucky in terms of trophies. हाँ उसका ये है, वेरी गुड पॉइंट अंशुमन वहां पर। व्हाट अ गोल मैन, व्हाट अ गोल, मजा आ गया यार, पैसे वसूल हो गए प्रॉपर वो गोल ऐसा है ना। एंड यस राहुल का बात यार कैसे नहीं सुन सकते भाई, राहुल थैंक यू याद दिलाने के लिए। लाइक्स आर नॉट मूविंग अबव एंड मैं देख रहा हूँ ज्यादा नाम सारे, तो मतलब क्लियरली लोग ज्वाइन किए हैं लेकिन लाइक नहीं जा रहे, तो जो भी ज्वाइन करते आ रहा है भाई लाइक कर दीजिए, सर्टनली हेल्प करता है। और 350 है अपना टारगेट भाई, आप देख लिया आप, और सब्सक्राइब टारगेट भी है 3K का। लेट्स गेट ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस टू 3K। एक क्वेश्चन है भैया वीकेंड। हाँ अच्छा चलो हाँ नहीं प्लीज विशन का क्वेश्चन है भाई। न्यूज ये आ रही है कि फ्रैंकी प्रेफर सिटी ओवर यूनाइटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल सिटी इज नॉट गोइंग टू पे द अमाउंट व्हिच वी कैन पे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये खेलेगा कहाँ सिटी में, यू नो हु इज गोइंग टू रिप्लेस बर्नार्डो सिल्वा, रॉड्री? आई डोंट थिंक सो, यू नो। और बात रही सीएल में, तो सीएल अभी लिख के ले लो, अगले साल सीएल खेलेंगे हम। और ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं बोल रहा, अगले साल से वो हिस्ट्री वाला शुरू हो जाएगा, where the teams who have performed well in the recent past they will be given automatic slots, तो उसमें हम घुस जाएंगे, you know। तो ये काफी ये एक्चुअली मतलब ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो यार, मैं तो अब्रॉड रहता था काफी सालों तक, तो मैंने क्या किया था ना, मैंने चेल्सी के फॉर एग्जांपल चेल्सी और मिलान के जो है काफी जो सीजन से जहां पर हमने जीता था ना, मैंने तो डाउनलोड कर लिया था कि वहां पर यू डोंट हैव लॉट ऑफ वेबसाइट व्हिच आर ब्लॉक्ड, so that is what I had done personally speaking. अब I know that लोग basically you can kind of buy them also. मुझे पता है if you want particular matches आप बोलिए मुझे, if you are ready to pay, I have a certain person that you want, I would certainly be happy to introduce you. Unless अंशुमन को कुछ पता है, मतलब certain website जहाँ पर पुराने, YouTube is always a case यार, पूरा मैचेस नहीं मिलेगा लेकिन हाँ you will get clips. पूरे मिलने थोड़े मुश्किल है। Yes of course यार, 5 घंटे होने वाले हैं, और अभी भी यार गेटाफे बारसा का क्या हो रहा है वहां भी देखते हैं क्या हो रहा है, जल्दी से कुछ हुआ वहां पर बारसा फैंस? मैं देखो सिंपल सी बात ये है कि people first of all, as MC said that he is a player who wanted to stay with Barcelona, obviously उसको मूव नहीं करना था, but now they are in a cash crunch, तो उनको वो पैसे चाहिए। as I said, जो wages यूनाइटेड ऑफर करेगी और जो फी यूनाइटेड देगी, दे आर नॉट सिटी उतना देने की पोजीशन में अभी नहीं है। सिंपल सी बात है, किसी को फैक्ट से अगर प्रॉब्लम है तो रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, बट दैट्स द फैक्ट कि जितना अभी हम देंगे उसको वेजेस, जितना हम उसको वेजेस अभी देंगे, बेसिकली वी विल गिव हिम द पॉग्बा वेज। जो हम पॉग्बा से सेव करेंगे अराउंड 300,000, वो हम सीधा फ्रैंकी को दे देंगे। सिंपल सी बात। और यहाँ पर यार काफी
मैं तो यार देख रहा हूँ मिलान इज लाइक ऑन द ब्रिंक ऑफ हिस्ट्री मैन. आई एम लाइक गेटिंग एक्साइटेड. बट एस्टन यार आरसीबी की याद दिला दिया एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड आरआर टू लूज. बट अभी भी यार 10 बॉल में 43 चाहिए. दे नीड प्रॉब्ली 6 sixes फ्रॉम स्टॉइनर्स. डेफिनेटली चेन्नई मैन. चेन्नई हैज टू बी यार. ज्योग्राफिकली बोलो या बोलो विराट एमएसजी का था. काफी सबप्लॉट्स भी थे. मैं देखा हूँ सीजन बाय सीजन देखा हूँ चिन्नास्वामी में. तो मुझे पता है वहां पर कितने चेन्नई फैंस आते थे और कितने ट्रोलिंग होती थी, कितना बेसिकली लड़ाई होती थी, कितना बेसिकली बैंटर होता था. चेन्नई आरसीबी भाई डिफरेंट लेवल. हाँ, और चेन्नई हैज अ गेम नंबर नो डेफिनेटली. उन्होंने किया है काफी अच्छा आरसीबी से, नो टू वेज अबाउट इट. लेकिन राइवलरी पूरी होती थी. अंकित तुम थकते क्यों नहीं यार? थका हो काफी ऑनेस्टली. पता नहीं दिख नहीं रहा है क्या. मुझे लग रहा है मैं कम एक्साइटेड हूँ एज यूजुअल. लेकिन हाँ यार सच में मैं मिलान के लिए काफी खुश हूँ यार. मतलब अंशुमन आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, मैं बोलूँ सच में बोलूँ. अब मैं प्लास्टिक हूँ भाई. सब लोग बोलते हैं प्लास्टिक प्लास्टिक. मैं हूँ प्लास्टिक. सब लोग हैं, हम लोग प्लास्टिक है. मिलान के देख लो 2010 के बाद लीग नहीं जीती. मैं सच में बोलता हूँ, फैक्ट है. साल बाय साल मेरा इंटरेस्ट एरिया में कम होते रहा. क्यों होते रहा? क्योंकि मिलान वो टीम रही नहीं है. वो फैक्ट था. मैं फॉलो करता था, लेकिन एक होता है ना एक एकदम पागलों जैसे फॉलो करना, उतना नहीं फॉलो करता था. और अभी आई एम हैप्पी फॉर सेरिया. मैं तो कल भी यार एक स्ट्रीम में गया था, मैं बोल रहा था सेरिया टीम ऑफ द ईयर भी करते हैं. बट हाँ अगेन काफी इंटरेस्टिंग. मैंने अंशुमन को दिखाया नहीं. वी हैड अ प्रीमियर लीग टीम ऑफ द ईयर ना. अंशुमन यहाँ ढूंढ के मारेगा हम लोग को along with some people in the chat. लेकिन अगेन यू माइट डिसएग्री. परफेक्टली फाइन भाई, परफेक्टली फाइन. यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ प्रीमियर लीग टीम ऑफ द सीजन. हाँ आज टाइम नहीं मिला. वी डिडंट डू द यूसीएल टीम ऑफ द सीजन. बट हाँ बिकॉज इतने सारे टॉपिक्स आ गए तो वी आर डिस्कसिंग दैट ओनली राइट. लेकिन ये है हमारा प्रीमियर लीग टीम ऑफ द सीजन गोइंग बाय द परफॉर्मेंसेस. अंशुमन एंड चैट, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा. थोड़ा सा आई नो कंट्रोवर्शियल है, बट दिस इज व्हाट पैनल चैट दोनों का मिलाकर वोटिंग था. ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं है भैया. रीस जेम्स का हुआ बहुत कंट्रोवर्सी ऑलरेडी. लेकिन अगेन द फैक्ट दैट वो टोटल पैकेज लाया फॉर चेल्सी वाज सो इंपॉर्टेंट इन द सीजन. मतलब if he wasn't there we wouldn't have based on this season I will give it to Trent. हाँ मैं ट्रेंट के लिए खुद ही जा रहा था. लेकिन लकीली फॉर मी रीस जेम्स के लिए ज्यादा वोट्स आ गए थे, तो इसलिए मतलब अभी तो नहीं. they will for me definitely Trent वहां पे, क्योंकि डिफेंसिवली भी थोड़ा इंप्रूव हुआ है वो. I will make fun of it because it's clear. बाकी रूडिगर फॉर थियागो. लेकिन अगेन वन और द अदर बोलो वही है. दोनों ही अच्छे थे, तो दैट इज द ओनली ऑप्शन. लेकिन हाँ मेसन माउंट आई थिंक डिजर्व्ड अ शाउट. लेकिन अगेन डिफिकल्ट यार, जब आपके पास बर्नार्डो सिल्वा है, डी ब्रुयने है, तो मेसन माउंट जो किया था पागल. ऑटोमेटिक क्वालिफाइंग बेस्ड ऑन हिस्ट्री फ्रॉम 23-24. देखते हैं भाई. वो भी करना है अपने को. कवर फॉर्मेट जो नया ना डिटेल में करना है अपने. करेंगे अंशुमन, आपके साथ ही कर लेंगे एक दिन. क्या बोलते हो? विल कवर दैट. बिल्कुल बिल्कुल. अरे फ्रैंकी स्टाइल इंकुकू भाई. अरे ये दिस इज अ नेक्स्ट लेवल प्लेयर. कहां जाएगा अंशुमन? विली मूव फ्रॉम लाइक बात है. हां इंकुंकू का देखो सिंपल सा सीन ये बनता है कि हम न्यूनियस हमें मिलता है या नहीं. इंकुंकू हमारा टॉप प्राइम टारगेट नहीं है. वी नीड दैट फिजिकल प्रेजेंस. ठीक है, हमें एक वर्सेटाइल प्लेयर वहां पे हमें वर्सेटाइल प्लेयर नहीं चाहिए. वी नीड अ प्रॉपर गोल स्कोरर वहां पे. तो दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर न्यूनियस. अगर न्यूनियस नहीं मिला तो फिर वी माइट गो फॉर इंकुंकू. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी कंट्रोवर्शियल है, बट ऑनेस्टली आई गेट इट अ लॉट as Matata United is saying, right? I have वो हमेशा मतलब वही है ना people. वो हमेशा इससे रहेगा टिल द टाइम. चेल्सी के साथ उतना ज्यादा रिलेट नहीं होता है बिकॉज़ नाउ चेल्सी हैज स्टार्टेड टू मेक देयर ओन मनी. ठीक है. और एक और चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगा क्विकली, सॉरी टू कट यू, लेकिन देखो चेल्सी का क्या है ना, लॉट ऑफ पीपल, फैक्ट है स्पेशली एशिया में बहुत कम लोग देखते थे भाई चेल्सी को 2005 से पहले. दैट इज अ फैक्ट. और क्योंकि आपने नहीं देखा उसके पहले, आप अज्यूम करते हो कि वी डिडंट डू इनफ. भाई वी वर अ कप proper cup team and we won lot of cups between 1997 and 2000. That's what I am not talking about that. I'm just saying कि आप लोग कप टीम थे, you know, it was not like कि Chelsea invisible था English football में. It was not like that. Exactly. City was totally invisible. City totally invisible था. और अभी भी apart from
यू नो अगर वह इस तरीके से देखो, जब हम सपोर्ट की बात करते हैं तो इनविजिबिलिटी दिख जाती है वो, ठीक है। इनको इस तरीके से ऑयल मनी इसलिए भी बोलते हैं भाई क्योंकि व्हेन यू लुक एट यू नो सपोर्ट, एक तरीके से स्टेडियम अभी भी नहीं भर पा रहा, यू नो पीपल से अरे स्टेडियम भर के क्या करेंगे, ट्रॉफी जीत रहे हैं। अरे भाई ट्रॉफी जीत रहे हो तब तो स्टेडियम में लोग नहीं आ रहे, जब नहीं जीतोगे तो फिर क्या करोगे, यू नो। सो एक वो वाली बात आ जाती है। एंड वो एक और चीज ये है कि चेल्सी मेकिंग देयर ओन मनी नाउ, ठीक है, सारा का सारा ओनर का पैसा नहीं है। व्हेन यू लुक एट सिटी, हाउ मच मनी यू नो द ओनर्स हैव पम्प्ड इन, और सिटी ने कितना ज्यादा खुद के रेवेन्यू कितने बनाए हैं। अगर 200 मिलियन इन्वेस्ट किया है इन अ ट्रेनिंग फैसिलिटी, तो वो 200 मिलियन स्पॉन्सर से आए हैं, ओनर के हैं, यू नो। जो 1.5 बिलियन 2 बिलियन के अराउंड जो इन्वेस्टमेंट मारा है, वो किसने मारा है, वो मंसूर ने मारा है। वो भाई तुमने अपने क्लब में पैसे थोड़ी कमाए हैं भाई। नाउ यू आर गेटिंग स्पॉन्सरशिप मनी, तुम्हारे किट के पैसे तुम्हारे पास आएंगे, बट स्टिल दैट्स नो लेस देन 4-5 टाइम्स व्हिच यू हैव पेड। सिंपल एज दैट। डिबाला यार 100% पता ही था यार, ही इज लीविंग यूवेंटस, अरे वो तो क्लब ने ही अनाउंस कर दिया, डिबाला क्या अनाउंस करेगा, क्लब पहले ही डी मरिया शायद जा रहा है, डी मरिया जा रहा है, अंशुमन लग रहा है। हां डी मरिया भी जा रहा है। हाँ मैं देखते मैं जाम्पा भाई, जाम्पा यार ये अंडरप्लेड है भाई, अंडरप्लेड मनी बोलते रहो, बजा के चले जाएंगे। अरे बजाने की बात तब आएगी ना भी कितने प्रीमियर लीग पे पहुंचे हो, हां डबल फिगर पहुंचे हो। कोई नहीं भाई, अरे लेट्स सी, ओके आई वुड एड्रेस दिस, लेट मी एड्रेस, क्योंकि मैं चेल्सी का फैन हूं, आई कैन एड्रेस इट, ठीक है। विशाल लाइक लेट्स सी, लाइक विद मैन सिटी मैं बोलता हूं ऑनेस्टली, यू आर क्रिएटिंग योर हिस्ट्री, वो रियलिटी है और आपने शुरू कर दिया है। आई थिंक पहले किसी ने कमेंट भी किया था, यू हैव क्रिएटेड ऑलरेडी, मतलब ऐसा नहीं कि आपने नहीं किया है। एंड मैंने खुद बोला है भाई, मैं द रीजन व्हाई आई डिड नॉट वांट मैनचेस्टर सिटी टू विन मोर टाइटल्स इज बिकॉज यार लास्ट 15 सालों में, और हाँ लोग बोलते हैं यू हैव 15 ईयर हिस्ट्री, चेल्सी को 20 साल बोलते हैं, मैन सिटी को 10 साल बोल रहे हैं, इसलिए मैं ना 15 साल बोल रहा हूँ एवरेज। तो 15 इयर्स में ही देख लेते हैं, 15 इयर्स में चेल्सी और मैन सिटी ने डोमिनेट किया है, दैट इज अ फैक्ट। लेकिन मैन सिटी ओवरटेक ले रही है चेल्सी को, दैट इज आल्सो अ फैक्ट। तो वी हैव टू गिव इट टू मैन सिटी, क्रेडिट टू मैन सिटी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एंटायर हिस्ट्री वी कैन नॉट इवन कम्पीट, एंड दैट्स अ रियलिटी विद मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल। आप चाहो नहीं चाहो, वो रियलिटी है अभी। और अगेन आप उस पर कमेंट, आई डोंट थिंक इट्स फेयर, यू आर चेल्सी फैन से या बजा के चले जाएंगे, यू नो बजा के चले जाएंगे। व्हेन यू विल हैव पीपल इन स्टेडियम, बजाना उसको बोलते हैं, ठीक है। स्टेडियम तुम्हारा फुल होता है जब यूनाइटेड से खेलते हो, तुम हमें बजाओगे नहीं, होगा यार, वो भी होगा, वो तो मतलब मैं बोलता हूँ उसका रीजन क्या है अंशुमन, कि एक होता है ना कि इंटरनेशनल फैन बेस ज्यादा है सिटी का आज के दिन में, मानोगे इंटरनेशनल फैन बेस ज्यादा है। तो इंटरनेशनल फैन बेस यू नो इतनी ज्यादा, मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट एवरी गेम में टू रीच सिटी, बट द फैक्ट दैट लोकली यू डोंट हैव, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अगेन you have a lot of history in other clubs, तो by default कोई अगर you know आता है player, you by default go with that because of the fact that एक larger aura है when it comes to Manchester United, when it comes to Liverpool, when it comes to even मैं बोलूंगा एवर्टन का fan base, एवर्टन का fan base भी है। मैं उस चीज को नहीं बोल रहा, आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है। देखो यंगर जनरेशन इज ऑल सिटी, ठीक है। यंगर जनरेशन इज ऑल सिटी, ठीक है। चाहे वो यू नो यंगर जनरेशन वो सिटी है, लिवरपूल है, चेल्सी है। अगर पिछले 10 साल में अगर आप फैन फॉलोइंग उठा के देख लो तो मेरा एक ही पॉइंट है कि एट द टाइम यू नो एट द टाइम वेयर यू आर एब्सोल्युटली डोमिनेटिंग, यू नो एक्चुअली डोमिनेटिंग द फुटबॉलिंग वर्ल्ड, तब वहां पे यू आर नॉट एबल टू मेक अप अ स्टेटमेंट इन योर ओन स्टेडियम, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है, मैं फुटबॉल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, ऑब्वियसली यू आर प्लेइंग 10 टाइम्स बेटर फुटबॉल दैट यूनाइटेड, यू नो। उसमें कोई थोड़ी है, मैं डिल्यूटेड होके थोड़ी बोलूंगा। आप एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहे हो, या आई एम टॉकिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर एंड हाउ यू आर नॉट एबल, नो आई वाज नहीं अगेन मतलब ऑफ अ लाइन, मतलब अगेन मतलब थोड़ा इंटरनेट में अंशुमन आपका डगमगा रहा है थोड़ा, इफ यू कैन जस्ट चेक इट। हाँ। लेकिन नितेश और विशाल, मैं इतना एंड करूंगा, लेट्स एंड दिस टॉपिक बिकॉज अच्छा मूड है यार, मिलान जीत रही है। क्विकली मैं बोलूंगा यहाँ पर,
मेरा ओपिनियन ये है कि एटमॉस्फेयर काउंट्स फॉर नथिंग. इट माइट बी लेफ्ट फील्ड चॉइस, फॉर मी इट काउंट्स फॉर नथिंग. इट इज आज का मॉडर्न डे फुटबॉल, अनफॉर्चुनेटली, एंड आई एम नॉट इन दैट ओपिनियन, वो रियलिटी है. it depends on the results. I totally disagree with you, Ankit bhaiya. नहीं, I totally disagree. I personally prefer atmosphere. मैं prefer नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आज का रियलिटी बोल रहा हूँ. जो what kind of sells is basically your performance. आज का दिन में बोल रहा हूँ, players don't look at that. कल को अगर Chelsea are in front of 10,000 people, Chelsea won't be taken seriously. चलो ठीक है, तुम ट्रॉफीज जीतो. मेरा पॉइंट जो है वो टोटली डिफरेंट है. अगर तुम 40,000 के स्टेडियम में, अगर चेल्सी का स्टेडियम 40,000 का है, तुम चैंपियंस लीग लेके आ रहे हो और 10,000, अगर 10,000 लोग वहां तुम्हारे लिए खड़े हो, तो ऑब्वियसली दैट डेफिनेटली मैटर्स. हाँ, ऑब्वियसली द प्लेयर्स आर नाउ मेंटली मोर टफ, और उस तरीके से आप देख लो. मैं उस वे में जाके बात नहीं कर रहा. आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हेन यू आर एट योर मोस्ट सक्सेसफुल, वहां पे तुम्हारे साथ अगर फैन बेस अगर तुम्हारा नहीं बढ़ रहा, अगर उस टाइम पे स्टेडियम फिल नहीं क्या गोल हो गया क्या? गोइंग टू बी डिफिकल्ट. गोल हो गया क्या एक और मिलान का? अरे भाई, ऑयल मनी बोल के बैंटर करते हैं. अरे छोड़ो भाई, ये नहीं बोल रहे कि भाई तुम यूनाइटेड. अंशुमान, we don't need to address every comment. It's perfectly fine. Let's leave it. Like people again, I will go back to the same comment. Let me actually host it because I am. The fact is that, yeah, come on, like you, the way you look at football is different. The way I look at football is different. The way Anshuman looks at football is different. Let's agree to disagree. That is perfectly fine, boss. And let's actually celebrate football in general. Okay? Every team is important. Every club is important. And I'm not trying to be on the fence. The fact is, मैंने तो बोल ही दिया what is reality, what is not according to me. But the fact here, bigger fact is, Milan have won. They have taken the game 2-0. Anshuman, अब बोलोगे यार क्या मिलान का साल आ गया फाइनली? Come on, बोल दो यार एक बार. मैं क्या बोल रहा हूँ, उनको they have to win their last game. They have to win. That is the thing. 2 ही पॉइंट आ गए हैं वो. Exactly. 2 ही पॉइंट आ गए हैं. Even if they drop, they are done. वो ड्रॉ करते हैं तो they are done. उनको लॉस की तो बात ही नहीं कर रहा मैं. Even if they draw their game, they are done. That's where the problem is. Exactly. प्रॉब्लम वहां पे है. अगर उनके पास उनके पास एक ये रहता ना कि अगर ड्रॉ पे भी they are getting the trophy. कि चलो भाई 95% it's done. मतलब बता नहीं यार, इंडियन कंटेंट हम लोग करेंगे, बाय द वे, जस्ट सो यू नो, हम लोग करेंगे, बट अगेन वी विल डू सिलेक्टिव एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई एम सेइंग. मतलब वही है, मतलब the way the channels are growing, I'm hoping कि यार और थोड़ा ग्रो होता तो यार I'll be able to source a little bit, और उससे मेरा bandwidth होता तो I'll be doing more videos. But again, there's a lot of requests coming for who am I and वो सब यार. I am kind of stuck in the two. तो अगर फुटबॉल मैचेस समर में भी कवर करें तो यार डिफरेंस क्या रहा, तो दैट इज द डिफरेंस राहुल. लेकिन हम करेंगे यार, हमें करना है. इंडियन फुटबॉल डेफिनेटली वी हैव टू कवर, एंड एशियन फुटबॉल एज वेल, अंशुमन एज वेल. आई एम प्रीटी श्योर हर एक कंटेंट क्रिएटर चाहता है ना कि जो भी फुटबॉल है हम सब कवर करें, स्पेशली इंडिया का तो यार डेफिनेटली हम कवर करना चाहेंगे, एशिया का. लेकिन वही है, मतलब व्हाट इज पॉसिबल, व्हाट इज नॉट, एब्सोल्युटली. एंड यस, लेट अस सेलिब्रेट चेल्सी वुमेन FA कप विन. कांग्रेट्स टू मिलान. एटलीस्ट एज ऑलमाइटी सपोर्टर, आप लोग सब जानते हो, दोनों ही आर गुड न्यूज फॉर अस. अंशुमन, ऑब्वियसली इट्स बीन ग्रेट काइंड ऑफ हैविंग यू. आई नो दैट अभी दूसरा मैच खत्म नहीं हुआ है. क्रिकेट मैच खत्म हो गया क्या? ऑलमोस्ट हो गया. खत्म हो गया. कौन सा बचा है? सारे खत्म हो गए. क्रिकेट मैच भी हो गया खत्म. अरे मैं देखता हूँ, मैं तो थोड़ा स्कोर शेयर कर लेंगे. चलो लोगों के साथ शेयर कर लेंगे. 24 रन से जीत गए. अरे भाई, यस, आई थिंक यार, यहाँ थैंक यू राहुल. मैं मिलान का थोड़ा सेलिब्रेशन देख रहा था तो वहां पर थोड़ा बहक गया था. लेकिन हाँ, सर्टेनली RR has won. RR 178 for 6, LSG 154 for 8. वेल, कोई नहीं भाई, मतलब again, no kind of toxicity here. We won't tolerate on this channel. We are on a channel for everyone to see, and that means that अगर आपकी different opinion है, that is something that we will agree with to not agree. ठीक है, that is what हमारा rule है. नहीं, अंशुमन, let's be honest. नहीं, यहाँ पर चैट को बोल रहा हूँ क्योंकि यार it is my channel and that is the way I want to run my channel.
It is a channel where it is a channel for all to see. That is the मेरा पहला लाइन ही ये है होता है जब मैं शुरू करता हूँ ना Almighty Blues FC, it's a fan channel for all to see. It means that people will have different opinion. I want to respect every opinion out there. Okay, even if I disagree, and I am disagreeing with a lot. Similarly, I would request everyone watching also. अगर आपको disagreement होता है, put in your points, absolutely fine. ठीक है, but बस let's not go to toxicity is what I'm saying, right? वहाँ पर थोड़ा सा आप लाइन समझिए. Absolutely fantastic. कमेंट भैया मैं वही बोल रहा हूँ कि सिटी को सिटी इज बेटर देन यूनाइटेड. नो वन इज सेइंग सिटी इज वर्स देन यूनाइटेड अभी. ठीक है, ये कोई नहीं बोल रहा, बट ऑयल मनी है वो भी फैक्ट है. यू नो यू कैन नॉट ट्राई टू मिक्स अप टू थिंग्स. मैं वही बोल रहा हूं, यू हैव अ छोड़ दो भाई मेरे भाई. अरे नहीं, एक आया अभी, एक नया आया अभी. मैं इग्नोर करने आपके प्राइवेट चैट में मैसेज किया, देखिए भाई. अच्छा, मैं आपको मैसेज किया प्राइवेट चैट में, प्लीज इग्नोर भाई. आई एम ट्राइंग टू टेल यू फ्रॉम दैट टाइम यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. चलो we need not address every comment here. हम लोग यहाँ हर एक कमेंट, हमारा कोई ड्यूटी नहीं हर एक कमेंट लेने के लिए. There is, और अगर हमें पता नहीं how mature or immature a certain person might be commenting. Exactly. So again, I would request you to ignore certain comments. And like I say, it is if you think that way, perfectly fine. I am not here. I am not a pandit. Anshuman is not a pandit. I'll be honest with you. We are not pandits. हमारा जो है हमने देखा होगा 20-25 साल के लिए फुटबॉल. We are better than पंडित भैया, रहने दो. या माइकल रिचर्ड्स कंपेयर करता है, you know, लेवेंडोव्स्की को हैरी केन को. यार अंजुमन, ये स्ट्रीम अलग गलत ढंग से एंड हो रहा है. I'll be very honest with you. I am in a really good mood right now. मैं आपके पंडित वाले को बोल रहा हूं कि we are better than the पंडित. मैं कमेंट तो देख ही नहीं रहा. Exactly, कोई नहीं, मतलब पेप का कमाल है, कोई नहीं यार. चलो आप एंजॉय करिए, है डेफिनेटली कमाल. I am not saying no. लेकिन अगर आप सोचते हो, आपकी सोच है, हमारी सोच अलग हो सकती है, वो भी याद रखना, which is totally fine as well. We can coexist. Exactly, Nitesh Meena, let's end this topic. यहाँ पर the main thing is right now, we have done a 5-hour stream. People आ रहे हैं यार, सोच रहे हम लोग 2 मिनट से कर रहे हैं, 5 घंटों के बाद करें, तो हमने अगर रिएक्ट भी किया है तो प्लीज इग्नोर इट. इफ यू थिंक अदरवाइज, वी थिंक वी आर राइट, वी स्टिल थिंक. लेकिन आपको अगर लग रहा है तो प्लीज इग्नोर इट, रिक्वेस्ट है. और आई नो दैट नॉट एवरीवन इज टॉक्सिक. एक या 2 जन ही है वो होते हैं, एंड इट इज आवर ड्यूटी एज कंटेंट क्रिएटर्स समटाइम्स टू इग्नोर इट, समटाइम्स टू टेल देम व्हाट इज राइट और रॉन्ग. आई थिंक दैट हमारा जो चैनल है, वी आर वेलकमिंग, वी आर मोर वेलकमिंग टू एवरीवन, एंड आई बिलीव इन दैट. दैट्स व्हाई आई वांट टू रन माय चैनल दिस वे. इसलिए राहुल और रितेश और यहाँ पर कौन आउट है? No, I said भैया कि मटाटा is out, you know. मेरा मटाटा का भी, when you look about the comments, you know, जरूरी नहीं है कि we have to agree with everything, but it's not like, you know, all of a sudden I say मटाटा निकल जा भाई. You know, you don't have to come to the channel. You know, तो ऐसा इस तरीके से कभी नहीं है कुछ. नहीं बिल्कुल. यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूंगा यार, अभी एंड हुआ ऑब्वियसली यार, फॉर पीपल आउट देयर जो देख रहे हैं स्कोर नीचे, एसी मिलान आर राइट अप देयर. तो मैं क्विकली यहाँ पर जस्ट फॉर मी एंड मिलान फैंस स्पेशली टू काइंड ऑफ फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट, आई नो कल मैच है, कल नहीं, आई थिंक टेक्निकली और कुछ ही घंटों में, आई थिंक 1 घंटे में क्या कैगलियरी और इंटर का 1 घंटे में, चलो तो दैट इज गुड. लेकिन मिलान अभी मैं ज्यादा बड़ा हो गया, तो आई एम सीइंग यहाँ पर पार्टी चल रही है अभी स्टेडियम के अंदर. मिलान का सपोर्ट बहुत मस्त है यार, आई स्वेयर. अलग ही लेवल. They are celebrating as if they have won it. They need to calm down for a while. Yeah, they need to calm down. लेकिन वही है ना अंशुमन, इतने सालों से नहीं किया है ना, तो they are like feeling it so close. Obviously, you need to celebrate it, but don't celebrate early as if you know you have won it. Yeah, जैसे बांग्लादेश ने किया था T20 में. Exactly. Again, no disrespect. यहाँ पर एक पूरा कॉन्टेक्स्ट ही समझेंगे लोग, आएंगे ट्यून करेंगे, जैसे मैंने बोला बांग्लादेश ने किया, और वो लोग मिसअंडरस्टैंड करेंगे. वही होता है टॉक्सिसिटी का शुरुआत. लेकिन अगेन एसी मिलान 83, इंटर मिलान 78. इंटर मिलान आर प्लेइंग कैगलियरी नेक्स्ट, वो शुरू होने वाला है आई थिंक टेक्निकली ऑलमोस्ट विद इन 1 आवर. तो देखेंगे, हमने कवर नहीं करना है वो, लेकिन लेट्स होप कि इंटर ड्रॉप पॉइंट्स एज ए एसी मिलान सपोर्टर. लेकिन नापोली ने भी अच्छा किया है बाय द वे, काफी अच्छा किया है, बट अगेन नॉट इनफ. If I'm not wrong, Napoli every season is like that. Yeah, 3-0 they beat Genoa by the way. उनका भी मैच चल रहा था ना, absolutely brilliant. लेकिन I think the main thing here is about the cricket as well, क्योंकि यहाँ टेबल quickly देख लेते हैं, because वो भी था Watchalong में. Everyone watching, cricket fans बोलिए भाई अभी क्या लग रहा है?
after this result, yeah, has it changed anything? Anshuman, I'll be sharing it with you and taking your opinion पहले. क्या बोलते हो भाई? मतलब your prediction for the top 4 now that we are seeing this table and net run rate, what is your prediction? RR second पर आ गई by the way. I still feel Delhi will somehow get it in. अरे भाई, I hope not. I hope मतलब RCB बाहर. नहीं, LSG. दोनों में से एक जा सकता है. आरसीबी के अगेंस्ट उनका रन रेट है. व्हेन यू लुक एट द रन रेट, वही प्रॉब्लम ज्यादा ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये. अनलेस और अनटिल यू विन अ गेम फॉर लाइक 100 रन्स और समथिंग, वो रन रेट वापस नहीं आएगा. सो correct. Absolutely भाई. Anshuman is like brother man, he's always there. सर सब्सक्राइब कर दो, लाइव स्कोर बड़ा कर दो यार. मैं सबसे बड़ा कर रहा हूँ, ज्यादा स्क्रीन पर फिट आना चाहिए बस, वो दैट द मेन थिंग. वेल यस ये यस क्या कर रहे हैं भाई ऋग्वेद भाई? एक तो स्पैम क्यों करते हो भाई आप? मैं पढ़ रहा हूँ भाई, भाग के कहाँ जा रहा हूँ? स्पैम मत करिए भाई. ऋग्वेद आप तो बहुत समय से है चैनल में, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड इफ यू आर न्यू, बट व्हाई आर यू स्पैमिंग? राहुल थैंक यू भाई बोलने के लिए. ऋग्वेद तो यार कम ऑन यार, सॉरी, एब्सोल्युटली होना भी चाहिए भाई. मतलब ऋग्वेद आप चेल्सी फैन होकर, भाई होकर आप स्पैम करते हो, कम ऑन, इतने बार आते हो. कोई नहीं होता है. या एब्सोल्युटली आदित्य पुटिंग दैट कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली. अगेन देख रहे हैं यार, कुलदीप भाई है आप अपने जो अच्छे करेंगे. देखते हैं कुलदीप भाई सर्टनली डूइंग ब्रिलियंटली वेल. वही दिल्ली क्या बॉलिंग इज प्रोबेबली गुड, लेकिन वही बैटिंग कैन इट कम टुगेदर. that is the main thing. Let's see. मैं वही बोल रहा हूँ, दिल्ली में वही है, टॉप 3 है. आफ्टर दैट यू हैव जस्ट सो कॉल्ड बैटर्स. ये पृथ्वी शॉ का इंजर्ड होना हैज बीन अ ह्यूज ब्लो. बिल्कुल नितेश भाई, यू कैन आल्सो कम टू द चैनल, यूनाइटेड रोड, वहां पे लिंक डाला हुआ है भैया ने सब्सक्रिप्शन बॉक्स. हाँ भाई प्लीज यार, सब लोग और जो भी यार बाद में भी देखेगा बाय चांस, होपफुली वी विल हैव मोर पीपल नेक्स्ट टाइम अराउंड. अंशुमन नेक्स्ट टाइम शुरू से होंगे, सो दैट वी कैन टॉक टू पीपल ऑन अ लार्जर बेसिस एज वेल. लेकिन absolutely certain यार, sorry to say you make IPL 11 and your opener is KL Rahul, but his strike rate is very low. Fire.com, we made this IPL 11 I think around 10 days back, so I know that I had put that also Fire.com. लेकिन हम वापस करेंगे भाई, अंशुमन के साथ ही करेंगे. चलो we'll call the similar panel और वापस से करेंगे. IPL 11 हमने किया था एक्चुअली, लेकिन अगेन एंड ऑफ IPL ग्रुप स्टेज में वापस से करेंगे. ठीक है, ये भी हो जाए. Certainly biggest disappointed, अरे यार, the biggest disappointment as a Chelsea fan. अरे fresh तो यार, मैं तो definitely बोलूँगा it has to be Champions League man. More than Terry, it has to be Nicolas Anelka. The way he took it, I won't for that. Lot of Chelsea fans भूल जाते हैं, lot of neutral fans भूल जाते हैं. Nicolas Anelka, the way he ran up to that penalty, I was unhappy with him. I like he the was guy. like, he was like, I don't care, जाता है जाए ना जाता है. मतलब बॉडी लैंग्वेज उसका, और काफी बार हो जाता था उसका. He was not a bad guy. Again, he's done so much for Chelsea. He was one of those odd strikers again, जो people forget. He's done very well. लेकिन at the same time, that run up wasn't giving confidence to the next player. Yeah, absolutely भाई. रोहित जुगलान भाई को भी, मतलब वही है, बाबा आएंगे तब साथ में बुलाएंगे भाई. कुलदीप भाई है, रोहित भाई है, अंशुमन को भी वापस से बुलाएंगे. We'll have a lot of, अभी तो यार शुरुआत है भाई, चैनल अभी शुरू हुआ है, काफी लोगों को बुलाना है. मतलब सब लोग को साथ में एक ही हफ्ते में बुला जाए तो यार कौन बचेगा, राइट? तो we'll certainly call everyone, don't worry. Who's winning the IPL? That's the bigger question. Anshuman, quick prediction. मैं तो DC को बोला था, but I was wrong, I think. RR have a chance, but I just don't. Delhi मेरे लिए डार्क हॉर्स तो डेफिनेटली रहेगी, बट गुजरात टाइटन को देख के ना कॉन्फिडेंस नहीं आता, बट दे कीप ऑन विनिंग द मैचेस. व्हेन यू लुक एट देयर टीम, उनको देख के ना कॉन्फिडेंस उस तरीके से नहीं आता है, बट दे कीप ऑन विनिंग द गेम. Absolutely man, that was painful. Yeah, absolutely. I don't think it's not about dependency, Rahul, it's about courtesy. उसको बोलते हैं courtesy. अगेन आप मुझे डीएम करिए, आप डीएम करते नहीं, आई नो सोशल मीडिया में होनी, आप करेंगे तो मैं बात करूंगा यार आपसे, क्यों मैं बोलता हूँ. बट अगेन यार, रेस्पेक्ट टू एवरी कंटेंट क्रिएटर होता है यार. मैं तो बोलता हूँ यार, मैं अपने थैंक यू वीडियो में सबको कर दिया, और क्या ही तो मैं बोलूँ. आई रियली वांट, एंड इट्स अबाउट, एक होता है, मतलब देयर इज अ टीम एफर्ट, एंड वी ऑल आर अ टीम टुगेदर.
Maybe because GT are new and don't have history on which we can relate. हाँ, talking about history, IPL में भी history की बात शुरू हो गई. लेकिन हाँ, great stream everyone, absolutely great stream. And of course यार, there has been a lot of stress. मैं झूठ नहीं बोलूँगा, especially जो हुआ था last night with Chelsea. So I would like to thank everyone who's there on the stream. Yeah, I think Rahul has been, and of course Nitesh and Aditya, Rugved, I don't know, lot of other names that are missing. जो है mods हमारे, वो लोग basically यार 4 घंटे 4.5 घंटे रहे. No, I know it as a fact. 4.5 घंटा तो definitely रहे वो लोग. तो big up यार, आप लोगों को firstly big up. और मटाटा यूनाइटेड भी, मतलब lot of people जो रहे, thank you भाई, thank you. And this kind of makes us motivated as content creators. और हर एक content creator जो आया है, वीकेंड का स्ट्रीम्स हमारा हो रहा है, मैराथन स्ट्रीम्स, टचवुड अभी तक इट्स गोइंग वेल. लेकिन अंशुमन, बिग अप भाई. एनी लास्ट वर्ड्स? अरे आई कांट बिलीव इट, आई एम एंडिंग द स्ट्रीम और यहाँ पर थैंक यू बोलने और लेने आ गए हैं चिन्मय. चिन्मय, 5.25 घंटे हो गए भाई, कहाँ थे आप? Sorry, I was busy. मैं खुद एक स्क्रीनिंग पे गया था. Being a United fan, I was hoping City शायद कुछ शायद कर पाए, but अब लग रहा है कि लिवरपूल शायद never know. अब बहुत डर लग रहा है. Last game of the season, don't know how that's going to be. कोई नहीं. तो यार मतलब I was just about to end the stream, but quick word लूंगा यार, मतलब from you as well. तो I'll take predictions from Chinmay. Let's do that way. Chinmay, I don't know this cricket as well. So Chinmay, being a United fan, firstly, already you said about City, what they're doing in Liverpool, what they're doing. What's your prediction? Who's winning the Premier League? City. Yeah. I hope it's City, and I know it's City. I don't think फेल देंगे क्या Aston Villa को? ठीक है. I think so. Gerrard, मतलब he'll slip again for Liverpool. Fair enough. And the second prediction, Serie A, Milan just won. AC Milan, they've already got one hand on the trophy. I mean, Inter pressure में तो हो गए. मिल गया आपको. Absolutely great prediction वहाँ पर. Thank you for saying it. And last but not the least, IPL. Who's winning it? Prediction. Early prediction. Gujarat is looking pretty good, yeah. Problem ये, Gujarat is looking pretty good. So I think Hardik Pandya and LSG का आज performance काफी बुरा था, but I think that Gujarat or LSG, one of those two might actually make it. Fair enough. चलो कोई नहीं. Nice one. And Anshuman, any last words भाई? Please share opinion. United के लिए बोल दीजिए. Next season, what are you looking for? In the Premier League, City, please. You don't want Liverpool to come close, I know that. Obviously, they are just one behind, so I hope they stay behind. Liverpool is going to bottle the Champions League. Okay. Again, अच्छा यहाँ पर disclaimer देना पड़ रहा है. People watching, यार, they are just fans, just like me and you. So as a fan of your club, you wouldn't want your rival to do well, and that is why they're reacting this way. Absolutely, and I agree. Liverpool has been one of among the top clubs. For me, also Liverpool has been my rival club. There's no hatred. Remember, there's a thin line between rival and hatred. Absolutely. और अंशुमान, IPL में यार किसको जिता रहे हो आप? दिल्ली. अरे दिल्ली को जिता दे रहे हो, टॉप 4 में नहीं, डायरेक्टली जिता दो. मैं खुद बोला हूं करना है तो कुछ तूफानी करते हैं ना. टॉप 4 में लाके क्या करना, अगर कुछ करना है तो फिर तूफानी चलो. That is why we love Anshuman, man. I love the way his predictions are brilliant. Absolutely भाई. Yes, absolutely भाई. कल भी प्लान करेंगे. Again मैं कंटेंट थोड़ा सा क्रिएट करने का कोशिश कर रहा हूँ, just to give me time. So again, let's see how much time we have on our hands. But again, great stream. We covered a lot. La Liga का इतना बात नहीं की, because La Liga is already done, man. So no point talking about it. I know that Getafe, Barca चल रहा है, Real Madrid का मैच है. But again, no point really talking about it. But again, always fun talking with you guys. Chinmay, guest appearance के लिए thank you भाई. First of all. ठीक है. तो next time मिलते हैं भाई. Anshuman, big up. Hopefully next time के लिए we'll discuss more. And everyone again, yeah, thanks for joining. We will be back. Bell notification icon on not only our channels, but all the panels channels also. Most important, we will come back with solo videos, review videos as well. Till next time, take care. See you soon and stay safe.